हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूपीएससी मेंटर्स। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं दैट इज स्पीशीज इन न्यूज़। स्पीशीज इन न्यूज़ इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी बिकॉज वी हैव सीन दैट हर साल 3 से 4 क्वेश्चन स्पीशीज इन न्यूज़ जो रहती हैं उनसे आ जाते हैं। बहुत शॉर्ट कंप्रिहेंसिव टॉपिक है। जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में आपके स्पीशीज़ हैं, अगर आपने उनको अच्छे से कर लिया तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि इन क्वेश्चंस में से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो इसमें ये भी देखा गया है कि स्पीशीज इन न्यूज़ से क्वेश्चंस जो आते हैं दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट और वेरी ट्रिकी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्पीशीज के बारे में पढ़ा है या आपने कहीं सुना है तो यू कैन आंसर द क्वेश्चंस वेरी इजीली। इस लेक्चर की बात करें तो स्पीशीज इन न्यूज़ हमारी जो भी रही है 2024 और 25 में आपका टिल द मंथ ऑफ मार्च आई वुड से वो सारे स्पीशीज हम कवर करेंगे। और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 जो कि आपका मई में होने वाला है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं हम कोशिश करेंगे कि वो सारी स्पीशीज आपकी कवर हो जाए। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ खाली कि स्पीशीज इन न्यूज़ के इस टॉपिक को हम कैसे कवर करने वाले हैं। देखिए, जो भी स्पीशीज न्यूज़ में है वो स्पीशीज न्यूज़ में होने की वजह से कोई एक प्रॉपर पर्टिकुलर न्यूज़ बनी होगी। उस न्यूज़ को हम एक बार देख लेंगे कि वो न्यूज़ क्या है, एंड देन उस स्पीशीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वी विल लुक ऑल दोज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सो दैट वी हैव एन ओवरऑल आइडिया अबाउट द स्पीशीज। जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे दैट आई टेल यू अबाउट द स्पीशीज। और समवॉट अराउंड 75 to 80 स्पीशीज आर व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। अराउंड 75 to 80 स्पीशीज वी आर गोइंग टू कवर। एंड इतने स्पीशीज कवर करने का रीजन सिर्फ ये है कि आपके कोई स्पीशीज ना छूटे। तो अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हैं तो आपके सारे स्पीशीज फॉर योर प्रीलिम्स 2025 इज कवर्ड। स्पीशीज की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो हम मेजर चीजें देखेंगे दैट वी विल लुक ओवर टू दी दैट व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक नेशनल पार्क है या स्पेसिफिक कोई कंट्री है जहां वो स्पीशीज डोमिनेटिंग है या वहाँ का नेटिव स्पीशीज है। अब देयर आर सर्टेन टर्म्स व्हिच आर यूज्ड फॉर स्पीशीज, जैसे नेटिव स्पीशीज हो गया, इंडिकेटर स्पीशीज हो गया। तो क्या है एक बार मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा। तो लोकेशन जो है हम वो देखेंगे। स्टेटस क्या है इसका, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द स्पीशीज, बिकॉज वी हैव सीन दैट क्रिटिकली इंजेंडर्ड और इस तरह की स्पीशीज को बहुत पूछा जाता है। तो वी विल सी द स्टेटस ऑफ इट, द आईयूसीएन स्टेटस। ओके, साइट्स में अगर उसका कोई स्टेटस है, एंड व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा शेड्यूल में है, क्या है, वो एक बार देख लेंगे। उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होंगे। ओके, आई एम राइटिंग दिस लेक्चर, मतलब मैं इस लेक्चर में टेक्स्ट को लिख के पढ़ाऊंगा, लिख के बताऊंगा, सो दैट लिखते समय यू कैन गेट दैट मेमोरी। बिकॉज अब ये जो टाइम है, दिस इज नॉट अ टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आपने जो पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करने का ही टाइम है, बिकॉज नॉट मच ऑफ द टाइम इज लेफ्ट नाउ। तो इस तरह के जो लेक्चर्स हैं जहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाएं, उस तरह के लेक्चर्स को फोकस करते हुए ये स्पीशीज का लेक्चर मैंने फ्रेम किया है। अगर आपको लगता है कि लेक्चर थोड़ा स्लो हो रहा है, इफ यू वांट टू फास्ट फॉरवर्ड इट, तो आप यूट्यूब में उसको 2x या 1.5x की स्पीड में भी देख सकते हैं, एंड आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। बट आई राइट इट एंड आई टीच इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उससे रिलेटेड जो हो गया, उसके कोई भी स्पेसिफिकेशन या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि यूनिक है, तो वो सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेंगे। और वाई वॉज इट इन न्यूज़। वाई इज इट इन न्यूज़ से मतलब ये है कि कोई प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, या फिर किसी तरह का कोई गवर्नमेंट ने कुछ नया नेशनल पार्क बनाया है पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए। बट हाँ, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि नेशनल पार्क से भी रिलेट करेंगी यहाँ पे। बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी श्योर दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग एक्सेप्ट द स्पीशीज। स्पीशीज पे ही फोकस करूंगा। नेशनल पार्क के बारे में बताना या ये सारी चीज़ें मैं अभी उसमें जैसे इस लेक्चर में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है। अब ऐसा जैसा कि मैंने बताया है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो दैट इज वाई इट इज समवॉट इंपॉर्टेंट। 2021 में तो 6 क्वेश्चंस करीब आ गए थे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से लेक्चर को देखिए। अभी स्पीशीज के टाइप्स को अगर बताया जाए तो देर आर सम स्पीशीज विच आर नोन एज इंडिकेटर स्पीशीज होते हैं। कुछ इंडिकेटर स्पीशीज होते हैं। ठीक है, अब इंडिकेटर स्पीशीज क्या है, दिस इंडिकेट्स द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितना हेल्दी है वो बताते हैं, ये स्पीशीज के होने से ये पता चलता है। ठीक है, देन देर आर फ्लैगशिप स्पीशीज। ठीक है, तो दिस बेसिकली डिफाइन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। ठीक है, दे आर द स्टार परफॉर्मर ऑफ द हैबिटेट। मतलब फ्लैगशिप स्पीशीज जो है, दिस वुड बी द मेजर स्पीशीज ऑन विच द स्पेसिफिक एरिया इज नेम्ड, और जो भी नेशनल पार्क है उसके उसके बेसिस पे होगा। देन देयर इज कीस्टोन स्पीशीज। अब कीस्टोन स्पीशीज क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज विच इज फॉर द इंटायर इकोसिस्टम। मतलब ये स्पीशीज का उस एरिया में या उस इकोसिस्टम में सही रहना या प्रॉपर्ली हैबिटेट कर पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द ओवरऑल सिस्टम और ओवरऑल इकोसिस्टम एज वेल। ठीक है, देन देयर आर एंडेमिक स्पीशीज। अब एंडेमिक स्पीशीज क्या है, दिस इज अ स्पीशीज विच पर्टिकुलरली लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे बोलते हैं इंडिया में एंडेमिक है, या वो बाहर मिल सकता है बट वो इंडिया में पाया जाता है, उसको बाहर आप लेके गए, आपने उसको दैट उस स्पीशीज को आपने ब्रीड किया, तो दैट इज पॉसिबल, बट इट इज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया और कंट्री, दैट इज द एंडेमिक स्पीशीज। देन वन मोर स्पीशीज वी हैव व्हिच इज नोन एज इन्वेसिव स्पीशीज। ठीक है, तो दीज आर नॉट द एंडेमिक स्पीशीज। ये एंडेमिक स्पीशीज नहीं होते, ये समझ लीजिएगा बस। और एंडेमिक स्पीशीज को कहीं पे अगर लेके गए और उस एरिया में उसको ब्रीडिंग किए और उसकी हैबिटेट को डेवलप कर दिया,
तो वो हो जाएगा आपका इन्वेसिव स्पीसीज एक तरह से, बिकॉज दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन एनी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। इट कैन ऑल्सो हार्म इट्स न्यू इन्वायरमेंट बिकॉज नेचुरली वो वहाँ पाया नहीं जाता, तो इट कैन हार्म एंड इट कैन ऑल्सो कॉज द एनवायरमेंटल डैमेज। दिस इन्वेसिव स्पीसीज ऑल्सो नोन एज एलियन स्पीशीज भी कहा जाता है इसको कभी कभी, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल व्यू। अब नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द स्पीशीज इन जनरल। अब एक एक स्पीशीज हम देखते जाएंगे धीरे धीरे। चलिए, तो फर्स्ट जो स्पीशीज है हमारी वो है यूरेशियन ऑटर्स। आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसका कटिंग दिया हुआ है। देन नीचे वी हैव मेंशन्ड द इमेज ऑफ द स्पीशीज। इमेज इसलिए दिया हुआ है बिकॉज मेनी टाइम्स दिस हैपेंस कि इमेज से आप रिकलेक्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन जो पढ़ाया जाता है, विजुअल वॉइस दिस ऑडियो एंड विजुअल दिस बोथ रिफ्लेक्ट्स इन योर मेमोरी। तो इमेज से कई बार होता है कि आपको याद आ जाता है कि स्पीशीज क्या है, तो इस वजह से इमेज दी हुई है। एंड ऑन दिस वाइट स्पेस आई विल बी गिविंग द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। चलिए शुरू करते हैं। अगर यूरेशियन ऑटर्स की बात किया जाए, ठीक है, तो आप इस न्यूज़ में देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है यूरेशियन ऑटर्स रिसर्चर्स इन कश्मीर वैली आफ्टर नियरली वैनिशिंग, फर्स्ट 5 रिकॉर्डेड इन 25 ईयर्स। तो 25 साल में पहली बार ये यूरेशियन ऑटर्स कश्मीर में पाए गए। ये इसके बारे में आप देख लेते हैं कि ये है क्या बेसिकली, ठीक है। ये यूरेशियन ऑटर्स और कहाँ कहाँ मिलते हैं? दिस इज बेसिकली फाउंड इन हिमालयन फुटहिल्स, ठीक है। आप स्पीड इंक्रीज करके भी वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको स्लो लग रहा है तो। हिमालयन फुटहिल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस 4000 मीटर्स इज द मैक्सिमम हाइट टिल विच दिस कैन बी फाउंड। तो अगर 4000 मीटर से ऊपर दिया जाता है मान लीजिए, ठीक है, ऑप्शन में, तो ये स्पीशीज फिर वहाँ उसके ऊपर नहीं मिलते हैं। विच एरियाज आर दे फाउंड इन? बेसिकली यू कैन फाउंड इट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, सम पार्ट ऑफ स्कैटर्ड वेस्टर्न घाट्स, ऑलराइट, दिस कैन बी फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। रिसेंट न्यूज में भी मिला था कि इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो दिस वॉज फाउंड, ठीक है, तो पुणे में भी मिला है। एंड वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूरेशियन ऑटर्स इज ऑल्सो दैट दिस हैज बीन रिसेंटली रेडियो टैग्ड इन सतपुरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। सतपुरा टाइगर रिजर्व में इसको रिसेंटली रेडियो टैग भी किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज हुए हैं जिसकी वजह से ये स्पीशीज आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑलराइट, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आते हैं। तो वेयर इज इट फाउंड? मेनली यू कैन फाइंड इट इन फ्रेश वाटर्स, ठीक है, फ्रेश वाटर्स में मेनली मिलता है। एंड इट द हैबिटेट इज एक्वाटिक, ठीक है, तो ये एक एक्वाटिक स्पीशीज है। एक्वाटिक होने की वजह से इट फीड्स ऑन फिशेस, ठीक है, मेनली इट फीड्स ऑन फिशेस, ऑलराइट। सेमी एक्वाटिक कार्निवोरस एनिमल है, याद रखना दिस इज कार्निवोरस नॉट ओमनिवोरस, ऑलराइट। ये ईटिंग हैबिट्स वगैरह को लेके भी ऑप्शंस में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑलराइट। कंट्री वाइज अगर देखें हम तो कहाँ कहाँ मिलता है? दिस कैन बी फाउंड इन इंडिया। अब इफ आई टॉक अबाउट दी कॉन्टिनेंट्स इन स्पेसिफिक, तो इन यूरोप, ठीक है, इन एशिया एंड इन अफ्रीका दिस इज फाउंड, ऑलराइट। अब इसमें अगर आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि इसके फीचर्स क्या है, तो यू कैन सी फ्रॉम द इमेज ऑल्सो, ठीक है, इट हैज थिक टेल। और इंपॉर्टेंट एक फीचर इसका है कि अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स आईज एंड ईयर्स, मतलब आंखें और कान को भी बंद कर सकता है जिसमें पानी अंदर ना घुसे। तो ये चीज थोड़ा सा आप याद रखिएगा। लेग्स जो हैं दे आर शॉर्ट इन हाइट, ऑलराइट, दे हैव वेब्ड फीट। अब वेब फीट क्यों है? बिकॉज दे आर एक्वाटिक एनिमल्स, तो मूव करने के लिए वेब फीट चाहिए जैसे डक के होते हैं, ठीक है। एंड यू कैन सी दैट ब्राउन डबल कोट फर इज देयर। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं भी बताता मैं, तो भी आप अपना कॉमन सेंस यूज करके ये बता सकते थे अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा होता कि दे हैव वेब फीट। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि एक्वाटिक स्पीशीज है, तो वेब फीट डेफिनेटली होना चाहिए बिकॉज मूवमेंट में आसानी रहती है पानी के अंदर। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया कि अब 4000 मीटर्स नहीं मिलता है, 4000 मीटर्स के नीचे मिलता है, मतलब 4000 मीटर्स ऑल्सो लाइक 4 किलोमीटर, तो दैट इज एट वेरी हाई हाइट। एंड उसकी वजह से वहाँ पे ठंड बहुत होगी, तो ठंड होगी तो नेचुरली उसके पास कोट होगा, थिक कोट होगा टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी, टू कीप द बॉडी वार्म, ठीक है। तो इस तरह से भी कभी कभी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर रहती है तो कॉमन सेंस यूज करके यू कैन सॉल्व दी प्रीलिम्स। एंड दिस इज द वे प्रीलिम्स इज बेसिकली क्लियर। आपको डायरेक्ट ऑप्शंस कई बार सारे क्वेश्चंस के नहीं पता चलते हैं, बट इस तरह से आप क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है। इसका अगर हम IUCN देखें, IUCN स्टेटस क्या है, राइट हियर। तो IUCN स्टेटस इट इज नियर थ्रेटेंड। बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको, मैं रिसर्च कर रहा था जब, तो आई फाउंड इट दैट मेनी वेबसाइट्स हैव गिवन रॉन्ग IUCN स्टेटस आल्सो। दे हैव नॉट अपडेटेड और दे हैव नॉट टेकन द स्पीशीज IUCN स्टेटस फ्रॉम द IUCN वेबसाइट। दे हैव जस्ट कॉपीड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। तो एक इंस्टीट्यूट ने अगर गलत कर दिया सबसे पहले, तो बाकी सबने उसको कॉपी कर दिया। कई लोगों ने सही भी दिया, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को मार्क करके रखिएगा कि IUCN स्टेटस वगैरह IUCN की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लें, ठीक है। साइट्स में दिस इज अपेंडिक्स 1, ऑलराइट, एंड योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दिस इज शेड्यूल 1, ठीक है। दिस ऑटर, दिस आर 2 टाइप्स ऑफ ऑटर फाउंड, स्मूथ कोटेड ऑटर, ठीक है, और एक स्मॉल क्लॉड ऑटर होता है। तो स्मूथ कोटेड जो है
द स्मूथ कोटेड इज IUCN इसका वल्नरेबल है, ऑलराइट, एंड स्मॉल क्लॉड जो है जिसका IUCN इज वल्नरेबल एज वेल। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन और कुछ इसमें देने का नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्पीशीज। दिस इज अमूर फॉल्कन। देखिए स्पीशीज को ना मैं आपको बाकी जगह जैसे आपको पढ़ाया जाता है ना कि सारे एक्वाटिक एक साथ, सारे लैंड एक साथ, सारे बर्ड्स एक साथ, सारे रिप्टाइल्स, में ऐसे नहीं कर रहा हूँ। आई एम जम्बलिंग द स्पीशीज, मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे स्पीशीज जो जो मंथ में इंपॉर्टेंट थे वैसे वैसे ये कॉपी हुए हैं उस मंथ से, और वैसे वैसे स्पीशीज को बता रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर एक साथ आपको सारे स्पीशीज बताए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज एक्वाटिक स्पीशीज के भी कुछ फीचर्स होंगे जो कॉमन होंगे, कुछ फीचर्स होंगे जो स्पेसिफिक होंगे किसी स्पीशीज में, और वो मेमोराइज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। इसमें जब जंबल्ड वे में जाता है ना तो यू कैन मेमोराइज इट मोर इजली, ओवरलैप नहीं होता है स्पीशीज का इन्फॉर्मेशन। दैट इज द रीजन आई एम डूइंग दिस, नथिंग एल्स। ठीक है, न्यूज क्या है? एड ऑफ अमूर फॉल्कन्स अराइवल, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट बैन्स देयर हंटिंग। ये एक न्यूज थी जिसकी वजह से अमूर फॉल्कन इज इन न्यूज। ठीक है, अब अमूर फॉल्कन क्या है, कहाँ पाया जाता है, वो सब देखते हैं। बेसिकली ये याद रखना है कि इट इज अ स्मॉल बर्ड। ठीक है, नॉट वेरी बिग, ये याद रखिएगा कि बहुत बड़ी बर्ड नहीं है, स्मॉल बर्ड है। ऑलराइट, अमूर फॉल्कन फेस्टिवल जो है इसका, दिस फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। ठीक है, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट है, इन स्पेसिफिक तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर, बट उतना डेप्थ में डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा। मणिपुर में बेसिकली अमर फॉल्कन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होता है स्पीशीज का, इट फ्लाइज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो फ्लाई करता है जब, तो ये याद रखिएगा कि ब्रीड्स इन साउथ ईस्ट रशिया रीजन। ठीक है, साउथ ईस्ट रशिया एंड नॉर्थ ऑफ चाइना। ठीक, साउथ अफ्रीका से, फ्रॉम साउथ अफ्रीका इट ट्रेवल्स टू इंडिया। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से पहले इंडिया आया, कहां से? अरेबियन सी से होते हुए आ रहा है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से, रिमेंबर द मैप, साउथ अफ्रीका से इट केम टू इंडिया वाया अरेबियन सी, एंड देन इंडिया से इट हैज मूव टू साउथ रशिया एंड नॉर्थ ऑफ चाइना फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस। ठीक है, और जो ये जो डिस्टेंस है ना, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स, दिस इज अराउंड 22,000 किलोमीटर्स। ये चीज याद रखिएगा कि इट ऑल्सो सर्व्स द लॉन्गेस्ट जर्नी बाई एनी रैप्टर। ठीक, लॉन्गेस्ट जर्नी करती है ये, स्मॉल बर्ड है, नॉट अ वेरी लार्ज बर्ड, but it travels for around 22,000 kilometers. This is the longest, largest distance any such raptor travels in the world. All right. Now, इतनी दूर उड़ने के लिए definitely it takes the help of the jet streams. ठीक है, जेट स्ट्रीम्स की हेल्प से ये इतनी दूर तक ट्रैवल करती है। नागालैंड जो है, नागालैंड, दिस इज कॉल्ड एज अमूर फाल्कन। मणिपुर और नागालैंड से कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज कॉल्ड अमूर फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और नागालैंड में इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज मोलम। ठीक है, ये नागालैंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है। अगर IUCN स्टेटस की बात अगर हम देखें, व्हाट इज द IUCN स्टेटस? द IUCN स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 4। ऑलराइट, साउथ अफ्रीका जो मूव कर रही है ना, ये विंटर्स में बेसिकली साउथ अफ्रीका चली जाती है। ठीक है, जब बहुत विंटर्स होती है तो इट मूव्स टू साउथ अफ्रीका, और जब समर्स आते हैं तो इट कम्स बैक टू इंडिया, बिकॉज फिर दैट इज हाउ द टेम्परेचर चेंजेस एंड दैट इज हाउ द मूवमेंट ऑफ दिस बर्ड इज आल्सो टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो ये था बेसिकली अमूर फाल्कन से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्पीशीज के बारे में हैज टू बी गिवन। ठीक है, नेक्स्ट स्पीशीज देखते हैं। नाउ हियर यू कैन सी दीज आर वाकिटास। ऑलराइट, न्यूज देख लीजिए। वाकिटास may disappear before most people know they exist, मतलब बहुत endangered species होगी ये, तभी ऐसा न्यूज में आया है। तो इसके बारे में एक बार देख लीजिए कि क्या है। लुक एट द स्पीशीज ऑल्सो, स्पीशीज के स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स आपको कई बार पिक्चर से समझ में आ जाते हैं। दिस इज द मोस्ट endangered marine mammal in the world. ठीक है, तो दिस इज अ marine mammal, remember this, it's not a fish, and not more than 10 to 20 are left, so they are at a verge of extinction. If you see the length, so its length is around 5 feet. All right, कहाँ मिलता है मेजरली? तो कोलोराडो रिवर डेल्टा में पाया जाता है। All right, where is it? In the northern Gulf of California, Mexico.
ऑलराइट, पीछे से आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि दैट दे डू नॉट हैव एनी बीक। ऑलराइट, इफ यू हैव स्टडीड अबाउट दी स्पीशीज इन न्यूज़ और आपके पास कुछ नोट्स वगैरह बने हैं तो ऐड समथिंग इंपॉर्टेंट, फिर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा नोट मत करिए, जहां नोटेड है उसी को देख लीजिए, और इफ देयर समथिंग व्हिच इज मिसिंग देन ऐड इट देयर ओनली, डोंट वेस्ट योर टाइम। और अगर आपने पढ़ रखा है पहले से तो जस्ट एक रिवीजन के तौर पे जस्ट वॉच द वीडियो इन अ स्पीड, मैक्सिमम स्पीड यू कैन वॉच इट। ऑलराइट, सो IUCN स्टेटस डेफिनेटली इसका पता चल गया होगा, कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा। ऑलराइट, सो दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नाउ मरीन एनिमल है, ऑलराइट, मैमल है, कम्युनिकेशन करते होंगे, कम्युनिकेशन करते हैं डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ सोनार। ठीक है, तो कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ सोनार, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी, ये बेसिक्स जो है ना इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई रखिएगा आप। ऑलराइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट दैट हैबिटेट जो है वो कैसा होता है, वाटर शुड बी वार्म, इट शुड बी कोल्ड, किस टाइप के वाटर्स में पाया जाता है, तो वार्म वाटर्स। ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मेक्सिको, आप समझ सकते हैं कि वार्म वाटर्स है वहाँ पे, एंड दे आर बेसिकली किल्ड फॉर फिशिंग के दौरान दे आर किल्ड, एंड एक फिश है विच इज नोन एज टोटोबा। नाउ दिस इज ऑल्सो अ एंडेंजर्ड फिश। ठीक है, इस एंडेंजर्ड फिश को पकड़ने के दौरान दिस वैकिटास आर बीइंग हेल्ड इन द नेट्स। ऑलराइट, एंड दिस टोटोबास फिश के जो ब्लैडर्स है ना दे आर वेरी मच इन डिमांड, एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द सेम रीजन वेयर these fishes are found. So this was some of the information for Vaquitas. इससे ज़्यादा there's nothing which I can share to you. Next species देखते हैं। Now this is a bird, Neptis filiara, rare butterfly species discovered in Arunachal's tail sanctuary. ठीक है, अब इसको कई लोग टेल बोलते हैं, कई लोग टाले भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस सेंचुरी इज इन अरुणाचल प्रदेश। एक तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो गई, दूसरा ये जो बर्ड स्पीशीज मिली है ये इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, लॉन्ग स्ट्रीक सेलर, हैज बीन डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इज समवॉट इंपॉर्टेंट। लेट्स लुक ओवर दैट व्हाट इंपॉर्टेंट इज इट इज हैविंग। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रीक सेलर बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, एंड दिस इज नॉट that it was not found anywhere else. It has been discovered in the Arunachal's Tale sanctuary for the first time. Earlier it was found in, it is also found in Eastern Asia, Central Asia, okay, and area of Southwest China. ठीक है, इसमें आप एक white streaks देख पा रहे होंगे, you can see these white streaks, alright, these white streaks. So these are known as hockey stick pattern. ठीक है, तो हॉकी स्टिक पैटर्न इज रिलेटेड टू विच बर्ड, लॉन्ग स्ट्रीक सेलर। इसको इस तरह से थोड़ा सा याद रखना है हमको। ठीक है, छोटे छोटे जो फैक्ट्स होते हैं उनसे कई बार ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। ऑलराइट, ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन काले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है, दिस हैज बीन टोल्ड, एंड दिस काले इज इन सुबनश्री डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें एक वाइल्ड ओनियल भी पाया जाता है, हालांकि अबाउट सेंचुरी एंड ऑल दोस थिंग्स आई शुड नॉट डिस्कस राइट नो, बट याद रख लीजिएगा कि वाइल्ड ओनियन भी पाया जाता है ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, एंड दिस इज अराउंड 2400 मीटर्स इन हाइट, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है विच इज ऑल्सो फाउंड इन दिस सेंचुरी, दैट इज अटापानी ट्राइब, अपाटानी ट्राइब। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो मिलती है इस सेंचुरी में, इस एरिया में, दैट इज क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड इज ऑल्सो फाउंड हियर। ठीक है, और इस सेंचुरी में और अगर कुछ पूछा जाए तो इंडियन एलिफेंट, ठीक है, देन सम रेयर ऑर्चिड्स। ऑलराइट, सो ये है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, बट इस बर्ड के बारे में देयर इज नो मोर इन्फॉर्मेशन एज सच व्हिच यू शुड नो। ऑलराइट, वन very important fact about Arunachal Pradesh, I must give you that around 40% of the flora and fauna, okay, of species is found here. एक important fact which you should remember कि अरुणाचल प्रदेश में 40% of the flora and fauna is species is found. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बटरफ्लाई सिकाडा, ऑलराइट, अब ये बटरफ्लाई सिकाडा जो है दिस इज ऑल्सो डिस्कवर्ड इन मेघालय। ठीक, तो न्यू स्पीशीज है, दिस इज बाई कलर बटरफ्लाई नोन एज सिकाडा। वेयर इज इट फाउंड, मेघालय में इन गारो हिल्स।
ठीक है, साउथ गारो हिल्स में इट इज फाउंड. इन विच सीजन? बेसिकली समर सीजन में यू कैन सी दिस. ऑलराइट. Is it harmless to people? No, it is not harmless to people in any way. All right. In to plants or property or anyway, it's not harmless. This has been found over here about this species. This species is also found in areas of China, Thailand, and Vietnam. तो साउथ ईस्ट एशिया वाले जो स्पीशीज है ना, एरिया है, वहाँ पे ये स्पीशीज फाउंड. You can find these species over there. All right. Nothing much information which I remember that needs to be shared about the species. So we can move on to the next species. Now this is bumblebees. Heat waves impair bumblebees' ability to detect floral scents. Study finds. We found that heat significantly impaired the bumblebees' ability to detect floral scents. They virtually lose their senses of smells. तो bumblebees के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसकी वजह से न्यूज़ में है कि बहुत ज़्यादा जब हीट वेव होता है, बहुत टेम्परेचर राइज कर जाता है, तो द एबिलिटी ऑफ bumblebees टू स्मेल द फ्लावर्स और एनी सेंट्स इज डिसेबल्ड, इज लॉस्ट. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है. बाकी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दैट आई राइट इट डाउन. ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको. Where is it found? Mainly it is found in the temperate regions of or temperate areas of North America. All right. Bees हैं तो social you know that there is a queen worker male, तो social captivity में रहने type के areas and they live के species and they live in colonies. All right. They are also best of the pollinators. You know that bees are very good pollinators as well. Recently in Scotland also they have been found. ठीक है. Now Scotland में इनको मिलने का रीजन बेसिकली जो है दैट इज द क्लाइमेट चेंज. So the temperature is one of the factors why they have shifted to Scotland. Scotland में they have been found and उनके नेस्ट जो हैं they have been found in Scotland also. ठीक है. Now क्लाइमेट चेंज से होता क्या है कि बेसिकली आप देखिए क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है ना तो फ्लावरिंग पैटर्न जो है, ऑलराइट, द फ्लावरिंग पैटर्न विल चेंज. ठीक है, पैटर्न मतलब उनकी टाइमिंग जो है वो चेंज होगा. एंड द हीट इज मेकिंग देम लूज देयर एबिलिटी टू स्मेल. तो इस वजह से टेम्परेचर जब बहुत राइज हो रहा है तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स द मोर टुवर्ड्स द एरियाज वेयर टेम्परेचर इज नॉट दैट हाई. तो इस वजह से फ्रॉम रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका दे आर मूविंग टू स्कॉटलैंड. ठीक है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हुआ. एक चीज जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रखना है आपको याद, दे लुक लाइक हनी बीज बट बम्बल बीज दे डोंट मेक एनी हनी. ओके, ये याद रखिएगा. They don't make any honey. They definitely make it, but they don't store it. All right. So they don't store food for winters. अब ये they do not store for winters. क्यों? Normally bees they store their honey for winters, but bumblebees they don't do it. They don't do it because in winters they hibernate. ठीक है, they hibernate naturally. So they don't need honey to survive because they hibernate in winters. पूरे sleeping mode में चले जाते हैं. और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है याद रखने का कि दैट ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन दे हाइबरनेट ओनली फीमेल बीज आर अलाइव व्हेन इन विंटर्स. ठीक है, तो इन विंटर्स ओनली दे आर, तो दे बेसिकली मेट इन समर्स. ऑलराइट, तो ये जो वर्कर और मेल बीज है ना दे नेचुरली डाई इन समर्स. Sorry, they naturally die in winters, not summers. In winters. They are alive in summers only. And queen bee hibernate in winters, alive in both summers and winters, definitely. ठीक है? Alright. Now we have another species which is known as the anemone. News देख लीजिए एक बार क्या है. Scientists flag mass the anemone bleaching of Agaty Islands. Rising sea surface temperature disturb the delicate balance between sea anemones and their symbolic algae. This disruption triggers आगे की न्यूज़ थी. तो sea anemone जो है this is somewhat is a species which is important. इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा because some interesting facts may come up. The first interesting fact is they are aquatic animals. Alright, they are looking like plants but they are animals. Remember this. They look like flowers but they are basically animals. And what type of animals are there? They are carnivorous. Okay. Plus these sea anemone they also have the ability to sting venom. All right, so they are aquatic animals, look like flowers, all right, but basically are carnivores and they also have ability to sting venom. Now अगर ये information नहीं पता है तो you cannot write it in the you cannot
बेसिकली अंडरस्टैंड, अगर ऑप्शन में दिया है आप नहीं समझ सकते कि ऐसा कुछ फीचर होगा, बिकॉज सी एनिमोन लग रहा है कि कोई एल्गे है या कोई प्लांट स्पीशीज है, और अगर एनिमल स्पीशीज नहीं पता है तो आपको नहीं समझ में आएगा बाय द नेम। दूसरी बात कि इट कैन स्टिंग वेनम इज ऑल्सो समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि नॉर्मली यू कैन नॉट गेस। ऑलराइट, so this is something important to be remembered. Next is where is it found? तो टेम्परेट सी में, ओके, विच इज टेम्परेचर की अगर आप बात करें तो शुड बी अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, एंड बेसिकली ये जो टेम्परेचर रीच हुआ था ना अबाउट दिस 33 डिग्री सेल्सियस, वेयर इन अगाटी आइलैंड। कहाँ है अगाटी आइलैंड? देखिए ये सारी चीज़ें, प्लेसेस अगर कुछ आ रही है नहीं पता है तो उसको सर्च करके उसी समय पढ़िए। Now this temperature rise of 33 degrees Celsius, this has basically resulted in the mass bleaching of this animal. ठीक है, तो this is the reason कि mass bleaching has been done because of the rise in temperature of the waters. Now tidal zone तक मिलता है ये, this species are found in the tidal zone, and depth of the tidal zone up to 10,000 meters तक you can find this. All right, also they are also found in brackish water, also found in brackish waters. ठीक है, तो वार्म सीज जो होते हैं ना, दैट इज ट्रॉपिकल सी, तो ट्रॉपिकल सी में भी दे आर फाउंड। ऑलराइट, इन टेम्परेट रीजन में भी दे कैन बी फाउंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट दे ऑल्सो मूव, बट वो मूविंग नहीं हो, दैट इज सॉर्ट ऑफ दे क्रीप वेरी स्लोली, दे क्रीप ऑन द सर्फेस ऑफ द सी। ठीक है, इस तरह का होता है बेसिकली ये स्पीशीज। अगर आप देखें तो इसमें ना ये ऐसे, दिस इज द पेटल डिस्क। ठीक है, ये जो डिस्क है ना, दिस गेट अटैच्ड टू एनिमल्स। ठीक है, दे गेट अटैच्ड टू द एनिमल्स लाइक क्रैब्स में या कोरल्स में, दे गेट अटैच्ड टू दिस। तो बेसिकली इसका ना पैरासाइटिक बिहेवियर है, पैरासाइटिक नेचर है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहता है, symbiotic relations with other animals represents parasitism और communalism. parasitism क्या है, communalism क्या है, पता होगा आपको, आपने पढ़ा होगा अपने environment की बुक्स में या नोट्स में। ठीक है, एक वेरी फेमस एनिमल है क्लाउन फिश। तो ये ना क्लाउन फिश के साथ इसका बहुत नज़दीकी रिश्ता है। क्लाउन फिश के बैक पे इट गेट दिस गेट्स अटैच्ड, एंड देन दे ईट द लेफ्ट ओवर मीट ऑफ द क्लाउन फिश। बताया था ना ऊपर कार्निवोरस है। ठीक है, तो इट ईट्स द फ्लैश। ओके, नथिंग मोर टू टेल अबाउट द स्पीशीज। IUCN स्टेटस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है इसका कुछ, बट इन्फॉर्मेट न्यूज़ में थी, इस वजह से आई हैव डिस्कस्ड अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नाउ वी हैव द स्पीशीज विच इज नोन एज बैटलपिस चंद्रयानी। ठीक है, तो चंद्रयानी जो नाम है, दिस हैज बीन नेम्ड आफ्टर द चंद्रयान 3 मिशन। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि किसी स्पेस मिशन के ऊपर कोई स्पीशीज का नाम दिया गया हो। तो रिमेंबर दिस, a new species of marine tardigrade discovered from the southeast coast of Tamil Nadu has been named Vaquitas Chandrayani after the Chandrayaan 3 moon mission. ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। So this species basically it is a microscopic organism. तो ये स्पीशीज ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा, दिस इज सीन लाइक दिस अंडर माइक्रोस्कोप, नॉट नॉर्मली थ्रू नेकेड आइज। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। इसका इट इज लुकिंग लाइक अ बियर, सो इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर बियर। ठीक है, रिमेंबर दिस। वेयर इज फाउंड बिटवीन द सैंडी एरिया ऑफ हाई एंड लो टाइड्स। समझ में आपको इसका मतलब कि, मतलब अगर ये मान लीजिए सी है, ठीक है, और ये आपका कोस्ट लाइन है, तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दैट ड्यूरिंग डे टाइम द वाटर ऑफ द सी इज रीचिंग टिल दिस रीजन। ठीक है, और जैसे ही मून होता है, शाम होती है, हाई टाइड आता है, तो वाटर स्टार्ट्स रीचिंग ओवर टिल दिस एरिया, कोस्टल लाइन को हिट करना शुरू कर देता है वाटर। और इसके बीच में जो ये एरिया होता है ना,
तो दिस इज द हाई टाइड, वाटर एंटरिंग यहाँ तक, तो दिस इज हाई टाइड वाला रीजन और दिस इज नॉर्मल लो टाइड वाला रीजन, या उसके और भी अंदर लो टाइड अगर हुआ तो उसके बीच का ये जो रीजन है ना, ये पूरा सैंड होता है, जहाँ पे आप देखे होंगे बीच स्पोर्ट्स वगैरह खेले जाते हैं, वॉलीबॉल एंड ऑल दीस थिंग्स, तो वो सैंड के ऊपर होता है। दिस सैंड, दिस इज एरिया बिटवीन दी हाई एंड लो टाइड, तो इस एरिया में ये मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक है, इफ वी से दैट इज इट फाउंड इन स्पेसिफिक ocean or something like that, so no, it is found in nearly every ocean. It has been found near Tamil Nadu, southeast coast of Tamil Nadu, that is in the news because new species has been found. अब वो न्यू स्पीशीज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल इज नॉट इंपॉर्टेंट। बैटिलिपिस चंद्रयानी क्या है, बेसिकली चंद्रयान 3 के ऊपर नाम दिया गया है, ओशन से पाया जाता है, वाटर बियर इसका नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक चीज़ और याद रखिएगा कि दिस स्पीशीज हैव एक्सीलेंट सर्वाइवल कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो इट कैन सर्वाइव इन वेरी हार्श सिचुएशंस और हार्श कंडीशंस। सर्वाइवल कैपेबिलिटी इज वेरी वेरी नाइस, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑलराइट, you can see its shape is somewhat like a trapezoid. Trapezoid shaped head. Pardon me for the handwriting, थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, but इसका जो सर है, this is somewhat looking like a trapezoid and 4 pair of legs हैं। 4 pair of legs मैंने टोटल 8। ठीक है, and a very high sensory system। तो जो स्पाइन्स है ना, इसका सिस्टम है ना, वेरी सेंसरी, वेरी हाईली सेंसिटिव। ठीक है, सेंसरी इसकी एबिलिटी इज वेरी हाई। ये एक फीचर है जो आपको याद रखना है, बाकी इससे रिलेटेड नथिंग मोर टू टेल। सी क्यूकम्बर्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज फॉर द सी एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द सी, ऑल्सो नोन एज वैक्यूम क्लीनर्स ऑफ द सी। क्या है फीचर्स वगैरह बताता हूँ अभी। द मूपर्स ऑफ द ओशन फ्लोर। ठीक है, सी हेल्थ को, ओशनिक फ्लोर की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज। In fact, these sea cucumbers, these are animals. ठीक है, again animals है ये, तो since it is an animal, so it poops also, and its poop is very healthy for the oceanic floors। ठीक है, oceanic acidification जो है, तो acidic oceans को ये alkaline में convert कर देता है इसका poop, and it is very healthy for the oceans and the floor of the oceans as well। ठीक है, let's see it in a bit of detail। Sea cucumbers, all right, as the name suggests, cucumber, it's not a vegetable। ठीक है, क्या है ये, इट इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर एनिमल ग्रुप विच इज नोन एज इक्नोडर्म्स। ठीक है, व्हाट इज द फीचर ऑफ दिस एनिमल, दिस इज नॉट कार्निवोरस, नॉट हर्बीवोरस, बट ओमनीवोरस। अच्छा, ये इक्नोडर्म्स ये भी होते हैं, स्टारफिश इज ऑल्सो इक्नोडर्म्स। ठीक है, as the structure you can see, tube like structure है, cucumber like structure है, alright, और इसके छोटे छोटे feeds भी होते हैं, if you can see over here। ठीक है, तो it has small feeds also which helps it in the movement, alright, तो small feeds भी होते हैं इसके, that helps in the movement। now important factor or one important features is it shoots their own internal organs to the predators। डिफेंस मैकेनिज्म है, अपना ही इंटरनल ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गन है, उसको शूट करता है टुवर्ड्स द प्रेडेटर्स थ्रू द एनल ओपनिंग। कहां से, और ऑर्गन को शूट किया, बाहर निकाल दिया, तो फिर ऑर्गन क्या होगा, इट विल अगेन रीग्रो, द ऑर्गन अगेन रीग्रोस। ओके, द शूटेड ऑर्गन अगेन रीग्रोस। वेयर इज इट फाउंड, इट इज फाउंड इन all the oceans, all the oceans they can be found, all right, so and live in the ocean floor as I have told you। इसमें एक peculiar जो फीचर है वो ये है कि इसका जो the lava of this species, ये species जो है sea cucumbers, they are found in oceanic floor। ठीक है, जो बेंथिक रीजन होता है, but lavas they are planktonic, मतलब they float on the सी सरफेस। ठीक है, जो सी या ओशन का सरफेस है ना, उस पे द लावास दे फ्लो, ऑलराइट।
एनल ओपनिंग इज ऑल्सो यूज फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर डिस्चार्जिंग वेस्ट्स. मैंने अभी बताया आपको कि poop is alkaline. The poop is alkaline, and which controls, since it is an alkaline poop, so it will control what? Oceanic acidification. ठीक है, since it is alkaline. अब ओशनिक एसिडिफिकेशन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब दिस poop is also good for coral reefs, है ना, बिकॉज कोरल रीफ जो है वो ओशन अगर एसिडिफाई होता है तो कोरल रीफ्स ब्लीचिंग शुरू हो जाती है. तो दिस विल कंट्रोल द एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन एंड हेंस कोरल रीफ्स विल बी प्रोटेक्टेड. ओके, नाउ इट आल्सो एक्ट्स एज अ वैक्यूम क्लीनर. ठीक है, बिकॉज ओशन में मूव करता है ना, जब जितने भी ओशन की डर्ट है या जितने भी अनवांटेड स्पीशीज है या डेड स्पीशीज है जो भी ओशन में, इट कंज्यूम्स इट ऑल एंड देन डाइजेस्ट्स एंड poops. Poop is alkaline, so which is healthy for the oceanic flow. All right, so this is what is important. IUCN status वगैरह is not important because it's abundant in the nature, or it's found mostly in every ocean. ठीक है, anything else I don't remember which is extra to be told to you regarding sea cucumbers. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. सीवीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली जो फूड इंडस्ट्री है ना, उसमें सीवीड का बहुत यूसेज देखा गया. तो फूड इंडस्ट्री में सीवीड्स का यूसेज देखने का रीज़न क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा पहले बता दे रहा हूँ कि पहले तो हाई इन प्रोटीन होता है सीवीड्स. ठीक है, लो इन फैट्स एंड कार्ब्स. तो जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिम गोइंग पीपल हैं, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस न्यू सीवीड एज अ फूड ऑप्शन. दूसरा फैक्टर ये है कि दिस इज वेरी हाई इन B12, ओमेगा 3. B12 एंड ओमेगा 3 इज हाई, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. तो वो भी इस वजह से डिमांड में है. एमिनो एसिड्स, ये हो सकता है, पूछ सकते हैं कि सीवीड में क्या क्या पाया जाता है, what all are found in seaweeds. तो फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. फाउंड इन एमिनो एसिड्स, लॉट ऑफ एमिनो एसिड्स आर फाउंड, फैटी एसिड्स आर फाउंड, फाइबर्स डेफिनेटली हैं इसमें, यू कैन सी, लॉट ऑफ विटामिन्स आर आल्सो फाउंड, मिनरल्स. ठीक है, तो ये सारा सीवीड में पाया जाता है. ऑल दोस nutrients which are found mainly in fishes are found in seaweed. So for vegetarian people, this is a very good alternate of marine food, because again seaweed is also in aquatic life, so it gets the those features of the जो आपके इसमें जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं या विटामिन्स पाए जाते हैं वो सारे इसमें मिलते हैं. ओमेगा 3 वगैरह, B12, दिस इज फाउंड इन अ लॉट इन फिशेस एंड इक्वली इन सीवीड्स आल्सो इट कैन बी फाउंड. ठीक है, नाउ अगर ये देखा जाए कि सीवीड्स मिलते कहाँ हैं, तो इट इज फाउंड इन नॉट ओनली ओशन, बट इट इज फाउंड इन ओशन, फाउंड इन लेक्स, इट इज फाउंड इन रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज आल्सो यू कैन फाइंड दिस सीवीड्स. ठीक है, there is one organization which is also working very constructively towards the seaweeds, and that organization is UNEP. ठीक है, this program is working for its protection, seaweed protection day. This program is working, United Nations का environmental protection. All right. तो ये सीवीड जो है इसके there are a lot of species, around 12,000 species are found. इसमें you can see there are red algae and plants जो है ना, 12,000 are found. रेड algae होते हैं, ग्रीन algae होते हैं, ठीक है, एंड देन ब्राउन algae होते हैं. तो जो सीवीड्स है ना, बेसिकली ये लार्ज ब्राउन सीवीड्स होते हैं जो मिलते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज केल्प्स. पढ़ा है ना, केल्प्स फॉरेस्ट. ठीक है, तो दे आर फाउंड इन nutrient rich waters only. Okay, and these kelps they thrive in warm or cold waters. ठीक है, since they thrive in cold water, so these kelps are not found in tropical waters. ठीक, ये थोड़ा सा याद रखिएगा. फैक्ट फीचर्स ऑफ सीवीड क्या होगा कि दे विल प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर. ठीक है, यस, दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू whom? marine life. ये जो सीवीड्स देख रहे हैं ना आप, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, फिशेस, ये जाके दे क्रिएट अ हैबिटेट ओवर इन दीस बुशेस. ठीक है, दिस इज एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिस इज सीवीड्स ना, दे आर वेरी गुड कार्बन सिक्वेटर्स. कार्बन सिक्वेटर्स हैं बहुत अच्छे. तो दैट इज व्हाई दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल. कार्बन सिक्वेशन हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा. ठीक है, उससे क्या होगा, वाटर क्वालिटी विल बी इंक्रीज्ड,
हाँ, एंड सिक्विस्टर्स है तो पॉल्यूटेंट्स इन द वाटर्स वुड ऑल्सो बी फिल्टर्ड. ऑलराइट. ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि फूड इंडस्ट्री में क्यों यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा. ऑलराइट. तो सीवीड से रिलेटेड देयर इज नथिंग मोर टू टेल. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अगरवुड. अगरवुड इज अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स बिकॉज अगरवुड बहुत न्यूज़ में था. और साइट्स जो है उसने कुछ रिलैक्सेशन दिया है अगरवुड के एक्सपोर्ट में. तो रिलैक्सेशन क्या है कि पहले इसका साइट्स क्या है बेसिकली इट इज. अच्छा, साइट्स है क्या बेसिकली? जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड होता है किसी भी थ्रेटेंड स्पीशीज का, तो उसको साइट्स कंट्रोल करता है. नाउ विच स्पीशीज? ओनली एनिमल्स और प्लांट्स. साइट्स जो है इट अप्लाइज टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है. किस चीज में प्रोटेक्ट करता है? देयर ट्रेड. इट इज बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग है. ठीक है. बट दे डोंट चेंज दी लोकल लॉज ऑफ द नेशन. जो भी नेशन पे ये अप्लाई हो रहा है वहाँ के लॉज अगर हैं कुछ तो उसको चेंज नहीं करता. ठीक है. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू दैट एक्सपोर्ट्स में ईज किया है तो बेनिफिट करेगा लॉट ऑफ फार्मर्स को. सिंस दिस इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, दिस अगरवुड जो है ना, दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. तो हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन विल बी गिवन. बट हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन तो ठीक है, लेकिन इट हैज़ सम व्हाट मॉनेटरी बेनिफिट्स एज वेल टू द फार्मर्स जो इसको ग्रो करते हैं. ऑलराइट. ये अगरवुड जो है, ये अगरतला का नाम जो है ना, दिस हैज बीन केप्ट फ्रॉम दिस अगरवुड ओनली. अगरतला वेयर? त्रिपुरा कैपिटल. ठीक है. तो इसमें क्या किया है ना, साइट्स ने अलाउ किया है कुछ कोटा फॉर द फार्मर्स सो दैट दे आर ऑल्सो बेनिफिटेड. कितना अलाउ किया है? 1,51,080 kg per year of trade from India is allowed as per sites for agarwood. ठीक है. तो ये है इसके वुड का जो अलाउड कोटा है. वुड, अगरवुड का जो वुड है पेड़ ट्री का, दैट इज दिस अमाउंट ऑफ वेट ऑफ द वुड कैन बी ट्रेडेड. लेकिन इट्स नॉट ओनली द वुड. जो इसका ऑयल है ना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इनटू डिमांड. वो कितना अलाउ किया? उसका 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 जो वेट विच इज अलाउड दैट इज 7,050 kg पर ईयर. ये दोनों पर ईयर है. ठीक है. विच इज अलाउड बाई साइट्स. तो दोज फार्मर्स हु आर इन्वॉल्व इनटू दिस अगरवुड बिजनेस दे विल बेनिफिटेड क्योंकि अब ट्रेड के लिए अलाउ कर दिया है. वेरी कॉस्टली. ठीक है. तो देख लेते हैं चलिए इसके अगरवुड के बारे में थोड़ा सा. कि इन इंडिया फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. याद रखिएगा इसको. अगर कहीं और इंडिया में बोलते हैं कि वहाँ मिलता है, नहीं मिलता. नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनली इन मणिपुर, आसाम एंड त्रिपुरा रीजन. ठीक है. त्रिपुरा रीजन अगरतला का नाम पड़ा है अगरवुड से ही. ठीक है. आसाम में दिस वुड्स आर नेम्ड एज सांची ट्री. ठीक है. एंड दिस अगरवुड इट इज वेरी मच यूज्ड इन दिस अरोमा इंडस्ट्री, मैंने परफ्यूम वगैरह. ठीक है. तो ये याद रखिएगा कि अरोमा इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है. इसमें से रेजिन निकलता है बेसिकली. ठीक है. तो रेजिन निकलता है ना जो अगरवुड जो है ना, दिस ट्री, इसमें क्या होता है, एक देयर इज वन इंसेक्ट व्हिच अटैक्स. तो दिस इज नोन एज एम्ब्रोसिया, AMBRO. एम्ब्रोसिया बीटल होता है. ये अटैक करता है जब इन्फेक्शन हो जाता है ट्री में, मोल्ड्स बन जाते हैं, तो दिस बीटल अटैक्स द ट्री. ठीक है. अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म में ट्री रिलीजेस अ रेजिन. ठीक है. क्या करता है? ट्री रिलीजेस. तो वो मटेरियल जो निकलता है ना, जो ट्री रिलीज करता है, तो दैट रेजिन, दिस इज बेसिकली एरोमेटिक. तो अगर ये मोल्ड्स नहीं होंगे, एम्ब्रोसिया बीटल अटैक नहीं करेगा, तो ये रेजिन नहीं निकलेगा डिफेंस मैकेनिज्म में. और ये रेजिन नहीं निकलेगा तो अरोमा इंडस्ट्री में जो यूज होता है ये यूज नहीं हो पाएगा. दिस रेजिन इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड. ठीक है. इसका रेट पता है कितना है? दिस इज 80 lakhs पर kg. दैट इज द प्राइस ऑफ दिस रेजिन. ठीक है. तो कितना कॉस्टली है ये देख लीजिए. अब कहाँ मिलता है ये मैंने बता दिया, इन एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है. तो basically the hilly areas or above 750 meters of the sea level this is found. Rainfall should be good.
around 200 to 400 centimeters of rainfall should be there for this tree to survive. Temperature must be below 33 degrees Celsius, okay, and humidity should be below 85%. अगर इसमें से कुछ भी इंक्रीज कर, देखिए ये मणिपुर में है, आसाम में है, त्रिपुरा में नहीं, आसाम के नीचे ही मेघालय, मेघालय में नहीं मिलता है भाई। ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, ह्यूमिडिटी मेघालय की हाई है, क्यों? हेवी रेनफॉल। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्ट करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया करिए। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट दिस अगरवुड, पूछ सकते हैं एग्जाम में, वेरी मच इन न्यूज। चलिए नेक्स्ट स्पीशीज, दिस इज सिनफिचिया कैनिरियस। चाइनीज साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ प्लांट दैट कुड सर्वाइव ऑन मार्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था, चाइना में दिस डिस्कवरी हैज बीन डन, और ये प्लांट है विच कैन सर्वाइव इन मार्स। ऑलराइट, नाउ if this plant can survive on Mars, then definitely when the Mars colonies would be set up, so this plant will be the only plant as of now which we know which can survive on Mars, and it can be used for release of oxygen, and पूरा एक ecosystem बैठाने के लिए this plant can be very useful. ठीक है, formation of life on Earth was also as such, कोई एक algae वगैरह से reaction हुए, oxygen form हुआ, species बने, all those things. So this can be a very useful species for settling the colonies or settling the मैनकाइंड ऑन मार्स, तो इस वजह से ये स्पीशीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑलराइट, चलो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार, इसके बारे में लिखना शुरू करता हूँ। दीज आर डेजर्ट मॉस। ठीक है, डेजर्ट मॉसेस हैं एंड दे लैक ट्रू रूट्स। डेजर्ट में सबसे ज्यादा मिलते हैं एंड दे लैक ट्रू रूट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। मार्स में if it can survive on Mars, that means the tolerance capability of this plant is very high. ठीक है, तो it is tolerant to drought, very high temperature, that is cold also. ठीक है, minus around 200 degrees Celsius तक this can survive, and it can survive in drought also. ठीक है, without water, and also it can survive a very high radiation. So far so good. ठीक है, हाई रेडिएशन सर्वाइव कर लेगा, हाई कोल्ड टेम्परेचर सर्वाइव कर लेगा, एंड ड्रॉट माने विदाउट वाटर इट कैन सर्वाइव। बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सॉल्ट वाटर पे इट कैन नॉट ग्रो, इट कैन नॉट सर्वाइव ऑन सॉल्टी वाटर्स, सॉल्टी रीजन्स में इट कैन नॉट सर्वाइव। तो ये कुछ लिमिटेशंस है इसके। एडाप्टेशन की अगर बात करें तो टाइनी हेयर्स आर फाउंड हियर, यहीं पे इसी में। ठीक है, यू कैन नॉट सी इट, tiny hairs are found on the end of each leaf. ये जो लीफ देख रहे हैं आप, यहाँ पे ना टाइनी हेयर्स है, वेरी टाइनी हेयर्स आर फाउंड ऑन दीज लीव्स। ठीक है, एंड व्हाट दीज टाइनी हेयर्स ऑन द लीव्स डू, दे कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, वेयर इज इट फाउंड? अभी फाउंड इन डेजर्ट एरियाज ऑफ चाइना, डेजर्ट ऑफ यूएसए, पामिर नॉट के एरिया में, तिब्बत में, मिडिल ईस्ट में, अंटार्कटिका में भी इट इज फाउंड। ठीक है, तो ऑल सब डेजर्ट्स जहाँ पे हैं वहाँ दे कैन बी फाउंड, थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज फाउंड। एज आई हैव टोल्ड, यू कांट ग्रो ऑन सॉल्ट वाटर और सॉल्टी रीजन्स। ठीक है, एंड एक चीज में बहुत जो यूनिक फाइंड की गई है कि इफ सम एक्सट्रीम कंडीशंस आर पुट इन, से फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम कंडीशंस आर पुट इन टू दिस प्लांट्स, इट कैन रीजनरेट विद इन सेकेंड्स अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस को इट कैन सर्वाइव वेरी गुड। देन इट कैन ऑल्सो ग्रो इन फॉरेस्ट्स। ऐसा नहीं है कि ड्रॉट कंडीशन को सर्वाइव करता है तो सिर्फ ड्रॉट्स में ही, जहाँ पे ड्रॉट होगा वहीं फाइंड आप इसको कर सकते हैं। इट कैन बी फाउंड इन फॉरेस्ट, इट कैन बी फाउंड इन वेटलैंड्स और डेजर्ट्स को तो मैंने बताई है। ओके, इट ऑल्सो हैज अ सिम्बायोटिक सॉर्ट ऑफ रिलेशन विद फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो फंगाई एंड बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन soil formation. Remember this, helps in soil formation and prevents soil erosion as well. All right, is it found in moist areas? Yes, wetlands are moist areas only. So moist and shady regions में these are found. Now tolerant है अपना बहुत हाई टेम्परेचर का, टॉलरेंट है ड्रॉट का, टॉलरेंट है रेडिएशन का, बट इट इज नॉट टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर्स।
This is the shortcoming. Not tolerant to high temperatures, also not tolerant to salty areas, salty waters. ठीक है? High temperatures को they are not tolerant मतलब cannot survive heat. This is one shortcomings of this plant. Okay, it cannot survive heat or it cannot survive the high temperatures. Okay, so this is about this plant. Okay, let's move forward. So now we have next seamal trees, which is also known as silk cotton. Okay, seamal trees basically इसके बारे में बता देता हूँ. They are deciduous trees. Okay, and semi evergreen forest में they are found. All right. In news it was also because it was disappearing from Rajasthan. Height of these trees is very high. They are high as 60 meter. ठीक है. And if these trees are disappearing, so they can have adverse consequences for the health of the forest and people in the area. ठीक है. Important feature, this is again drought resistant and fire resistant. इसके कल्चरल, मेडिसिनल और environmental properties भी हैं. Tribal people respect these trees a lot. Okay, there are some important tribes related to it. Garasia tribe. Then we have Kathoti tribe. All right, and then Bhil tribe. Now this Garasia tribe, they believe that they are descendants of the seamal trees. Okay, they believe that they are descendant of these seamal trees. This Kathoti tribes, they use this tree wood to make musical instruments. Okay, so musical instruments बनाते हैं. This Kathoti tribe and Bhil tribe, they basically make wooden utensils from this tree. All right, if you talk about the native, yes, it is native to South Asia. This tree is native to South Asia. All right, and thrives in summer and warm seasons as well. As significance as I was talking about, so they have cultural significance. Kya? This was mentioned in Mahabharata and Ramayana. This tree reference comes from Mahabharata and Ramayana, and tribal culture, maybe this is very important as I've told you. Okay. Then they also have medicinal properties. देखिए, all those trees or plants which have unique places in the culture or tradition or worship, religion, they will be having so because of the medicinal properties and unique properties those trees or plants are having. इस चीज का ध्यान रखिएगा. Neem, neem tree, peepal tree, banyan tree, tulsi tree, all these trees used to have some significance. They still continue because of which they were given some religious and cultural, sort of respect or cultural values थे उनके, because they had some specifications which are, or they had something in them which were important for the human life. ठीक है, humans के लिए कुछ उसमें important था. किसी की age बहुत ज़्यादा थी, किसी जैसे banyan tree lives for hundreds of years. Peepal tree, lot of oxygen is released from peepal tree. Neem tree, it is used as an antiseptic. Again tulsi used as an antiseptic and medicinal properties. तो इन पेड़ों को बहुत ज़्यादा reference, बहुत ज़्यादा importance दिया जाता था. ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा. ठीक है. Medicinal properties, it is used in Ayurveda plus traditional medicines जो थी. All right, plus anti-diabetic properties have. These trees have anti-diabetic properties. All right, then environmental features, factors were also there. What if the trees are flowering late? These type of flowers are found on these trees. If they are late flowering, that means that long summers will be there for the relevant year. ठीक है. Soil fertility is also, they also improve the soil fertility. ठीक है. तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत आपको याद रखनी है regarding this seamal trees. All right, let's move forward. Now this is a fern. ठीक है. Biggest genome
ever found belongs to this odd little plant. A small, unassuming fern-like plant has something massive lurking within, the largest genome ever discovered. So this is important. कुछ important news है इसमें. Outstripping the human genome by more than 50. आगे की news होगी. मैं बताता हूँ कि it is more than 50 times bigger genome than human genome. ठीक है? So this fern, this oblanceolata, this is important in sort of news. Now understand what is genome. ठीक है? क्या है ये? Genome basically represents the complete hereditary genetic information of an organism. कैसे? It is encoded in its DNA. ठीक है, तो chemical named as DNA उसमें encoded होता है. The human genome, it is having how many pairs? 23 pairs of chromosome in human genome. ठीक है, and around 3 billion of DNA pairs are found. This is about human genome. ठीक है, तो genome basically क्या contain करता है? Genome, it contains chromosomes. ठीक है, these chromosomes they contain the genes, and these genes are made up of the DNA. ठीक है, तो ये है genome will contain chromosomes, chromosome will contain genes, genes are made up of DNA, and that is what the DNA is. Now this fern plant, it has the largest what? Plant genome. ठीक है, plant genome में भी largest है, सारे species के genome में भी, in all species. Okay, and largest fern genome also. All right. So largest genome मतलब क्या? Largest amount of DNA would be stored in any of the nucleus of a living organism. DNA जो है, that is stored in nucleus of any living organism. तो largest genome मतलब largest pairs of DNA और largest DNA would be stored. ठीक है, अब कितना large? इतना large कि it is 50 times that of human genome. ठीक है, अगर DNA from each cell is taken ना for this fern, so the size would be around 100 meters long. DNA of each cell would be this long, 100 meters. Human DNA पता है कितना है? It is only 2 meters. तो हो गया ना 50 times. All right. Now, if I tell you about this oblanceolata, this fern, basically fern क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ का ट्रंक है, this falls on ground, ठीक है, or on ground also there is a fern that goes, the tree or the small fern like this, it grows on this trunk of the tree. ठीक है, तो the trunk of the tree would be called as epiphyte. ठीक है, on which this fern is growing. I hope you can see this. This tree trunk would be known as epiphyte, and उसके ऊपर this fern is growing. All right, where is it found? Found in New Caledonia, all right, which is in southwest of Pacific. All right, very small plant. It is not a very big plant, very small plant, maybe of 10 centimeters of height, not more than that. Okay, but it has the largest genome. And one more important fact about this, this species, this is even older than the dinosaurs. All right, this plant species is even older than the dinosaur species. And rest, there's nothing which important thing I remember as I need to tell you. Ferns, you must be knowing that ferns do not have any flowers, or flowers नहीं है, तो seeds भी नहीं है. No seeds and flowers are found in the ferns. But yes, ferns will have a root, it will have stem, it will have leaves. Okay, this will be there. All right. So now Neela Kurinji
becomes a threatened species officially. ठीक है, तो नील कुरिंजी is a threatened species. Where is it found? What is the specific features of this species? Let's found. It is a flower, basically, as you can see in the picture, also blue in color. It grows in every 12 years. Okay, so that is something which is important fact about this. And since it grows in every 12 years, so there's a tribe named as Palyan tribe, which calculates its age by the flowering season of this flowers, this tree. ठीक है, नील कुरिंजी है क्या? Is it a tree? No, it is a shrub. SHRUB. ठीक है, grows in every 12 years. In every 12 years it flowers. Alright, where is it found? In solar forests. Solar forests क्या होते हैं? These are basically grasslands, but they are found above 1200 meters of sea. तो grasslands जो sea से 1200 meters ऊपर पहाड़ों में मिलते हैं, they are the solar forests, specifically found in Western Ghats area. ठीक है, so these नील कुरिंजी are also found in Western Ghats, Tamil Nadu, area of Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. Alright, Palyan tribes, I have told you, and its IUCN status is vulnerable. Achha, there was one species of snake which was also in use, that was Vasuki indica. Okay, so this was the largest species of snake which was ever found on Earth. The size was around 50 meters. It was earlier found. Fossils have been discovered by students of IIT Roorkee, but that snake species is no more found abhi. Vasuki snake is also known to be the snake which is around the neck of Lord Shiva. ठीक है, तो वासुकी इंडिका एक स्पीशीज थी, मैंने उसको मेंशन नहीं किया है, बट आई जस्ट गॉट रिमेंबर्ड, so I just told you कि अगर if something related to that comes you can mention it. ठीक है, alright, it is not found now, definitely don't get worried. 50 meters of snake is quite big, quite large, so it's not found now, but yes, it was a species which was, this species is discovered by students of IIT Roorkee. Was in news, so I just discussed. So now let's come to water spinach. Now this was in news, green synthesis of silver nanoparticles using Lepimia aquatica leaf extract. The study represents the green synthesis of silver nanoparticles using Lepimia aquatica, water spinach, leaf extract and investigative research. इसमें important ये है species water spinach. ठीक है, कहाँ मिलते हैं? Let's see, tropics and subtropics में. Are they found in temperate regions? No. Tropics and subtropics मतलब they require a minimum temperature, that is warm waters. Alright, these are semi-aquatic. Definitely they are plants. Alright, they also are grown commercially in Southeast Asia region. Alright, India में and US में they are found as weeds around the marshy lands or wetlands area. ठीक है, and it is also consumed as food. Commercially है, so as food also it is consumed, but India में it is abundantly found. Alright, what is the food? As food it is called as, you must have heard of kalmi saag. ठीक है, एक और इसका नाम है नारिका साग. So this is also used as food. Definitely has several medicinal benefits as well. Starting में जितने भी species है ना, those species are very uncommon species which you will find. They were in news somewhere, so I have just mentioned them. That is why the number of species has gone to 75 to 80 species are being discussed here. I have taken all the species जो भी monthly magazines में species मिले हैं, I have taken them all. Alright, now we come to ashwagandha. Now ashwagandha root extract on aging related changes in healthy dietary dogs. So there was a research which was done on dogs. Okay, and it was found that ashwagandha has adaptogenic properties. What are adaptogenic properties? These properties shows that consuming ashwagandha reduces stress and inflammation in body. ठीक है, तो stress को कम करता है ashwagandha. This has been found. The roots, they smell like horse, बहुत pungent सी अजीब सी smell होती है roots की. It is also known as Indian ginseng. This is GINSENG, Indian ginseng. It is also known as Indian winter cherry.
ठीक है. अश्वगंधा क्या है? ट्री है, shrub है, रूट है, फर्न है, क्या है? दिस आर shrubs. ठीक है. These are native to India, then North Africa, Middle East regions. ठीक है. These regions, this ashwagandha shrub is found, and yes, it is drought tolerant. Ashwagandha is drought tolerant. Remember this. All right. Family of tomatoes and potatoes जो होती है ना, उसी family का ashwagandha. It has Ayurvedic medicinal properties and also acts as an antioxidant. ठीक है. Which helps you to look younger in higher ages also. Manage stress मैंने बता ही दिया है. Since drought resistant है, तो it grows in dry parts of subtropical region. What are the dry parts of the subtropical region? Rajasthan, Maharashtra, Haryana, Punjab, then Gujarat, some parts of western UP, Madhya Pradesh. ठीक है. All these areas this ashwagandha is found. All right. So this is what is important as far as ashwagandha is related. अगर किसी का IUCN status या endangered status वगैरह नहीं बता रहा हूँ, that means it is not endangered, or the IUCN status and all these are not required. If there's something important for any species, then I'll definitely discuss. So let's go to next species now. All right. So the next species is this Arogyapacha. Okay, Arogyapacha. You can see here Kerala University researchers decode Arogyapacha genome. Known for its many medicinal properties, Arogyapacha is endemic to the Agastya Hills in the southern Western Ghats. Okay, so this is some of the information which you can see in the news itself. The details, some important facts we will see now. So Arogyapacha, this basically means the green that gives strength. Okay, so that means it is a plant which instantly provides you energy. Okay, also known as the miracle plant. Okay, endemic to southern tips of the Western Ghats, as we can see. All right. And this is basically, as I've told you, instant energy stimulant, energy drink, which is also traditionally used by the Kanni tribes. All right. So this Kanni tribes, this tribe uses this Arogyapacha for the instant energy drink sort of thing. All right. Now this Kanni tribe, it is settled in Agastya Hills. All right. This Agastya Hills, where are they? They are in basically Kerala. They lie in this region of Kerala plus Tamil Nadu. All right. Now the tribal doctors or tribal physicians, they also use this Arogyapacha traditionally. Okay, and what do they call it? They call it Plathi. Okay, so these tribal physicians, they also use it as a medicine, and they call it this Arogyapacha as Plathi. So ऐसा कुछ होता है कि बुखार है या normal weakness है body में, women during pregnancy, they are given these Arogyapacha by the tribal physicians, and even children are also given this medicine when they when they lack in energy, or in summers also this Arogyapacha is used a lot as a coolant drink. So in summers, if you lose a lot of energy and a lot of dehydration occurs, so this Arogyapacha in a drink form, it is given, which also revives your energy, and it has a lot of medicinal benefits as well. So this is about this Arogyapacha. This is I don't think so that we can discuss anything as such. Okay. Now we come to Boab tree. Now this Boab tree is very important. A lot of times we have seen this year that it was in news for several reasons. All right. So Boab tree is again very important. These are basically the deciduous tree. Okay. These are deciduous trees. Deciduous means it will lose their trees in some part of the year. Okay. They will lose their leaves. This tree will lose their leaves in some part of the year. That is the deciduous trees. All right.
Now, if we talk about the historical evidences as such, boab trees are known to be found around 21 million years ago. Okay, and where they were found? They were found in mainly Madagascar. ठीक है, तो Madagascar और African region में boab trees where they are native to that places, those places. All right. Totally, if we, they are also known as tree of life. तो अगर tree of life, which of the following trees are known as tree of life, कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो boab tree है उसका आंसर. And also known as mother of forest. Why? Because they have a very long life, and the size of the tree is also very, they are very high in height. Around 100 feet is the height, and they can live up to 3,000 to 5,000 years. But the known boab tree to us is around 1 to 75 years of age. Okay, so this is the boab tree which we know as of now. When we talk about this boab tree, total they have 8 species. 8 species of boab is totally found. 6 is endemic to Madagascar. Okay, 1 is to Africa, and 1 is to northwestern part of Australia. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी it is found. ठीक है, so total 8 species of this boab tree is found, and maximum number of boab trees are endemic to 6 are endemic to Madagascar region. Okay, now this boab tree is very essential for the African ecosystem also. Now, why is it important? Because factors हैं जो because of which it is very important. First is that it is, it keeps the soil humid. मतलब it has the water storage capacity. ठीक है, तो soil जो है वो humid रहेगा. दूसरा, it aids in lot of nutrients and its recycling. ठीक है, nutrient recycling में भी this tree helps. Since the tree is very large, so the roots जो है ना इस tree के roots are massive. Since the roots are massive, तो क्या होगा? They will prevent soil erosion. ठीक है, soil erosion. I'm writing this so that you can also mention it in your notes somewhere. लिख लो इसको. अगर आता है बहुत अच्छे से तब तो ठीक है, फिर fast forward में सुन लो. ठीक है. Now what else? The fruit of this tree, it has vitamin C. ठीक है, it has tartaric acid in it. It has potassium content. It has phosphorus. So we can see that a lot of minerals are also found in the fruit of this tree. All right. So that is the reason maybe that this tree is very important for the ecosystem. In India, is this tree is found? Yes, in India the tree is found in Manda region of MP. It is found in Prayagraj. ठीक है, जो इलाहाबाद था. Then there is a place named as Vai in Maharashtra. It is found over there. It is found in some parts of Gujarat. All right, in some parts of Andhra Pradesh. All these places this tree is found, and in Tamil Nadu also. But remember, it is not endemic to India. It has been brought by the Africans to India. और उस तरह से ये ट्री इंडिया में आया. इंडिया में we can find it at places. If you talk about IUCN stated, this is near threatened, or least concerned वाली category में. Sorry, not near threatened. It is rather least concerned में है. All right. What else? One more very important thing to remember here is that the seeds of this tree, और उससे जो oil निकलता है ना, it is used as insect repellents. ठीक है, तो the oil of the seeds, you cannot see if I think, yeah, so insect repellent है. ये remember करना आप. Lemongrass के ऊपर क्वेश्चन आया था, if you remember that it is a good mosquito repellent or something like that. तो इस तरह से ये boab tree के जो seeds है, इसके जो oil है, that acts as a good insect repellent. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके ऑप्शन में. ठीक है, इससे ज़्यादा I don't think so there is anything else to discuss about this boab tree. ठीक है, let's move forward. Okay, marsupials. Australian scientists create 28 kangaroo embryos using IVF in conservation breakthrough. ठीक है, तो IVF was used on humans earlier. This several marsupials have also been tested. इनके ऊपर भी IVF technology का use करके there are many species which have been conserved, or IVF technology से birth have been given to several marsupials. Now marsupials होते क्या हैं? Basically marsupials are those mammals which give birth to their young ones, and then the young ones they develop in the pouch. मतलब underdeveloped birth होता है,
about of the young ones, and then they have a pouch in their body, lower part of the belly, and the young ones which are underdeveloped, they develop fully in the pouch. Now, pouch का concept ये है कि there is a nipple attached at the lower belly of these marsupials, mammals, and the young ones, they get attached to those nipples, and the young ones are attached, and the pouch is the covering. Okay, the pouch holds the young ones. So basically, nipples होते हैं in the pouches where the young ones are attached, and they keep on feeding and they develop. ठीक है, तो these are marsupials. Example अगर marsupials का आप लेने जाएं तो you can see in this image also, these all are marsupials. तो कंगारू हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, नुम्बैट हो गया, रनाट हो गए, these all are marsupials. ठीक है, so what are marsupials? This I have told you. In Australia there are many marsupials हैं वो जो extinct हो जा रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज किया गया. Scientists successfully they have created 28 kangaroos embryos. तो कंगारू के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, and it has been successfully done. ठीक है, around 40 species actually of mammals, they have gone extinct in Australia. So this was the use. This was, required. That is why around 50 species of mammals are critically endangered in Australia. ठीक है, तो because of these issues ये IVF टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था. इसमें ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है बताने का. दिस वॉज समथिंग विच वॉज, ये न्यूज़ थी और उससे रिलेटेड जो थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन थे दैट आई हैव गिवन यू. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. ओके, नाउ दिस इज rhododendron. ठीक है, rhododendron, this is what it is. Now what are rhododendrons? These are evergreen or deciduous shrubs. ठीक है, either deciduous shrubs or small trees. ठीक है, basically these are flowering plants. मतलब ये जो rhododendrons हैं, these are the flowering plants. ठीक है, and these flowering plants are basically native to the temperate regions. Okay, they grow well in acidic, or you can say moist acidic soils of Himalayas. All right, so basically they are found in northern hemispheres, or the Himalayan soils or the mountainous soils are acidic, so they are found in there. Southeast Asia में, Southeast Asia में they are also found. In Southeast Asia they are found in the mountains of New Guinea. ठीक है, and some parts of North Australia also, but in some part of North Australia also they are found, these trees, these flowering plants. ठीक है, there is a species which is known as big tree rhododendrons. So this big tree, it is basically critically endangered, and then several species are there which are also famous. अब एक देखिए, जैसे there is a pink rhododendron. So this pink rhododendron is the state flower of Himachal Pradesh. ठीक है, then state flower of Nagaland, state tree of Uttarakhand, national flower of नेपाल. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये थोड़ा याद रखिएगा. सो नदर्न ऑस्ट्रेलिया और कुछ पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में भी देयर फाउंड. ठीक है, श्रीलंका एंड सम हिली एरियाज ऑफ पाकिस्तान, some parts they are found in there also. All right, now we have seen that climate change has basically affected the growth of these flowers. Basically reason ये था कि जो उत्तराखंड होता है वहाँ पे ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं they blossom every year in the month of March or April. So in those months basically होता है क्या, बर्फ जो होती है, the snow, it starts melting, तो बर्फ पिघलना शुरू होती है मार्च अप्रैल में, तब ये फ्लावर्स ग्रो करते थे. रिसेंटली क्या हुआ है उत्तराखंड में, इट हैज बीन सीन दैट इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी these flowers have started to blossom. ठीक है, तो दिस हैज क्रिएटेड अ कंसर्न
that the flowers, how are they blossoming before 4-5 months, जबकि इनका blossom होता था only after the snow starts to melt in the month of March, April. ठीक है, तो this is something which is a cause of concern. And okay, now see this beautiful bird in front of you, golden headed cisticola. ठीक है, found in Mathiketan Shola National Park, usually found in grasslands, was recently discovered in the Mathiketan Shola National Park. ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रासलैंड में मिलते थे, लेकिन अभी इस नेशनल पार्क में भी मिले हैं. तो दिस Mathiketan Shola National Park, this is in Udupi district. ठीक है, Udupi district in Kerala. And this is found in this Western Ghats region. ठीक है, तो ये जो नेशनल पार्क है, सोला नेशनल पार्क माटिकेटन, दिस इज इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इन द वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, नाउ दिस माटिकेटन नेशनल पार्क, ये जो सोला नेशनल पार्क है ना, दिस इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? Tributaries of Panniyar river, they basically originates from this hills of, or the hill regions of Mathiketan. ठीक है, ये रिमेंबर रखिएगा, ये एक फैक्ट है. सोलर फॉरेस्ट क्या होता है मैंने बता दिया आपको, वेस्टर्न घाट्स, देन अबव 1200 meters of height, 1500 meters of height, then they will have lot of rainfall, evergreen forest, ये सारी चीज़ें, evergreen type of trees will be found. ठीक है, और बेसिकली ग्रासलैंड्स होते हैं थोड़े से एट अ हाइट. So this is what is the important fact about this place. अब गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, IUCN में दिस इज लीस्ट कंसर्न. ऑलराइट, अबाउट द बर्ड इफ यू टॉक अबाउट, दिस इज एन ओमनीवोरस. ठीक, ओमनीवोरस बर्ड है, ये याद रखिएगा. मेनली फाउंड इन ग्रासलैंड्स ऑफ द हिल्स वेयर द टॉल ग्रासेस आर फाउंड. Very easily found in areas of Asia and Australia. IUCN status मैंने बता दिया है. If you can see over the features, they will have a pinkish beak and dark streaks on the back. You can see these dark streaks on the back. ठीक है, and golden orange plumage. Golden orange plumage can be seen on the head, neck and chest. ये देखिए, यहाँ, यहाँ और यहाँ. This golden orange plumage can be seen. All right. So this is about this golden-headed cisticola. So now the next species we have is melanistic tiger. ठीक है, देखो इसमें जो न्यूज़ आई थी, वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी इन उड़ीसा. ठीक है, एंड रेयर मेलानिस्टिक टाइगर किल्ड इन उड़ीसा सिमलीपाल रिजर्व, जस्ट 20 रिमेन इट्स ओनली हैबिटेट. इसका मतलब क्या है? इट इज दिस टाइगर इज मेनली फाउंड इन उड़ीसा. ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में. तो मेलानिस्टिक टाइगर जो है ना, दीज आर नथिंग बट दे आर द टाइगर वेयर अ जेनेटिक कंडीशन अकर्स. और ये जेनेटिक कंडीशन क्या है कि इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन. ठीक है, ये मेलानिन जो है ना, ये इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है. मेलानिन इज आल्सो फाउंड इन ह्यूमंस आल्सो, जिसकी वजह से स्किन इज लाइटर और फेयर और डार्कर. ये मेलानिन की प्रोडक्शन, लेवल ऑफ मेलानिन की वजह से होता है. ठीक है, सेम हैपेंस विद द ब्लैक टाइगर, दिस मेलानिस्टिक टाइगर एज वेल. नॉर्मल टाइगर्स में जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है मेलानिन का, देन दिस टाइप ऑफ ब्लैक स्किन. ठीक है, दैट्स द रिजल्ट. ऑलराइट, some important facts which you should know, that this melanistic tigers, they are only found in Odisha. तो ये स्टेटमेंट आता है कई बार कि मेलानिस्टिक टाइगर्स आर ओनली फाउंड इन ओडिशा. नॉर्मली हमें ये बताया गया है कि ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में जनरली गलत होते हैं, बट कुछ ये जो ओनली वाले स्टेटमेंट्स हैं, यू शुड रिमेंबर देम, बिकॉज इसमें गलती होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर आप जर्नलिस्टिक ट्रेंड में जाएंगे तो ओनली मे सीम रॉन्ग टू यू एंड देन आपका वो क्वेश्चन गलत हो सकता है. तो येस, दे आर ओनली फाउंड इन ओडिशा. सिमली टाइगर, अपना सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए, ठीक है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, दिस इज फाउंड इन वेयर? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा.
ठीक है, एंड दिस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इट ऑल्सो टचेज योर झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था तो मैंने आई जस्ट गिव इट टू यू। दिस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, दिस इज ऑल्सो एशियाज सेकेंड largest biosphere reserve, which is the first. First is Gulf of Kutch in Gujarat। ठीक है, ये एक important fact है। दूसरा, here more than 60% of the tigers are melanistic। ठीक है, and लोधा ट्राइब, ये भी न्यूज में था, लोधा ट्राइब, this tribe basically lives around this area and they have been also, Loga tribal people were also arrested for illegal hunting। ठीक है, illegal hunting of these tigers, Loda tribe, ये याद रखना। IUCN स्टेटस की अगर बात करें तो दिस इज endangered। ठीक है, इतना इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसमें there is nothing which can be told। Spotted deer, Pench tiger reserve faces habitat strain due to spotted deer overpopulation। रिसेंट न्यूज थी ये, जहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व से कुछ स्पॉटेड डियर्स जो हैं इनको ट्रांसफर किया जा रहा था दूसरे टाइगर रिजर्व्स में, बिकॉज इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत बढ़ गई थी एंड राइज इन पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज में डिसबैलेंस दी योर फूड चेन। सो इस वजह से वो एक इशू आ रहा था, बिकॉज ऑफ विच इट वॉज इन न्यूज। ठीक है, वेयर इज पेंच टाइगर रिजर्व, दिस इज इन मध्य प्रदेश, यू शुड नो दिस। ठीक है, स्पॉटेड डियर दे आर मेनली फाउंड इन ग्रासलैंड्स। ठीक है, ग्रासलैंड आर द मोस्ट फेवरेबल habitat for spotted deers। ठीक है, excess population were shifted। Spotted deer, these are native to Indian subcontinent। This is an important fact which you should know। ठीक है, what is the other name of spotted deer? It is also known as cheetal। This is also a fact which you should know। You can see here in this picture, इस पिक्चर में आप देखिए spotted deer के antelopes नहीं है। ठीक है, तो spotted deer में एंटीलोप जो होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट ओनली विद द मेल्स, ओनली इन मेल्स एंड नॉट इन फीमेल्स। तो अगर ये स्टेटमेंट आता है कि सम जनरली स्पॉटेड डियर या चीतल हैव, द मेल चीतल हैव दिस एंटीलोप्स बट सम ऑफ द फीमेल्स कैन आल्सो बी फाउंड वेयर एंटीलोप्स आर सीन, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, फीमेल्स में नहीं होते, ओनली मेल्स में होते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, दिस सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, तो ऑल दीज कंट्रीज लाइक यू नो योर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका, योर भूटान, देन जितने इस तरह के पाकिस्तान, ठीक है, ये सारे कंट्रीज में मिलता है। राइट, रिसेंटली दे हैव बीन फाउंड इन, इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया and US। they are found there but they are not native, they have been introduced। ठीक है, so this is some, अच्छा हाँ, IUCN स्टेटस ले लीजिए, इतना पॉपुलेशन है तो इट इज लीस्ट कंसर्न्ड एंड साइट्स में इट इज नॉट लिस्टेड, इट इज नॉट लिस्टेड इन द साइट्स। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज आई थिंक सफिशिएंट एज फार एज योर स्पॉटेड डियर इज कंसर्न्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्पीशीज पे चलते हैं। इंडियन बिसन, इंडियन बाइसन भी कहते हैं इसको, इंडियन बिसन भी कहते हैं। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज। ओडिशा फर्स्ट एवर इंडियन बिसन सेंसस कंडक्टेड इन डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? डेफिनेटली उड़ीसा में ही है, देख लीजिएगा। डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कभी पूछा नहीं गया बट कैन बी आस्क्ड। फर्स्ट एवर इंडियन बाइसन का सेंसस हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांधवगढ़ टू रिसीव 50 इंडियन बाइसन फ्रॉम सतपुरा टू बूस्ट पॉपुलेशन वाइल्ड लाइफ काउंटेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जो कि ये अलग अलग न्यूज़ है। तो बांधवगढ़ कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सतपुरा टाइगर रिजर्व अगेन इन मध्य प्रदेश। तो दिस टू वेयर न्यूज़। तो इंडियन बाइसन इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2 बार अलग अलग न्यूज़ में आया। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट, और इसको किस नाम से कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज गयाल, इट इज ऑल्सो नोन एज मिथुन, इट इज ऑल्सो नोन एज गौर। तो ये सारे नाम जो हैं ये किसके हैं? इंडियन बाइसन के हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, नेटिव, अगेन नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सम पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, some part of Southeast Asia में भी they are native to these places. ठीक है, if you talk about the IUCN status, तो IUCN status over here is that it is vulnerable,
ओके, साइड्स में इट इज अपेंडिक्स 1, ठीक है। तो ट्रेड के लिए इट कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, और इसमें क्या बता सकता हूँ आपको, हैबिटेट बता सकता हूँ, इट इज फाउंड इन योर एवरग्रीन फॉरेस्ट प्लस मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ये बता सकते हैं। इसमें इसमें यू नो हिमालयस जो है ना, हिमालयस के फुटहिल्स में बहुत पाए जाते हैं ये, ठीक है, हिमालयस के फुटहिल्स में बहुत पाए जाते हैं, बट दे आर यू नो they cannot be found in Himalayas where the height is above 6,000 meters, sorry 6,000 फुट्स, नॉट मीटर्स, ज़्यादा हो जाएगा, अराउंड 6,000 फुट्स तक ही मिलते हैं ये हिमालयस में, एंड दे रिमेन इन द फुट हिल्स ओनली, ठीक है। अब यू कैन सी हियर, ये जो सर में एक कॉन्वेक्स सॉर्ट ऑफ ये ऐसा डिप्रेशन होता है इनके हेड पे, ठीक है, तो कॉन्वेक्स शेप होता है हेड पे, एंड जो टेल होती है ना, दिस इज वेरी शॉर्ट टेल इज व्हाट इज फाउंड इन इंडिया। सम ऑफ द नेशनल पार्क्स आर देयर वेयर इट इज मेनली फाउंड। एक तो है वायनाड, कहाँ पे है, केरला में, वायनाड नेशनल पार्क। दूसरा इट इज फाउंड इन नागरहोल नेशनल पार्क ऑल्सो, दिस इज इन कर्नाटका, ठीक है। ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा कहाँ नेशनल पार्क्स हैं। देन Mudumalai National Park. This is in Mudumalai is in Tamil Nadu. Then your Bandipur National Park. This is in Karnataka. ठीक है। One more national park is important. That is Krishna Wildlife Sanctuary. ये कहाँ है कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? दिस इज इन त्रिपुरा, ठीक है। कृष्णा से याद रखिएगा त्रिपुरा, ऑलराइट, ट्री। दिस इज इंडियाज ओनली नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर फॉर दिस बाइसन, इसको ठीक है याद रखिएगा, ओनली नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर फॉर बाइसन, ठीक है। ये चीजें हैं थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने की है। बाकी आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग एल्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एज फार एज इंडियन बाइसन इज कंसर्न। लेट्स गो टू द नेक्स्ट, आई थिंक नेक्स्ट गो टू द, इसका स्टेटस बताया क्या, हाँ बता दिया। नेक्स्ट स्पीशीज देखते हैं। दिस इज योर पुट्री सुलेरिया, रेयर कार्बोनस प्लांट पुट्री सुलेरिया स्पॉटेड इन राजस्थान कोयलादेव नेशनल पार्क। कोयलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में ये इन्फॉर्मेशन एक मिली। ब्लैडर अबाउट हाउ ए कार्निवरस प्लांट कुड बी यूज्ड इन मॉस्किटो कंट्रोल, ठीक है। तो ये दो न्यूज़ हैं, तो ये दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, ऑलराइट। अब कोयलादेव नेशनल पार्क भी न्यूज़ में है, तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा जब भी टाइम मिले, जब आप नेशनल पार्क वगैरह करेंगे। दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्लैडर वोट्स, ठीक है। दीज आर दी प्लांट्स, दिस इज व्हाट इट इज अ प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इट इज अ कार्निवोरस प्लांट, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ना, अगर ये स्मॉल सैक्स हैं, हॉलो सैक्स, दी सैक्स, ठीक है। So there are small sacs that capture and they digest the small insects. ठीक है, there are small sacs are there, small hollow sacs are there, ठीक है, that captures plus digest the tiny insects. These plants they lack any root, ये याद रखना, they lack any roots, ठीक है। तो होता कैसे है, वाटर पे रहता है, फ्लोटिंग स्टेम होता है इनका, बेसिकली सॉर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लोटिंग सेल स्टेम, हॉरिजॉन्टल फ्लोटिंग स्टेम विद द लीव्स। तो स्टेम जो है ना, उसी में लीव्स होते हैं, दैट इज हाउ दिस प्लांट इज देयर, एंड रूट्स नहीं होते प्लांट्स के। these flowers you can see they are basically bisexual and bilaterally symmetric, ठीक है। Now, where are they found? Mainly found in fresh waters and wet soils, ठीक है। फ्रेश वाटर होना चाहिए, वेट सॉइल होना चाहिए, एंड वेयर आर दे फाउंड? इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट, वेयर इज इट नॉट फाउंड? अंटार्कटिका, ठीक है। सारे कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका, ठीक। नाउ
carnivorous plant could be used in mosquito control. How? Basically in water, if these plants are planted, तो जिस जहाँ पे भी प्लांट करेंगे ना आप इसको, 80% of the larva of mosquito are consumed, or I would say eaten by these plants in water only. अब mosquito कहाँ पे breed करते हैं? Water में. तो जो लावा है ना, 80% of the larva can be consumed in the water itself. और फिर जब mosquito बन जाता है तो again small insects it can eat. So this is very useful in controlling this mosquito population also. Excuse me, mosquito control में these plants are used. केवल दो नेशनल पार्क के बारे में अगर पूछे तो कहाँ पे है? भरतपुर में. भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में. दिस इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, ये सब पता होना चाहिए. फर्स्ट रामसर साइट एज वेल. ठीक है, विद चिल्का लेक. Alright, these are some of the information which you should know. The basic है यार, इतना पता होना चाहिए. This is what I will at least expect from you. ठीक है, now the next species is fishing cat. ठीक है, the Koringa Wildlife Sanctuary in Andhra Pradesh. अब कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में. याद रखना, पूछ सकते हैं. Is witnessing an increase in the population of the endangered fishing cat. तो fishing cat क्या है? Endangered ये पता चल गया. Fishing cat के बारे में अगर देखा जाए तो आप साइज से देख सकते हैं. It is twice the size of normal fishing cat. ठीक है, twice the size of normal fishing cat, which is found usually in normally fishing cat. Sorry, normal cat यार, जो घर पे पाई जाती है ना, domestic cats. ये तो वाइल्ड लाइफ में पाई जाती है. ठीक है, domestic cats twice. Fishing cat is also state animal of which state? West Bengal. ठीक है, where are they found? Mostly in wetlands areas near the wetlands. Why? फिशिंग कैट है, फिशेस जहाँ मिलेंगी वेटलैंड्स के पास, और इसको थोड़ा सा लैंड भी चाहिए. वाटर एनिमल, एक्वाटिक एनिमल तो है नहीं, बट इट कैन थ्राइव, इट कैन लिव. द हैबिटेट हैज टू बी वेटलैंड्स जहाँ पे फिशेस आर इजीली अवेलेबल. ठीक है, इन वेस्ट बंगाल दे आर मेनली फाउंड इन एरियाज ऑफ सुंदरबंस वेयर मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड. तो सुंदरबंस में मिलती है? हाँ मिलती है. ठीक है, in some parts of foothills of Himalayas also they are found. Foothills of Himalayas, but which foothills? Mainly the foothills of Ganga plus Brahmaputra river along the foothills of Himalayas. ठीक है, और कहाँ मिलती हैं? Yes, they are also found in Western Ghats. तो अगर पूछा जाता है वेस्टर्न घाट्स में मिलती है? हाँ मिलती है. वेस्टर्न घाट्स में भी these are found fishing cats. ठीक है, they are also good swimmers. Yes, they have to be good swimmers or else they won't be able to survive. They have to get into the water to catch the fish. तो गुड स्विमर्स हैं. अगर अगेन ये अडेप्टेबिलिटी है. ठीक है, एक और अडेप्टेबिलिटी ये है कि दे हैव वेरी डेंस हेयर, बॉडी हेयर और फर. व्हाई इज इट सो? बिकॉज एवरी टाइम दिस फिश हैज टू गेट इनटू द वाटर टू ग्रैब अ फिश. नाउ एवरी टाइम इफ इट इज एंटरिंग इन द वाटर, सो मोस्ट ऑफ द टाइम द स्किन विल बी इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड दैट कैन हार्म द स्किन कोट ऑफ दिस फिशिंग कैट. सो दैट इज व्हाई अ थिक कोट ऑफ फर इज प्रेजेंट. नेचुरल अडेप्टेबिलिटी है वो, जिससे कि कंटिन्यूस वाटर में उतरने की वजह से उसकी स्किन के साथ वाटर कॉन्टैक्ट में ना आए. ठीक है, तो फर इसलिए ठीक रहता है उसका. IUCN स्टेटस वल्नरेबल साइट्स अपेंडिक्स 2 है, नॉट 1. एंड WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1. ठीक है, अगेन दिस डेंस हेयर ऑल्सो हेल्प्स इट टू बी वार्म इन कोल्ड वाटर्स. ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? दिस इज वेरी इजीली फाउंड इन साउथ सदर्न एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ठीक है, लाइक थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, देन इन योर जावा एरिया. ठीक है, यहाँ पे ये सब जगह पे मिलती है ये फिशिंग कैट. कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा. ठीक है, दिस कोरिंगा इज बेसिकली काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में. ऑलराइट, काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. देखो ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, इसका PDF जो है पुट इट ऑन द टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल का जो एड्रेस है दैट विल बी गिवन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो.
प्लस आपका इसमें भी है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा। तो इफ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। दैट इज द रीजन आई एम राइटिंग इट, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ लिख दे रहा हूँ, जिसमें कि रिविजन करने में आपको आसानी हो। ठीक है, बाकी क्या और बताना है बस। अच्छा हाँ, ये कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, इसमें ये भी मिलता है, ऑलिव रिडली टर्टल्स एंड वन मोर स्पीशीज दैट इज स्मूथ कोटेड ऑटर। ठीक है, दीज टू स्पीशीज आर आल्सो फाउंड ओवर हियर। कुरिंगा रिवर है विच बिकॉज विच मीट्स इन दी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है कोरिंगा रिवर, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन है विच इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन, अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज सच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्पीशीज में चलते हैं। Just let me set the tab right. Yeah. So next species we have is pangolin. Pangolin is again very important species. हो सकता है पूछ लिया जाए because न्यूज़ में कई काफ़ी बार रहा है. This pangolin species is a very old species, you know. This species is somewhat around 3.4 million years old. ठीक है, इसका स्टेटस अगर देखा जाए तो दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 ऑफ साइट्स एंड अपेंडिक्स 1। ठीक है, इंडियन पैंगोलिन जो है ना, ये जो पैंगोलिन है अबाउट इंडो बर्मीज पैंगोलिन जो है ना, इंडो बर्मीज पैंगोलिन है, दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कंफ्यूज मत होना, इंडियन पैंगोलिन भी है, इंडियन पैंगोलिन दिस इज एंडेंजर्ड। पैंगोलिन बेसिकली इसके स्केल्स देख रहे हैं आप, ये जो स्केल्स है ना पैंगोलिन के, ये स्केल्स में केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है which is also found in hairs of humans. तो this keratin protein is used a lot in this industry where cosmetic industry में बहुत यूज होता है, और शैम्पूज में एंड केराटिन ट्रीटमेंट होता है उसमें, वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट्स जहाँ पे केराटिन यूज होता है। तो बेसिकली केराटिन प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है पैंगोलिन के स्केल से। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस दिस इज मेनली पोस्ट, और दिस हंटिंग बहुत होती है इसकी। ठीक है, मेनली प्रेजेंट इंडियन पैंगोलिन जो है दिस इज मेनली फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, असम, सम पार्ट्स ऑफ नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। ठीक है, जितनी भी स्पीशीज है ना पैंगोलिन के, दे आर मेनली कंसंट्रेटेड ओनली टू अफ्रीका एंड एशिया। ऑल द पैंगोलिन स्पीशीज विच आर फाउंड, दे आर फाउंड ओनली इन अफ्रीका एंड एशिया। तो अगर ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिकन पैंगोलिन वगैरह के बारे में बात की जाती है, या पैंगोलिन इन यूरोप, तो गलत है, नहीं मिलते वहाँ पे। अफ्रीका एंड एशिया में ही पैंगोलिन सिर्फ मिलते हैं। ठीक है, एंड वाई आर दे हंटेड फॉर देयर केराटिन प्रोटीन। ठीक, इंडिया अर्लियर इट वाज इंडिया में है ना, दो टाइप के पैंगोलिन्स मिलते थे पहले, एक तो है इंडियन पैंगोलिन, दूसरा है चाइनीज पैंगोलिन। ठीक है, तो ये इंडियन पैंगोलिन याद रखना, आईयूसीएन इसका क्या था, इंडेंजर्ड, एंड चाइनीज पैंगोलिन जो है ना, इसका भी आईयूसीएन इज दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा बस। बाकी तो इसमें और ऐसा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट जो कि बताना चाहिए आपको और मिस होगा। बाकी आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट। Now let's look over to this species which is Papaya malabarica. ठीक है, Papaya malabarica, 3 million Papaya malabarica seeds released into Astamudi. All right, ये न्यूज़ थी, Astamudi लेक में it has been released. Now Astamudi लेक कहाँ है? Astamudi lake, this is in Kerala. This lake is fed by which river? The river name is Kallada river. ठीक है, and this river, this connects to Arabian Sea via नींदकारा estuary. ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था regarding Astamudi lake, तो that's the reason I gave you. अच्छा, this Astamudi lake is also Ramsar wetland. ठीक है, my handwriting, रामसर wetland, राइट। अब ये जो है ना आपका पेफिया malabarica, दिस इज ऑल्सो नोन्ड एज शॉर्ट नेक क्लैम। ठीक है, ऑलराइट, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज बिवॉल्वे मोलस्क। फॉर एग्जाम्पल ऑयस्टर्स होते हैं ना, दे आर ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टू पार्ट्स ऑफ दिस शेल, ये शेल है ना, अब ये टू पार्ट्स में ऐसे ये शेल खुल जाता है, व्हेन यू ओपन इट टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द शेल
and inside you will find this soft bodied jelly like, a bit of jelly like invertebrate. ठीक है, this invertebrate is basically makes the shell which is made of calcium carbonate. ठीक है, ये जो shell है ना, this clam shells, these are also used in making ornaments and many other things. So they have a lot of this what you call economic importance. ठीक है, बेसिकली होता क्या है ना कि these, ये जो फैफिया malabarika है ना, they neutralize the acidic forms. ठीक है, and one more very important thing which you should know, that this species, this is the India's first marine stewardship council certified fisheries. ठीक है, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा information I don't have to give. Okay, now come to the next species, marble duck. Marble duck returns to Delhi NCR after 30 years. Rare duck species spotted at Sultanpur National Park. The marble duck made a surprise appearance, highlighting the park's importance. ठीक है, तो ये 1990s में लास्ट दिखा था सुल्तानपुर नेशनल पार्क में. ऑलराइट, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज समवॉट नियर बाय दिल्ली है ये. ठीक, नाउ दिस मार्बल डक, दे आर बेसिकली नेटिव टू यूरोप कंट्री को बेसिकली नेटिव है ये. ठीक है, दे प्रेफर ब्रैकिश वेटलैंड्स. ब्रैकिश वाटर जो होता है उससे जो वेटलैंड बनते हैं वो बेसिकली प्रेफर करते हैं दिस मार्बल डक ओवर फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर्स. बट ऐसा नहीं है कि सलाइन वाटर्स एंड फ्रेश वाटर्स में नहीं मिलते, वहाँ पे भी पाए जाते हैं, बट दे प्रेफर दिस ब्रैकिश वेटलैंड्स. ठीक है, एंड मेनली फाउंड इन दोज वेटलैंड्स विच आर नॉट परमानेंट, सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी हैं अगर, या सेमी परमानेंट है ना अगर, तो वहाँ पे मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है सेमी परमानेंट वेटलैंड्स में. ठीक, if you talk about the natural breeding sites, so they basically breeds in the eastern and western Mediterranean and Iran region. So Iran region में भी they breed. IUCN status, if you talk about the IUCN status, the IUCN status is near threatened. ठीक है, दिस इज द IUCN स्टेटस. अब देखो ये न्यूज़ में था, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन से जो मैंने आपको दी है इससे कोई क्वेश्चन बन ही जाए यूपीएससी में, बट नॉर्मली वी ट्राई टू कवर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको मिल सकती है किसी स्पीशीज के बारे में तो यू शुड हैव इट, अगर न्यूज़ में स्पीशीज है बस. दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टेलिंग ऑल दीज थिंग्स. सीक्रेट ग्रुप्स इन इंडिया. सीक्रेट ग्रुप्स इन इंडिया आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्रिजर्विंग इंडिया सीक्रेट ग्रुप्स कैन हेल्प कंट्री अचीव इट्स कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट गोल्स. एक्सपर्ट्स बेसिकली क्या है कि सीक्रेट ग्रुप्स आर कंजर्व हो गए, सीक्रेट ग्रुप्स कंजर्वेशन अगर होगा तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन होगा. फॉरेस्ट कंजर्वेशन होगा तो इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट है ना जो नेट जीरो बाई 2070, दिस कैन बी अचीव्ड. इफ द फॉरेस्ट आर कंजर्व्ड देन ओनली यू कैन अचीव दिस नेट जीरो बाई 2070. तो बेसिकली वो था मतलब इसमें. ठीक है, सीक्रेट ग्रुप्स क्या है ना, देखिए दीज आर बेसिकली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड कंजर्वेशन. प्लेस ऑफ वर्शिप और कंजर्वेशन, बट कहाँ, वेयर देयर इज होम टू डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल लाइफ. और इतनी हैवी डाइवर्सिटी होने की वजह से ना वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स होते हैं उनको ये लगता है कि यहाँ पे देयर इज अ गॉडली प्रेजेंस ओवर देयर बिकॉज ऑफ विच दिस एरिया इज हैविंग लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, आयुर्वेदिक प्लांट्स मिलते हैं, बहुत सारे स्पीशीज मिलते हैं जो नहीं आपको नॉर्मली पाए जाते हैं. तो वो एरिया जो है ना सीक्रेट ग्रुप्स जिसको कहते हैं, वो एरिया में ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है. तो इट इज़ फेल्ड दैट इफ समथिंग यूनिक इज प्रेजेंट, इफ समथिंग यूनिक इज देयर तो डेफिनेटली देयर इज सम गॉडली प्रेजेंस. ठीक है, इस वजह से वो ट्राइबल एरियाज में बहुत ज़्यादा उस एरिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा रिलीजियस
क्या बोला जाए उसको, रिलीजियस अफेयर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस तरह के ग्रुप्स को। और अवतार मूवी में भी आपने देखा होगा, जो जंगल में एक पर्टिकुलर ट्री होता है जिसके नीचे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसको बर्बाद करने के लिए, उसको टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स एंड ऑल। तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ एरिया दे हैव ह्यूज डाइवर्सिटी, दैट इज वाई दे आर सेक्रेड। ठीक है, अब सेक्रेड हो जाता है इसलिए दे हैव द प्रोटेक्शन, लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्शन होता है वहाँ पे, huge local community protection is given, which also has legal backing. Wildlife Protection Act of 2002, ठीक है, Wildlife Protection Act जो 2002 का था, that gives legal backing to the legal protection to the sacred groves in India. अब there are many sacred groves, ठीक है। Now this sacred groves एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि normally all the religion, whether it is Hinduism, whether it is Sikhism, whether it is Jainism, ठीक है, whether it is Buddhism, all these religions they have sacred groves. Even Islam का भी sacred groves है in Maharashtra. I'm forgetting the name of the place, but in Maharashtra also there is one sacred groves which is related to Islam. Sacred groves in different states are named differently. Question can be asked, match the following name of the sacred groves found in different states. तो वो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं उसको थोड़ा सा लिख देता हूँ so that you have the information with you. देखो, Sarnas, this is called in Jharkhand. I may miss one or two. अगर मिस करता हूँ तो प्लीज टेल मी, आई विल अपडेट इट बाद में. देन वी हैव देव गुडीज. देव गुडीज आर इन छत्तीसगढ़. सारे सेक्रेट ग्रुप्स के नेम है, ठीक है. देन वी हैव योर ओरांस. चलो पहले मैं लिख देता हूँ, याद नहीं तो आएगा नहीं. ओरांस हैं, फिर देवराइज हैं, देन वी हैव कोविल काडू, ओके. देन वी हैव हरियाली. देन वी हैव डिओडर ग्रूव्स ऑल्सो, ठीक है. ओरांस, ओरांस कहाँ पे हैं? ओरांस मिलते हैं आपके राजस्थान में. ओरांस राजस्थान में कहा जाता है. देन देवदारीज आर इन महाराष्ट्र. कोविल काडू इज इन तमिलनाडु, ठीक है. हरियाली इज कॉल्ड इन उत्तराखंड. एंड डिओडर ग्रूव्स आर फाउंड इन हिमाचल, ठीक है. हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ट्रीज. हंटिंग एंड cutting trees is not allowed in these sacred groves. जहाँ पे होते हैं वहाँ पे hunting trees and hunting animals and cutting trees is not allowed. Sacred groves, since being so rich in diversity, they have high biodiversity, ठीक है. high biodiversity होगा. they act as carbon sink. carbon sink क्या होता है पता होगा आपको, प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, मैं नहीं बता रहा अभी. plus lot of diversity, जैसा मैंने बोला, medicinal and ayurvedic medicinal plants are found. देन ट्रीज होते हैं तो बहुत सारे फ्रूट्स होंगे. हनी कल्टिवेशन इज वेरी पॉपुलर इन दीज एरियाज. देन सिंस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर देयर एंड देयर इज नो डिफॉरेस्टेशन, सो दे बेसिकली प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन. ऑल्सो एक्ट्स एज एक्विफायर्स बिकॉज दे रिप्लेनिश द वाटर टेबल, ठीक है. वेरी ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी. And they also become biodiversity hotspot. ठीक है. Yes, this is something which is important due to sacred groups. ये नाम जो है ना, ये थोड़ा important हो जाता है. ये अगर आ सकता है तो ये नाम आ सकते हैं, different names of sacred groups. इससे ज़्यादा there is nothing which can be asked as far as I think. Okay. Now this is a species in front of us. This is known as minke whales. Hearing test shows that minke whales can hear high frequency sounds. ठीक है. So high frequency sounds they can hear. This was the news. तो minke whales news में हो जाते हैं. Where are these minke whales found? पहले तो ये देख लेते हैं. They are mainly found in tropical, temperate and polar regions also. ठीक है, तो mainly tropical, temperate and polar regions सभी जगह मिलते हैं these whales. Two types are there. एक तो है common minke whales, ठीक है, और दूसरा है Antarctic minke whales. These common minke whales जो होते हैं ना, these are dwarf. ये सब स्पीशीज हैं of minke whales. These are dwarf minke whales, ठीक है. And these dwarf minke whales of which is subspecies of common minke whales, this is mainly found in southern hemisphere. ठीक है. Antarctic minke whales जो हैं, these are IUCN status अगर देखोगे तो least concerned है. And as the name suggests, they are found in Antarctic region. Sites में appendix.
one. All right. Very important fact which you should remember, that whichever minke whales are there, they are mostly found in coastal regions. तो डीप वाटर्स में नहीं मिलते, कोस्टल रीजन्स में मिलते हैं. दिस इज समथिंग विच यू शुड फाइंड. ओके. अब नाउ दिस मिनके वेल्स दे नेविगेट यूजिंग दिस देयर नेविगेशन जो होता है ना उनका, दे प्रोड्यूस देयर ओन फ्रीक्वेंसी थ्रू विच दे नेविगेट. बट स्टडी हैज फाउंड दैट जो शिप्स होते हैं, शिप्स में सोनार होता है, हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो दे गेट इन कॉन्फ्लिक्ट with this Minkey wave frequency, so they can have this issue of communication and navigation. So they communicate and navigate. तो ये जो ocean noises होते हैं ना, ocean noises, sonar, high frequency machineries which are used, so they can interact with this Minkey waves, and they can have problem of communication and navigation. And if navigation problem हो जाएगी तो फिर they can lose their habitat. If they lose their habitat, then they can be segregated from the groups where they are staying, and that can cause a issue to them to return to their natural habitat wherever the coastal areas where they are found. तो ये एक इशू है जो न्यूज़ में था. मिनके वेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको दे दिया. ठीक है, चलिए. Alright, so let's now look over to the next species. The next species is African penguins. You can see here in the news that the news is that artificial nets boost breeding success by 16.5% in endangered African penguins. ठीक है, तो the breedings have improved by 16.5% using the artificial net. तो artificial nest बना के उसकी captive breedings and all कर रहा है. तो this is the news because of which the African penguins is important. Now African penguins, they are the only species, these are only found in Africa only. ठीक है, कहीं और नहीं मिलती हैं ये, इसको याद रखिएगा. If you can see on this image, you can see that there is a black stripes. These black stripes can be seen. Okay, black stripes are on the bodies and over the chest also you can see. So this is the unique unique thing about this African penguins. All right, so first these black stripes and a pattern of these unique black spots. अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये unique black spots you can see over here. These all spots. Okay, so these are unique to African penguins only. All right, and then over the eyes there is a pink gland. So black spot is on its chest. Okay, and then there is a pink glands above its eyes. Why is this pink glands present? What is the use of these glands? These glands are used to maintain the body temperature of these penguins. ठीक है, then they are mainly found along the shores. So along the 40 kilometers offshore these penguins are found. Okay, along the where southern Africa. ये सब याद रखिए थोड़ा सा. अब what diet do they have? Definitely they are living near the coast area, so they will be carnivores. Fishes वगैरह they will have to eat. All right, so South Africa in two locations, basically Namibia and South Africa. ये दो locations में in the Africa they are found, and they are found only in these locations, Namibia and South Africa. ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा. Now aquatic, because since they live near the shores, so they need to at times swim the water also. So they have what we call as webbed feet. Okay, and they are very good swimmers also. They can adaptation. Your fishing cat was also a very good swimmer because it also had to get into the water to catch the fish, for its prey. And then the same thing is with the African penguins also. They are good swimmers and they are monogamous animals. These are monogamous animals. That means that they have only single partner throughout their life. All right, so this is something which humans should learn from these African penguins. If we talk about the IUCN status, it is critically endangered. Penguins, they lay eggs
ठीक है, they lay eggs and rabbit feet and all. That's what I've told. Okay, so I think that I've told you the important things जो भी है with African penguins. ठीक है. Next species is new fire resilient plant species discovered in India's Western Ghats. Okay, so this is a new species which has been discovered, and the name you can see on the screen, it is Lyclepetrera polymorpha. Okay, Lyclepetrera polymorpha. This is the name of the species, and it has been found in the Western Ghats. What is the peculiarity about this? That these are fire resilient, मतलब आग नहीं पकड़ती है इसमें जल्दी. All right, so these are fire resistant. Since they are fire resistant, so heat resistant भी होंगे, so they can survive huge summers and droughts as well. ठीक है. Where are they found in Western Ghats? Basically on open grasslands. I'm so sorry, just a second. Okay, so they are, as what I had written is that they are fire resistant and can survive summer droughts. All right. Where do they live in? Thrives in open grasslands, slopes of the Western Ghats. Okay. All right. So these Western Ghats, they are also, UNESCO World Heritage Sites, as you know. Nilgiri Biosphere Reserve and Agastawala Biosphere Reserve is also found in this Western Ghats. ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा. So fire tolerant जो plants होते हैं, what are they called? They are called as pyrophytic. ठीक है, the plants which have adapted to fire, or which has adopted sort of tolerance to fire, so they are called as pyrophytic habitat. All right. Dual blooming patterns, as you can see over here, it is written dual blooming plant patterns means it blooms twice a year. ठीक है, तो 2 times it will bloom. All right. ठीक है. Next species we'll see long-billed vulture. This is an important species. Long-billed vulture nesting sources rate at Madumalai Tiger Reserve and Buxa Tiger Reserve achieves milestone in vulture conservation. ठीक है. I can't stop myself from giving some information. So let's see some important information. I'll just jot it down about this Madumalai Tiger Reserve. Where is it found? It is found in Nilgiri district. Okay, Nilgiri district at the tri-junction of Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Okay, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Must remember all these things. Madumalai Tiger Reserve, it also shares boundary with one is it in Kerala, that is Wayanad Wildlife Sanctuary. It is in Kerala. Okay, and another is Bandipur. It is in Karnataka. ठीक है, तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया बस कि क्या है इंपॉर्टेंट. बक्सा टाइगर रिजर्व, वेयर इज इट? इट इज इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, बक्सा इज इन वेस्ट बंगाल. कहाँ पे? जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. Now the eastern border of this tiger reserve, it touches Assam, state of Assam. ठीक है, it also has international boundary with Bhutan. All right, and Buxa Tiger Reserve, na, 2 rivers are important. One is Raidak River, other is River Jayanti. ठीक है, ये बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आप नोट कर लीजिए. अब लॉन्ग बिल्ड वल्चर थोड़ा देख लेते हैं. व्हाट इज लॉन्ग बिल्ड वल्चर ऑल अबाउट? तो पहले very important to remember is that IUCN status is critically endangered. ठीक है, critically endangered है. It is native species to 3 countries: India, Nepal and your Pakistan. ठीक है, ये याद रखिएगा. It is native to these 3 nations.
You can see the beak, they have a bit longer beak, okay, and these long-billed vultures, they are also known as Indian vulture. Remember, these vultures are not migratory birds. ठीक है, ये एक चीज रिमेंबर करिएगा, याद रखिएगा, they are not migratory birds. मुझे पीडीएफ ऑटो सेव होता है ना, तो थोड़ा सा बीच में हैंग होता है, ठीक है. They are not migratory birds, ठीक है. What type of habitat do they prefer? They prefer open grasslands, ठीक है. They prefer open grasslands and not forested areas, okay. They don't prefer forest areas, rather they prefer the open grasslands. तो ये दे सकता है कि identify the species and it is native to India, Nepal, Pakistan. They are not migratory birds, prefers open grasslands. इस तरह से आपको दे सकता है, आपको species पहचानना होगा, ठीक है. You can see that the head of this bird, it is basically, you know, bald. That means no hairs on the heads. Why? To keep the head cool. All right, to keep its head cool, there are no hairs on the head. You know, डाइक्लोफेनाक ड्रग जो है, डाइक्लोफेनाक ड्रग हमने बहुत पढ़ा भी है, पहले भी सुना है. तो डाइक्लोफेनाक ड्रग इज बेसिकली यूज्ड टू गिव, इट इज गिवन टू कैटल्स, एंड देन कैटल्स व्हेन दे डाई, दीज वल्चर्स, इसको लिख देता हूं, डाइक्लोफेनाक ड्रग्स they were given to cattles, and when these vultures, they used to feed on the dead cattles, remains of the dead cattles, तब क्या होता था कि ये vulture के food system, vulture के अंदर भी this diclofenac drugs used to go, which used to create issues with the kidney failures. तो जो vulture की kidneys है ना, ये fail कर जाती थी, and due to the kidney failures they used to die, क्योंकि vultures में kidney transplant तो होता नहीं, ठीक है. तो they used to die. Now this is something which I wanted to share about this long-billed vulture. जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लग रही थी इस वल्चर के बारे में, मोर और लेस आई हैव शेयर्ड देम ऑल, ठीक है. लेट्स मूव अहेड. ओके, ज़ॉम्बी फंगस, द वियर्ड फंगस दैट कैन टेक ओवर इंसेक्ट्स ब्रेन, ठीक है. ज़ॉम्बी फंगस, इट वाज इन न्यूज़. अब हो क्या रहा था ना कि दिस इज अ टाइप ऑफ पैरासिटिक फंगस, तो व्हेन इट यूज्ड टू अटैक द एंट्स एंड इट आल्सो यूज्ड टू अटैक द स्पाइडर्स, ठीक है. रिसेंटली देखा गया था कि स्पाइडर्स को भी अटैक किया है. मैं लिख देता हूँ, species of parasitic fungus, ठीक है, infects ants and spiders, no effect on humans as known, ठीक है. So what used to happen is that these fungus, they used to attack the ants, and their sensory and motor system used to be disrupted, right? And because of what used to happen, that they used to lose their control, body control, and then finally they used to die, ठीक है. तो क्या करता था ये फंगस कि it used to drain the host of nutrients, ठीक है. फंगस हुआ, जो होस्ट है, स्पाइडर है या एंट है, उस वहां पे न्यूट्रिएंट्स को ड्रेन कर दिया, मतलब नो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल, तो फाइटिंग मैकेनिज्म लॉस्ट. फिर क्या होता था, fills the host with spores, ठीक है. अब क्या हुआ, spores हुआ, and then the fungus used to reproduce on the host itself. Mind and body control, body functions control were lost and ceased, ठीक है. उसके बाद क्या होता था कि because of this the host used to die, all right. and एक बार सोच के बताइए जरा, this zombie fungus would be found in which areas? Tropical forest ecosystem. जितने भी इस तरह के weird वायरसेस हैं, फंगस हैं, दे मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है. टेम्परेट वगैरह में आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादा, ठीक है. तो दिस इज द ज़ॉम्बी फंगस. चलिए नेक्स्ट.
Sudhan Sushekhari, scientists discover new plant species in Arunachal Pradesh. Botanical Survey of India have discovered a new plant species from wildlife sanctuary in Arunachal Pradesh, the official said. And this is Sudhan Sushekhari. ठीक है, Sudhan Sushekhari, it is found in Arunachal Pradesh. कहाँ? Itanagar Wildlife Sanctuary. Okay, and they are mainly found in your eastern and northeastern Himalayas. This is the only information I could get. If you want to have more information, please see over net, and मुझे और कुछ ऐसे ज़्यादा मिला नहीं. नेक्स्ट स्पीशीज पे आते हैं डायरेक्टली. दिस इज Coilus hema. Scientists discovered new species of dogfish shark of Kerala coast. Various varieties of dogfish, which is small shark, are in demand for their fins, liver oil, and meat, and sporadically caught by as bycatch. ठीक है, तो Coilus hema क्या है? This is a variety of dogfish, which is a small shark. ठीक है, and why are they in demand? For their liver oil, pharmaceutical industries में, for their fins and meat. ठीक है, तो कहाँ पे मिली है ये केरला कोस्ट में? This is found in Sattikurangara fishing harbor in Kerala. ठीक है, they are known as spur dogs. They have smooth dorsal fin spines. ये देख रहे हैं? This तो dorsal fin spines क्या है? Fins which are the fin or the backmost of the marine and freshwater vertebrates. This is found over here. Guide the direction of the movement. Again, this is a deep water dogfish shark. ठीक है, liver oil is in huge demand in pharma industries. Teeth, the shark, ये मान लीजिए शार्क का मुंह है, तो both the teeth are similar. Both the teeth are similar basically. थोड़ा सा अगर केयरफुली देखेंगे तो अपर टीथ जो है ना, the upper teeth, it is slightly larger. ठीक है, upper teeth is slightly, sorry, upper teeth जो है ना वो slightly smaller है than the lower teeth. ठीक है, तो upper teeth इस तरह के हैं और लोअर टीथ थोड़ा बड़े हैं उससे, बट टीथ्स आर बेसिकली द सेम, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे. ऑलराइट, two more species of this Coilus hema is found, which is known as Squalus mid sucri and Squalus lalini. This Squalus lalini जो है ना, this is very similar to Squalus hema. ठीक है, alright. Let's look at the next species now. Mainland Sero. अब इसको देखिए आप. Mainland Sero, how is it looking like? Isn't it looking like mixture of goat and antelope? You know, this Sero, this looks like a mixture of goat and antelope. Where is it found? Found mainly in the altitudes above 200 meters, but till 3000 meters. 200 से 3000 meters के बीच में ही these are found. Okay, mainly around India and Bhutan border. ठीक है, mainly between India and Bhutan border. भूटान में दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क है. एक तो है फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे ये मिलता है, और दूसरा है रॉयल मानस नेशनल पार्क. ठीक है, ये दो जगह पे भूटान में ये मिलता है. इट इज ऑल्सो ऑफिशियल एनिमल ऑफ मिजोरम. ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑफिशियल एनिमल है मिजोरम का. नाउ मेनलैंड सिरो जो है ना, इसके और भी टोटल सिरो के 4 स्पीशीज हैं. एक है जापानीज सिरो,
दूसरा है रेड सिरो, तीसरा है थार और हिमालयन सिरो, एंड फोर्थ है ताइवान सिरो। ठीक है, दिस रेड सिरो जो है ना, दिस इज फाउंड मेनली इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया कहाँ पे? बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, बांग्लादेश एंड म्यांमार में बेसिकली फाइंड, यू विल फाइंड इट। IUCN स्टेटस अगर देखें तो व्हाट इज इट? वल्नरेबल साइट्स अपेंडिक्स 1, WPA of 1972, Schedule 1। ऑलराइट, रायमोना नेशनल पार्क पता है कहाँ पे? वेयर इज रायमोना नेशनल पार्क? रायमोना नेशनल पार्क इज फाउंड इन विच स्टेट? आसाम। एक एंडेमिक स्पीशीज है जो यहाँ पे बहुत फेमसली मिलती है, विच इज गोल्डन लंगूर। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे याद आ गया तो मैंने बता दिया। ऑलराइट, so this is all about mainland सिरो। चलो नेक्स्ट स्पीशीज चिरपाइन। चिरपाइन व्हेन यू गो टू उत्तराखंड ना, तो आपको ये चिरपाइन बहुत मिलेंगे ना। चिरपाइन बेसिकली जो इनके लीव्स है ना, यू कैन सी दीज आर वेरी पॉइंटेड सॉर्ट ऑफ लीव्स, दीज आर वेरी पॉइंटेड लीव्स। तो ये जो पॉइंटेड लीव्स है ना, दीज आर वेरी इन्फ्लेमेबल। ठीक है, दीज पॉइंटेड लीव्स आर इन्फ्लेमेबल। तो इसमें क्या है ना कि द लीव्स कैचेस फायर। लीव्स भी नहीं, बेसिकली लीव्स जो है ना, दीज आर एकदम निडल लाइक। ठीक है, निडल लाइक होते हैं, तो ये बहुत जल्दी फायर पकड़ लेते हैं। वेयर एज द बार्क ऑफ दिस ट्री, बार्क डज नॉट कैच फायर इजीली। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स जो उत्तराखंड वगैरह में होते हैं ना, दे आर बिकॉज ऑफ दिस पाइन ट्रीज। चिरपाइन जो है, और इसके जो लीव्स होते हैं ना, बहुत पॉइंटेड टाइप लीव्स होते हैं, तो उसमें निडल लाइक लीव्स में आग पकड़ लेती है जल्दी, एंड बिकॉज ऑफ विच द होल ट्री स्टार्ट्स बर्निंग, बट द बार्क डज नॉट catch fire that easily. These trees, they cover around 16% of total forest in Uttarakhand. ठीक है, it is a large evergreen tree, मतलब it is always filled with green, unlike deciduous tree where the leaves are shed in the dry season or winter season. These trees are again drought prone, मतलब too much of water is not required for these trees to survive. ठीक है, if you talk about the region, the temperate forest, the mountain temperate region में पाए जाते हैं। हाइट अगर आप बोलेंगे इसकी, तो दिस रेंजेस बिटवीन 500 to 2200 मीटर्स। ठीक है, उसके ऊपर नहीं, 2200 मीटर्स के ऊपर नहीं मिलेंगे, 2200 मीटर्स या 2500 मीटर्स तक ही मिलेगा। वेयर आर दे फाउंड? एबरेंटली फाउंड इन तिब्बत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान रीजन, ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, above the height of 500 till 2200 meters. Then these plants are very, they have two basic uses. अगर आप देखेंगे तो इसमें there is an oil which is very much used in pharmaceutical and chemicals. So that oil is named as turpentine oil. ठीक है, और एक मटेरियल केमिकल होता है, दिस इज कॉल्ड रोजेंस। दिस इज यूज्ड इन, सही हो रहा है यार पीडीएफ, दिस इज यूज्ड इन पेंट्स, पेपर सोप, पेपर सोप एक्सेट्रा। ठीक है, दीज टू मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली व्हाट वी, हम जो देखते हैं नॉर्मली कि जो पेड़ होते हैं दे हेल्प टू बाइंड द सॉइल एंड सॉइल इरोजन कम होता है, बट दीज ट्रीज सिंस दे हैव शैलो रूट्स, ठीक है, these trees have shallow roots, so they contribute in soil erosion, because जो soil होता है ना, shallow roots होते हैं, soil को लूज कर देता है। ठीक है, it also kills, this tree also kills the useful bacteria in the soil which
further degrades the soil quality. ठीक है, so these plants, these trees, here pines, they are not very friendly with the soil. ये आप कह सकते हैं, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं. ठीक है, land degradation होता है, so it degrades the land. चलिए, so now just a second, I'll just have some water. All right. Let's move ahead with the new species. The new species is greater adjutant stork. Okay, this is the species. Long beaks. See what is hanging over there. Until Army Assam's rural women save the greater adjutant stork from extinction. क्या नाम है उस woman का? Purnima Burman is the name of that woman who works a lot for saving this greater adjutant stork. ठीक है, Purnima Burman of Assam. All right. Important information एक और है कि बिहार in just a second, this tab is so Bihar in 2021 or 2021 tagged these greater adjutant stork with the GPS to monitor its movement. ठीक है, these are also known as गरुड़ जिसको कहते हैं in Hindu mythology. So it is mount of Lord Vishnu. ठीक है, long neck, you can see in the picture, long neck, large bill means this. Okay, and a prominent glabrous pouch, this pouch. Okay, this is a prominent pouch which is also known as this gular pouch भी कहते हैं इसको. ठीक है, and these species, these storks, they are carnivorous. ये आपको याद रखना है कि they are carnivorous. Again, ये जो टैग हुआ था उससे ये पता चला कि these are not a migratory birds. ठीक है, they don't travel long distances. That is what is migratory birds are. ठीक है, mainly they are found in two countries, that is Cambodia and India. इंडिया में कहाँ पे? बिहार में मिलती है and नॉर्थ ईस्ट इंडिया, mainly in Assam region and nearby regions to Assam. ठीक है, you will find these birds that they mainly are prominently inhabited near the wetlands and they will be nesting in tall trees. ऐसा नहीं होगा कि जमीन में बैठे होंगे, ये याद रखना कि they nest in tall trees. ठीक है, लंबे लंबे पेड़ होते हैं उस पर बैठे रहेंगे ये. And these trees, tall trees, they will be having normally the closed canopies, but not taller than 100 meters or so. Bamboo clumps होता है ना, उसमें भी बैठते हैं bamboo clumps, but these clumps they don't go above this height, 100 meters से ऊपर नहीं. ठीक है, now IUCN status देख लीजिए, endangered है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में शेड्यूल 4 है ये, शेड्यूल 4. ऑलराइट, ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ. जेडॉन्स कोर्सर, critically endangered Jedon's cursor not spotted in a decade. It is critically endangered species actually endemic to Andhra Pradesh, specifically within the Sri Lanka Maleshwar Wildlife Sanctuary. ठीक है, कहाँ है ये sanctuary, wildlife sanctuary? in Andhra Pradesh. ये याद रखना. These birds, they are basically the nocturnal birds. ठीक है, nocturnal birds means they are active during night. ठीक है, they are endemic to Eastern Ghats only. ठीक है, mainly found in Andhra plus Telangana region. ठीक है, this major population can be found in this Lanka Maleshwar Wildlife Sanctuary in Andhra Pradesh, and again these are not a migratory bird. Okay, you can see here they have large eyes and small beak. Features याद रखिएगा, features से कभी कभी ना क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, they have large eyes and small beaks or short bill, you can call it bill also,
they will basically inhabit what type of regions? Open, dry, thorny scrublands. ठीक है, तो they will inhabit in open, dry, thorny scrublands. ठीक है, what is the IUCN status लिखा ही हुआ है वहाँ पे, that is critically endangered. ठीक है, पिक्चर में भी देखिए आप, ड्राई स्क्रबलैंड्स में मिल रही है आपको, कोई एवरग्रीन ग्रासलैंड्स वगैरह नहीं है यहाँ पे, ड्राई स्क्रबलैंड्स है, ओपन ड्राई थॉर्नी स्क्रबलैंड्स है, तो ये फीचर्स थोड़ा सा याद रखिएगा. इंडियन वल्चर, लॉन्ग बिट वल्चर, नेस्टिंग सक्सेस रेट हाई, मधुमलाई टाइगर रिजर्व. इंडियन वल्चर के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, इट इज सेम यहाँ पे अभी किया है ना डिस्कस. कहाँ गया वल्चर? ये लॉन्ग बिल्ड वल्चर को इंडियन वल्चर कहते हैं, वन द सेम थिंग. ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स लुक ओवर द नेक्स्ट स्पीशीज नाउ. नेक्स्ट स्पीशीज इज आइबेरियन लिनक्स. ठीक है, न्यूज़ देखिए, डाउन टू अर्थ की न्यूज़ है. बैक फ्रॉम द ब्रिंक, IUCN चेंजेस आइबेरियन लिनक्स स्टेटस टू वल्नरेबल फ्रॉम एंडेंजर्ड इन कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी. तो इसका स्टेटस था endangered, now it is in vulnerable situation. ठीक है, तो situation has improved due to several steps which have been taken, and this is the reason it is in news. तो as you can see here, अगर IUCN status की बात करें तो it is vulnerable as given. Okay, inside it is in appendix 1. All right, now if you see in this figure, it looks like a cat. All right, so it is a medium sized cat, you can say this, but this cat is wild cat. ठीक है, medium size wild cat है. Where is it endemic to? Endemic to southern western Europe. ठीक है, which includes the region of your Portugal and Spain. ठीक. Okay, if you can see over the species, the subspeciality about the species is that you can say that, the belly and chest area, this belly area and chest area, this is basically, belly and chest area is basically white, okay, with some black spots. फीचर्स देखोगे अगर तो आपका शॉर्ट टेल है. ठीक है, तो शॉर्ट टेल, शॉर्ट बॉडी, बट द लेग्स आर लॉन्ग फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, तो लॉन्ग लेग्स. हेड इज कंपेरेटिवली स्मॉल बॉडी साइज में, तो स्मॉल हेड, एंड यू कैन सी द ईयर्स, दे आर वेरी पॉइंटी. ठीक है, तो पॉइंटी ईयर्स. ऑलराइट, वेयर डू वी फाइंड दिस? बहुत is it found in evergreen forest or is it found in deciduous forest? कहाँ पे मिलता है? तो it is mainly found in open forest. ठीक है, where a mixture of dense bushes or shrubs is found. ठीक है, this type of combination is seen basically in Mediterranean type of forest. ऑलराइट, ये जो एरिया भी है पोर्टुगल इन स्पेन, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको मिलता है. तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें यू कैन फाइंड दिस स्पीशीज. देयर आर सर्टेन सब स्पीशीज ऑल्सो, बट 4 सब स्पीशीज हैं. व्हाट आर दोस सब स्पीशीज? यूरेशियन, then this one we are talking about Iberian, then we have Canada lynx, and another is called as bobcat. ठीक है, तो इसी का सब स्पीशीज है ये सारा. The family is known as Fildak family. All right, Bengal tigers, Asiatic lions, ये सब इसी फैमिली के हैं. इवन इंडियन लेपर्ड्स ऑल्सो, दे आर ऑफ द सेम फैमिली. ठीक है, तो इसी फैमिली के हैं, फेलिडाक फैमिली बोलते हैं. ये है यार. All right, one more important thing about this Iberian lynx is that it is generally, you can find that it is nocturnal. ठीक है, इसका मतलब active in the nights. All right, ठीक है. So let's move to the next species now. This is Hollow gibbon. International Gibbon Day. India's only ape species faces a survival threat. So this is an ape species which is endemic to India. All right. So India's endangered western hollow gibbon faces severe threat from the post-oil exploration in Assam, Holangpur Gibbon Sanctuary.
ठीक है, तो दिस इज Ulangapur gibbon sanctuary is basically dedicated to this only ape species which is found in India, that is the Ulangapur gibbons. ठीक है, तो only ape species है ये, only ape species found in India. You can see that they are the smallest of all the ape. ठीक है, since they are very small, they are the smallest, so they are the fastest as well. Their movement is the fastest of all the ape. ठीक है, now we have two type of these gibbon. One is your western hollow gibbon, another is eastern hollow. वेस्टर्न इज एक वेस्टर्न है और दूसरा ईस्टर्न है. ठीक है, IUCN स्टेटस इज डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम. चलो, दिस इज आई थिंक वन. Only ape found in India. It is endemic to India. Smallest and fastest. ठीक है, western and eastern. The western is found in western part. ठीक है, that basically Chindwin river egg. This is in between. Here it is Chindwin river. तो चिंदविन रिवर के वेस्ट में जो मिलता है गिबन की स्पीशीज, दैट इज वेस्टर्न होलो गिबन, एंड चिंदविन रिवर के राइट हैंड साइड में ईस्ट में जो मिलता है दैट इज ईस्टर्न होलो गिबन. नाउ दिस वेस्टर्न होलो गिबन इज एंडेंजर्ड एंड ईस्टर्न होलो गिबन इज वल्नरेबल. ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा. ये मिलता है इन द एरियाज ऑफ बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, एंड म्यांमार रीजन. एंड दिस इज फाउंड इन basically Myanmar region, which lies to the east of the Chindwin river. All right, one important feature of this is that males and females are of equal size. Normally आप देखे होंगे कि कोई भी स्पीशीज होती है, अगर खास करके एप्स वगैरह अगर है, तो मेल आर बेसिकली हाई, दे आर मोर हेवियर एंड दे आर हैविंग मोर लार्ज बॉडी. बट इन दिस केस बोथ मेल एंड फीमेल दे हैव equal weight and size depending definitely upon the age. All right, you can see this white sort of ring across the face, है ना, एक white ring type का face की तरफ चारों तरफ दिख रहा है. So this basically gives it a mask-like appearance on the face. ठीक है, it eats, what is the diet? Eats fruits, insects and leaves. All right, so this is ये याद रखिएगा थोड़ा सा. आसाम में है Ulangapur gibbon sanctuary. It is in Assam. ठीक है, this is something which you can remember. चलिए next species देखते हैं. Next species in front of us what we have is नीलगिरी थार. Very important species and बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है. ठीक है, फीमेल नीलगिरी थार dies hours after sedation to fix radio collar at मुदुमलाई टाइगर रिजर्व. तो हुआ क्या कि इसको सेडेशन दिया गया, मतलब बेहोश किया गया. क्यों? रेडियो कॉलर फिक्स करने के लिए, डेफिनेटली टैगिंग करने के लिए एंड सी द मूवमेंट एंड ऑल, और उसका स्टडी करने के लिए नीलगिरी थार का दिस वाज डन. बट रिसेंटली व्हाट हैपेंड इज दैट कि वो सेडेशन देते वक्त इट डाइड. मे बी द अमाउंट ऑफ सेडेशन व्हिच हैड टू बी गिवन वाज गिवन मोर एंड इट बेसिकली डाइड. ठीक है, तो दिस वाज द रीजन एंड दैट इज द रीजन नीलगिरी थार इज इन न्यूज एंड मुदुमलाई टाइगर रिजर्व आल्सो बिकेम इन न्यूज. ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं एक बार नीलगिरी थार के नाम के बारे में. इसका निकनेम क्या है? इट इज आल्सो नोन एज क्लिफ गोट. ऑलराइट, नीलगिरी थार्स आर द लार्जेस्ट थार्स. ऑलराइट, क्लिफ गोट. अभी जो इसमें ग्रोन अप मेल्स होते हैं ना, द ग्रोन अप मेल्स, दे हैव अ स्पेशल नेम. what are they called? They are called as saddleback. ये सब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसको याद रखिएगा. पूछ सकता है saddleback, grown up males of its species are called as saddleback, yeah, something like that can be asked. This saddleback is also state animal of Tamil Nadu. It is the state animal of Tamil Nadu. ठीक है, आप देख सकते हैं, the closest relative of this नीलगिरी थार sheep जो होता है ना, not the goat, sheep. Sheep is the closest relative of the नीलगिरी थार. ठीक है, it is endemic to India.
What is happening here? Please. Okay, it is endemic to India, where in the Nilgiri Hills. ठीक है, नीलगिरी हिल्स कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में, केरला एंड तमिलनाडु रीजन. ठीक है, बट इट इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स में भी मिलता है. ऑलराइट, इट इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न घाट्स. There is one national park, Erviculam National Park, and the Green Hills. Green Hills are where? Green Hills of Annamalai. ठीक है, ये जो दो places है ना, Erviculam National Park and Green Hills of Annamalai, here they have maximum population. Maximum population is found in these regions. ठीक है. ओहो, I did a mistake. I have been writing Nilgiri Thars के बारे में in the Aberrant Linux. Actually, it was not auto-saved, so that is why this happened. But I hope that you have got it. This was about Nilgiri Thar. I was telling about Nilgiri Thar. By mistake, I wrote it here. ठीक है, we'll get back to the Nilgiri Thar portion, but I will not write it again. ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? What have I told? Okay, ठीक है, हाँ, this Erviculam National Park and this Green Hills, which are found in Annamalai. You can see horns over there, है ना, सर के ऊपर horns दिख रहे हैं ना. Both the sexes have horns, ये याद रखना. And these horns, they reveal the age of the Thar. ठीक है, तो क्या age है? This is revealed by the thorns, these thorns. Okay. You can also say that it is the only Thar that lives in the cold tropical region. Only Thar to live in cold tropical climate. They are basically active in daytime, so they are diurnal animals. IUCN क्या है? Endangered and Wildlife Protection Act of 1972 के हिसाब से this is under Schedule 1. ठीक है, this is the only Thar that lives in cold tropical climate. Himalayan Thar है, Himalayan Thar and Arabian Thar, these two are also other species of the Thars. ठीक है, Mukurti Forest Range in Adumalai Reserve. Okay, ठीक है. This is Mukurti National Park also. ठीक है, ये याद रखना, नीलगिरी हिल्स में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो. ठीक है, दिस मुकुर्ती फॉरेस्ट है ना, मुकुर्ती नेशनल पार्क भी है. इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को एंड इट इज फॉर्म बेसिकली अराउंड इन 2000s. आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट ईयर. 2000 में ये फॉर्म हुआ था टू प्रोटेक्ट दिस नीलगिरी थर्स. स्पेशली फॉर द नीलगिरी थर्स इट वाज फाउंडेड इन some 2000 or some year. Not remembering exactly the year. You can see and check it. ठीक है. Next species in front of us we have this cheetah. You can see cheetah's second home in India, Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, almost ready. ठीक है, तो इसमें चीता जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया. गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, इसको देख लीजिएगा. ऑलराइट, सो cheetah, if you talk about cheetah, then you know some factors which are important for you to know for the exam is that it is world's fastest land animal. मतलब it can run the fastest land animal है. ठीक है, they are the only cats, you know, big cats जो भी हैं, they are the only big cats which cannot roar. आप देखेंगे कभी चीता cannot roar. No, like tiger, lion, they can roar, but cheetah cannot roar. All right. You can see that cheetahs basically they are of two types. एक तो होते हैं African cheetahs और एक होते हैं Asian cheetahs. All right. This African cheetah, they are vulnerable as far as IUCN
And this Asian cheetahs, these are critically endangered. Critically endangered. Sides में, this is under appendix 1. This is also appendix 1 only. Alright, African cheetahs definitely are found in Africa. And these Asian cheetahs, they are only found in, few are left in Iran. ठीक है, critically endangered है तो बहुत नहीं है, ईरान में कुछ हैं. But you know the major difference, the physical difference between African cheetah and Asian cheetah is that Asian cheetahs, they will be slightly smaller in size. ठीक है, and these are comparatively bigger in size. Okay, habitat क्या होगा? Semi-arid grasslands, in which basically areas you can find it in the state of Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh. ठीक है, this is for the African. ये African cheetahs के लिए है. Asian cheetahs का अगर देखोगे, Asiatic cheetahs जो हैं उसको देखोगे, they are found in desert area and semi deserts of Iran area. ठीक है, एक चीज में याद रखिएगा, चीता बहुत ज्यादा न्यूज में था रिलोकेशन के लिए. ठीक है, कुनो नेशनल पार्क में जो चीताज आए थे फ्रॉम नामीबिया एंड ऑल, तो विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलोकेशन? तो कोई चीता की अथॉरिटी नहीं है. द अथॉरिटी इज NTCA. व्हाट इज द फुल फॉर्म? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. ठीक, NCTA जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलोकेशन ऑफ द चीताज. इसको ये थोड़ा सा आप याद रखना. So now let's look at the next species. Okay, so next species after the cheetah is Asiatic lions. ठीक है, Asiatic lions are basically those lions which are found in India. Persian lions भी बोला जाता है इसको. ठीक है, Indian lions जो है. दूसरा, you know, these Asiatic lions were once found in the areas which start from Turkey till this Indian region. ये पूरा यहाँ पे Asiatic lions मिलते थे. I'll just note it down. And this, there are two species of lions basically. Asiatic lions है, African lions है. Africa में भी lions जो मिलते हैं. तो Asiatic lions जो हैं, these are a bit, you know, smaller in size than African lions. And you will also find that these Asiatic lions, they have you know, sort of skin which is hanging in its belly, and this is only found in Asiatic lions. In African lions this is absent. ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एशिया में, you know, people are a bit fatty, and African people, they are very, they have solid body and, you know, without any fats and all, so they have good muscular body, so they don't have fats. तो Asiatic lions जो हैं उसमें that loose folded skin along the belly you will find. African lions में ये missing है. ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं. This is Persian lion and the Indian lion. Slightly smaller in size than African lions. ठीक है, once found from Turkey towards till India. Presently, अच्छा, इंडिया में भी they were found in these areas of West Bengal also. ठीक है, West Bengal में भी Asiatic lions पाए जाते थे पहले, but not now. This in MP also there is a place called as Riva. So in Riva also Asiatic lions were found. Okay, presently they are found in Gir protected area. What type of forest is this? Gir forest. This is dry deciduous forest in Gujarat. All right. Okay. IUCN status is vulnerable. Sites will be appendix 1. And Wildlife Protection Act of 1972 will be schedule 1. All right. After this, Bird of Wildlife Sanctuary proposed as second home for. अच्छा, Bird of Wildlife Sanctuary has been proposed as second home. All right. इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा बस. That in Bird of Wildlife Sanctuary also Asiatic lions are, they are proposed, and they will be transferred maybe from the Gir National Park or Gir protected area. What else? You know, from this Bird of Wildlife Sanctuary, the spotted deer and sambar. In this Bird of Wildlife Sanctuary, spotted deer and sambar is also being transferred from the Gir National Park. ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा. टाइगर के साथ, ये लाइन के साथ साथ spotted deers and sambars are also being transferred. Bird of Wildlife Sanctuary में from last 143 years or around 140 years, there were no Asiatic lions being found. So after 140 years, that area will be having the Asiatic lions for the first time. A very famous virus known as CDV, that is canine distemper virus, attacks this Asiatic lions. So basically it attacks the
respiratory system of the lions, respiratory and nervous system also. ठीक है, this virus is transferred through food, air, water. वायरस है ना, फूड एयर वाटर से भी ट्रांसफर होता है. इन 2013 ऑल्सो एक ऐसी न्यूज़ याद आ गई, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू. 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि फ्रॉम एशिया फ्रॉम दिस गिर नेशनल पार्क द एशियाटिक लायंस शुड बी ट्रांसफर्ड टू पूनो नेशनल पार्क एज वेल. ठीक है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, बट इट हैज़ नॉट बीन डन एज सच. तो अगर ये पूछा जाता है कि पूनो नेशनल पार्क maybe Asiatic lions can survive or not, so yes, they can survive. Supreme Court has already given that permission. They have asked to transfer, but till now they haven't. ठीक है, तो this is something which is important about Asiatic lions. Moving to the next species, that is red panda. Darjeeling Padmaja Naidu Himalayan Zoo red panda program selected as finalist for 2024 वाजा conservation. ठीक है, ये वाजा कंजर्वेशन क्या है देखेंगे इसको एक बार, लेकिन रेड पांडा के बारे में देख लेते हैं. फायरफॉक्स एक, remember Firefox, there was a search engine named like Firefox before your Mozilla Firefox जिसको कहते थे, तो उसमें भी रेड पांडा was the symbol. तो रेड पांडा is also known as Firefox और लेसर पांडा और रेड कैट बियर. ठीक है, तो ये तीनों नाम रेड पांडा की है, Firefox, लेसर पांडा एंड रेड कैट बियर. ऑलराइट, इट इज अ arboreal animal. Arboreal animals are those animals which lives in trees. ठीक है, which countries are they found in? They are found in India, they are found in Nepal, they are found in Bhutan, they are found in South China, they are found in Myanmar. ठीक है, all these countries they are found in. In India, they are specifically found in the regions of Sikkim, states of Sikkim, Arunachal. ठीक है, in Darjeeling in West Bengal, Kalimpong. Kalimpong is also basically near Darjeeling, only subdivision है Darjeeling में. In Kalimpong of West Bengal also this is found. Alright, तो सिक्किम, अरुणाचल एंड वेस्ट बंगाल स्टेट में रेड पांडास आर फाउंड. ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ मिलते हैं. ठीक है, देन देयर आर सम सब स्पीशीज ऑल्सो. एक सब स्पीशीज है हिमालयन रेड पांडा, द अदर इज चाइनीज रेड पांडा. ठीक है, दिस हिमालयन रेड पांडा एंड चाइनीज रेड पांडा, बेसिकली इसमें डिफरेंस पता है क्या है? देयर इज अ रिवर. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिवर? यार्लुंग ज़ैंगबो. ठीक है, दिस रिवर बेसिकली डिवाइड्स द हिमालयन रेड पांडा एंड चाइनीज रेड पांडा. इस रिवर के लेफ्ट हैंड साइड में हिमालयन रेड पांडा है, राइट हैंड साइड में चाइनीज रेड पांडा. ऑलराइट, हैबिटेट की बात करें अगर, तो यू कैन से दैट इन मिक्स्ड deciduous and conifer forests they are found. ठीक है, where dense tree of bamboo are present. Alright, diet they are omnivorous. IUCN they are endangered. Sites they are under Appendix 1 and Wildlife Protection Act they are under Schedule 1. ठीक है, ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था रेड पांडा का विच इज़ इम्पोर्टेंट. और अगर थोड़े बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यू कैन टेक वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट इट इज नॉक्टर्नल. ठीक है, अच्छा, अबाउट दिस वाजा आई वाज टेलिंग यू, इट इज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम. ये वाजा है. ठीक है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम. अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था. क्यों? वर्ल्ड के जितने भी जू हैं जो फॉलो करते हैं प्रॉपर कंजर्वेशनल प्रोसीजर्स वगैरह को, अदर पैरामीटर्स भी हैं जो फॉलो करते हैं उन सब प्रोसीजर्स को, और दे ट्रीट देयर एनिमल्स विद गुड एनिमल राइट्स एंड दे प्रोटेक्ट देम. उनके जो कंजर्वेशन स्टेटस हैं, जो कंजर्वेशन प्रोसीजर एंड मेथोडोलॉजीज हैं, वो अगर फॉलो करते हैं इसके वाजा के नियमों को, तो फिर वो वाजा के मेंबर जू या मेंबर एक्वेरियम्स में आते हैं. रिसेंटली दिल्ली जू है जो जू दिल्ली में प्रेजेंट है, उसको वाजा ने अपने लिस्ट से निकाल दिया था. ठीक है, बिकॉज क्यों निकाला था? अफ्रीकन एलिफेंट था एक, उसके ट्रीटमेंट में देयर वर सम प्रोसीजरल फ्लॉज व्हिच वाज फाउंड बाय वाजा कंजर्वेशन सोसाइटी. सो उसके बाद में दिल्ली जू को नाम निकाल दिया था वाजा मेंबर लिस्ट से. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एलिफेंट? अफ्रीकन एलिफेंट जो था उसका नाम था शंकर.
यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते इस तरह के फैक्ट्स की नाम क्या था, बट स्टिल बता दिया मैंने आपको जस्ट। ठीक है, चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्पीशीज नाउ। हैव आई टोल्ड यू द स्टेटस? यस, ओके। नेक्स्ट स्पीशीज इज ग्रे वुल्फ। ऑपरेशन भेड़िया फेल्स टू स्टॉप अटैक्स। Man eater wolf kills another child in UP's Brech. Okay, so grey wolf was in news. So let's see about this. They basically belong to the family of dogs, wolves, jackals. ठीक है, और इनकी फैमिली में जो है ना, उस फैमिली में दिस इज लार्जेस्ट लिविंग वाइल्ड in within that those canine species. ठीक है, कौन कौन से हैं वो? डॉग है, जैकल है, फॉक्सेस है, coyotes hai. Alright, so it is the largest living animal within them. Where is it found? It is basically found in regions of Southwest Asia and some parts of Indian subcontinent. So basically Israel से लेके Indian subcontinent वाला जो region है ना, ये पूरा region में grey wolves are found. Okay, primarily they are nocturnal animals, मतलब एक्टिव इन नाइट। ठीक है, हैबिटेट्स डिटरमाइंड अगर करेंगे तो इंडियन स्क्रब लैंड जो है ना, वहाँ पे मिलता है, एंड देन सेमी एरिड एग्रो रीजन्स और इकोसिस्टम्स आल्सो यू कैन फाइंड देम दिस ग्रे वुल्व्स। ठीक है, तो स्क्रब लैंड्स, ग्रास लैंड्स एंड सेमी एरिड रीजन्स आल्सो ग्रे वुल्व्स आर फाउंड. They basically live comfortably in regions which are warmer. They are found basically in warm regions. ठीक है, two wolf sanctuaries are also present. One is Mahua wolf sanctuary. This is in Jharkhand. ठीक है, and another is Makapur wolf sanctuary. This Makapur wolf sanctuary is where? It is in Karnataka. All right. So this Makapur wolf sanctuary, में recently it was in news also. Some 8 cubs of the wolves were born, and that is the reason it was in news. इसका IUCN status वगैरह अगर देखेंगे तो it is endangered sites Appendix 1 and Wildlife Protection Act of 1972, it is Schedule 1. So maximum protection and Appendix 1 and Wildlife Protection Act will be Schedule 1 में. ठीक है, चलिए let's look at the next species now. When you have too many slides, then this problem occurs. Okay. No. All right. So now the next species we have olive ridley turtle. Illegal fishing practices causing mass deaths of olive ridley turtles in Tamil Nadu coast. Experts. Many large-scale fishers hesitate to use turtle excluder devices, arguing that these devices would decrease their catch and all these things. So this olive ridley turtle was in news. You can see heart-shaped shell, olive green in color. That is the name olive ridley came from. ठीक है, रिसेंटली कितने टर्टल किल हुए पता है? अराउंड इट वाज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 3000 these turtles, olive ridley turtle, they have been killed in Andhra Pradesh alone. ठीक है, alone in Andhra Pradesh around 3000 olive ridley turtles were killed and around 1500 were killed in Tamil Nadu, Chennai coast. ठीक, so that is the reason it was in news. Important facts लिख लेते हैं एक बार. It is the smallest turtle. जितने sea turtle है ना, it is the smallest of all of the sea turtles. ठीक है, where is it found? Basically in warm waters मिलते हैं आपको, तो tropical regions में these will be found, of which Pacific, Indian, Atlantic. ठीक है, तो throughout the world में जो tropical regions है वहाँ पे this olive ridley turtles will be found. Garimatha Marine Sanctuary is important to note. ठीक है, this is in Odisha. This is the largest nesting site.
ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट रखिएगा। दूसरा, दे ले देयर एग्स वेयर, इन वाटर और ऑन द लैंड्स, ऑन द बीचेस, सैंड बीचेस में दे ले देयर नेस्ट एग्स। दूसरा, हाउ दे डू ब्रीथ, दे डू नॉट हैव गिल्स, याद रखिएगा। Since they do not have gills, so that is why they come to surface for breathing. All right, they are great migrators, can travel long distances. ठीक है, diet is omnivorous. All right, when you talk about the अच्छा हाँ, one more thing, you know the sexes, माने the olive turtle, when the eggs are hatched, so the olive turtle will be male or female, that depends upon the temperature. The surrounding temperature plays a very important role. If the temperature is high, मतलब अगर summers है, अगर warm है ज़्यादा, तो chances are there that olive turtle जो the offspring would be female. ठीक है, these are the chances. And if the temperature is low, not very warm, then the eggs would be hatched, and you will find that male olive turtles are born. ठीक है, तो ये एक चीज़ है, ये याद रखिएगा। इसमें IUCN स्टेटस अगर देखें तो इट इज़ vulnerable sites, appendix 1, and Wildlife Protection Act of 1972, it is under schedule 1। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो नोट रखिएगा। चलिए, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्पीशीज नाउ। नेक्स्ट स्पीशीज वी हैव इज इंडियन घड़ियाल। अभी इंडियन घड़ियाल का मुंह देखिए आप, लुक एट द स्नाउट, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मगर। इंडियन घड़ियाल माइट गो टू एक्सटेंट इन योर लाइफ टाइम। 5 अदर एनिमल स्पीशीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, तो इंडियन घड़ियाल का बता रहा है, और कौन कौन से एनिमल स्पीशीज है वो, जावन राइनो, एमर लेपर्ड, यांगसे फिनलेस पोपाइस आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दीज आर इंडेंजर्ड एज वेल। ठीक है, तो घड़ियाल आर ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, distinguished by mugger, as I've told you, due to its long snout, which you can see over here. ठीक, so different from mugger due to its thin long snout. ठीक, where does it live? It lives in fresh clean water, majorly found in Chambal region. Chambal river में you can find this Indian gharial. All right, and also found in tributaries of Ganga and in river Chambal and गिरवा। ठीक है, यहाँ पे आपको मेनली मिलेंगे। नेपाल में भी मिलता है, यू कैन फाइंड देम इन नेपाल ऑल्सो। इन विच रिवर? इन राप्ती नारायणी रिवर, इट इज फाउंड इन नेपाल। ठीक है, दूसरी चीज, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट crocodilian species. All right, then we have some gharial reserves also. So gharial reserves basically national, ये जो चंबल सेंचुरी है वहाँ पे मिलता है। then these gharial reserves are in UP, it is in MP also they are found, and और क्या बताऊँ इसमें, they are cold blooded। अच्छा, नेशनल चंबल सेंचुरी जो है ना, वहाँ पे these dolphins are also found। which dolphins? the Gangetic dolphins। ठीक है, ये भी मिलते हैं वहाँ चंबल रिवर, नेशनल चंबल सेंचुरी में। ठीक है, तो इंडियन घड़ियाल IUCN स्टेटस, इफ यू सी देन दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। साइट्स में अपेंडिक्स 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1। ठीक है, देयर इज नथिंग एल्स एज इम्पोर्टेंट। अभी हमने देखा था ना, फिनलेस पोपाइस भी लिखा हुआ था उसमें। तो लेट्स लुक ओवर दिस स्पीशीज फिनलेस पोपाइस। अगेन this is IUCN status is critically endangered। all right, where this finless porpoise are found, mainly they are found in Yangtze river। Yangtze river जो है ये कहाँ पे पाई जाती है? this is found in China। ठीक है, and it is one of the longest river of Asia। ठीक है, एक बाजी डॉल्फिन थी, बाजी डॉल्फिन्स, दे आर एक्सटिंक्ट नाउ। ठीक है, दिस बाजी डॉल्फिन्स यूज्ड टू बी आल्सो फाउंड इन दिस यांगत्से रिवर ओनली। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था। नाउ इन विच टाइप ऑफ वाटर्स, यू कैन सी द वाटर इज वेरी फ्रेश, सो दे लिव इन फ्रेश वाटर ओनली।
फ्रेश वाटर ओनली, आपको फ्रेश वाटर के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे. You can see the face, it is very cute, so it is also very famous for its cute smile. They are also known for high intelligence, very intelligent species. Okay. Since it is found specifically in this Yangtze River, so that is why they are non-migratory. Okay, and only found in China. अगर इसकी बात किया जाए, the habitat, what type of habitat they live in basically, so they will be found in mainly tropical, warm temperature climate. All right. The diet, they are carnivorous. IUCN status, I have told you that it is critically endangered. All right. Nothing more than this to be told. All right. Now this armored leopard, critically endangered armored leopard zoya dies at 21 in California Zoo. ठीक है, तो कैलिफोर्निया की न्यूज़ है, लेकिन फिर भी armored leopard न्यूज़ में है, तो हम इसको देख लेंगे. It is basically the subspecies of leopard. Where they found? They are found in the forests and mountains of eastern Russia and part of northern China. ठीक है, there is आर्मर रिवर. ठीक है, तो ये आर्मर रिवर के नाम पे ही आर्मर लेपर्ड का नाम पड़ा है. दे आर ग्रेट ट्री क्लाइंबर्स एंड आर नॉक्टर्नल. ठीक है, टू प्रोटेक्ट, यू कैन सी हियर, आप इसके एक बार इमेज में अगर देखेंगे ना, यू कैन सी दैट लार्ज हेयर्स आर प्रेजेंट. कैन यू सी लार्ज फरी हेयर्स? सो दीज हेयर्स दे कैन ग्रो up to 7 to 8 centimeters during winters to protect themselves from the chilly winters. All right. They will definitely avoid living in open grasslands or populated areas. ठीक है, because देखिए ग्रासलैंड में अगर वो रह रहा है तो there are other animals like tigers, there are lions, so they can attack and they can eat, they can kill this armored leopard. Second thing is that they are nocturnal, so they move in at night, and they are great tree climbers, so they prefer living in the trees. Now trees will not be majorly found in grassland areas. Maximum trees will be found in dense forests areas and all. Okay, so that's why they don't prefer grassland, because they can climb trees and they prefer living on trees. When you talk about the IUCN status, so that is critically endangered, and sites where they are under Appendix 1. Okay. So let's look at the next species now, that is Javan rhinoceros. A policeman guards suspected poachers over their involvement in the killing of critically endangered Javan rhinos. So as the name suggests, these are also known as lesser one-horned rhinoceros. As the name suggests, found in Java, in Indonesia. One-horned rhinos, okay, as the name suggests, are found only in this Kulon National Park. Where this is, it is in Java, in Indonesia. An important information which I want to give to you, that at one point of time, not now, but एक time पे these were also found in India also, ठीक है, and some part of Southeast Asia. तो northeast part of India and part of Southeast Asia, they were once found, but not anymore. Okay, their population has been killed and now they're concentrated only to this Java and Indonesia. If we talk about the diet, they are basically herbivorous. ठीक, एक चीज याद रखना, इसमें females are slightly bigger in size, unlike other animals. Maximum animals में ना males are bigger in size and weight, but here in Javan rhinos you will find that female are in bigger size. IUCN status, as you know, these are critically endangered. ठीक है, चलो let's move to the next species. This is horsebill turtle, critically endangered species of turtle, hatching sighted for first time on Chennai beach. तो फर्स्ट टाइम चेन्नई बीच में हैचिंग हुआ है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, दैट इज व्हाई हॉर्सबिल टर्टल इज इन न्यूज़. लेट्स सी, इट इज वन ऑफ द स्मॉलर sea turtle, not very big in size. ठीक है, where are they found? In tropical and subtropical regions.
tropical and subtropical waters of Atlantic Ocean, Pacific, and parts of Indian Ocean also. Okay. These are the only turtles which can which can survive by consuming sponges. Only turtles. Only turtle that can survive by consuming sponges. Largest population of these turtle they are found in Caribbean Ocean. Caribbean Ocean वाला जो area है ना, around the west of Atlantic. They are found there in Indian and Indo-Pacific region. These are only the facts. ठीक है, these facts you should just revise and remember. Facts से understanding जो बनेगी उसके basis पे कई बार elimination methods से solve हो जाते हैं question. ठीक. Next thing, if you talk about the largest, ये देखो यहाँ पे hatchling sighted हुआ है चेन्नई बीच में, but चेन्नई बीच में या इंडियन ओशन में it is not the largest. तो largest अगर पूछेंगे ना nesting populations, these are found in Australian Islands or Solomon Islands as well. ठीक है. डाइट में अगर पूछेंगे तो they are omnivorous. What else? Yes, they can migrate long distances, so long migratory species. IUCN, as you know, this is critically endangered, Schedule 1 and Appendix 1. All right. अगर ये स्टेटमेंट आता है कि हॉर्सबिल टर्टल दे हेल्प इन कीपिंग द हेल्थ ऑफ द कोरल रीफ्स इन प्रॉपर कंडीशन, सो दैट इज स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? दैट इज राइट बिकॉज they remove this prey such as sponges from the surface of this corals. ठीक है, तो जो रीफ होते हैं ना, कोरल रीफ्स, उनके सर्फेस के ऊपर स्पॉन्जेस होते हैं, so they eat those sponges. All right, so they remove them and the health of the coral reefs are maintained. ठीक है. Angel shark, not much information to be shared, but still CMS COP14 draft resolution for conservation of horsebill turtle and angel shark adopted. ठीक है, तो angel shark ये देखिए, ये है angel shark, you can see here, very thin fish sort of structure. This is angel shark. Where is it found? It is found in mainly northeast of Atlantic and Mediterranean Sea. ठीक है. अब हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन सी आपको याद ना हो, बट ये याद रखिएगा कि एंजल शार्क जो है ना, दिस इज नॉट फाउंड इन इंडियन ओशन. ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है याद रखने के लिए, इंडिया के रिलेशन में आप उसको याद रख पाए. अगर ये इन्फॉर्मेशन याद है स्पेसिफिक, देन तो वेल एंड गुड. अगर नहीं भी याद है तो इन रिस्पेक्ट टू इंडिया यू शुड रिमेंबर द फैक्ट्स. ठीक है. इट्स अ फ्लैट फिश और फ्लैट शार्क इन विच हाइड्स, कैमोफ्लेज करती है ये अपने आप को. ठीक है. It can hide and it can camouflage itself. They survive at the bottom of the sea, मतलब near the sea surfaces. Basically are nocturnal. What else? Cartilaginous fish है. IUCN status is critically endangered. And sites में it is under Appendix 1. ठीक है, critically endangered यहाँ दिया भी हुआ है. Horsebill turtle is also critically endangered. ठीक है. ठीक है, तो चलो let's see the next species now. Next species we have is Western lowland gorilla. Critically endangered Western lowland gorilla born at the ABQ biopark. ठीक है, तो ये न्यूज़ है. ABQ biopark and critically endangered Western lowland gorilla is critically endangered. So this is what we have the information from this news. ठीक है. अभी देखते हैं ये where is this ABQ biopark. इंडिया में तो कहीं नहीं है. ठीक है. This is in न्यू मैक्सिको
यूएसए। ठीक है, अब देखिए गोरिल्लाज जो होते हैं ना, ये बेसिकली दो टाइप के हैं, एक तो ईस्टर्न, ठीक है, दूसरा वेस्टर्न। ऑलराइट, दिस ईस्टर्न गोरिल्लाज दे हैव अ सब स्पीशीज व्हिच आर आल्सो नोन एज माउंटेन गोरिल्लाज। ठीक है, दीज आर सब स्पीशीज, ठीक है, ऑफ दिस ईस्टर्न गोरिल्लाज। ऑलराइट, नाउ दिस लोलैंड वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्लाज जो हैं, दीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कॉन्गो बेसिन। ठीक है, ये याद रखिएगा, दैट इज वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। कॉन्गो बेसिन क्या है? इट इज द largest rainforest in Africa. We all know, largest in Africa and second largest in the world. Which is the first largest rainforest in the world? That is Amazon. ठीक, ये जो वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला है ना, these are smaller in size. ठीक है, they are comparatively slightly smaller in size than other gorillas. ठीक है, साइज में तो स्मॉलर है, बट देयर स्कल इट इज स्लाइटली वाइडर, स्कल इज स्लाइटली वाइडर, ठीक है, देन अदर गोरिल्लाज। आई होप यू हैड रिटन व्हाट आई जस्ट रोट, बिकॉज वो पीडीएफ में सेव नहीं हुआ, तो जितना भी जो भी वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला का बताया है वो वहां से प्लीज नोट कर लीजिएगा। स्लाइटली वाइडर स्कल। ठीक, सेकंड न्यूज में बहुत था कि दीज गोरिल्लाज आर इन्फेक्टेड बाय द इबोला वायरस। तो इबोला वायरस इट अफेक्ट्स देम। ठीक है, IUCN as you can see here, it is critically endangered. Cites its appendix 1. ठीक है, mainly these gorillas, their diet is mainly herbivorous. Mainly they are herbivorous. Why I'm saying mainly? Because herbivorous है ये, but we have seen that at times they eat termites and ants. At times it has been seen that they eat termites and ants also. ठीक है, चलिए, तो ये था अबाउट वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला के बारे में। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्पीशीज। Okay, so the next species is manta rays. Tamil Nadu man who caught giant manta ray fish booked under Wildlife Act. ठीक है, तो ये था न्यूज। अब दिस इज लिस्टेड अंडर IUCN, रिमेंबर ये वल्नरेबल है। ठीक है, इट इज वल्नरेबल अंडर IUCN। So this is manta ray, this is how it looks. Where is it found? The habitat found mainly in warm, temperate, tropical and subtropical regions. ठीक है, tropical and subtropical waters. ठीक, अब मांटा रेस की ना दो स्पीशीज है, एक है ओशनिक मांटा और एक है आपका रीफ मांटा। ठीक है, they are somewhat related to sharks. Alright, they are related to sharks some way. Found in both shallow and deep waters. ये एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको याद रखना है कि they are found in both shallow and deep waters. तो ऐसा नहीं है कि ओनली शैलो वाटर्स या ओनली डीप वाटर्स। नॉर्मली कंफ्यूजन हो सकता है मैंटा रेस को लेके, बिकॉज कोई भी स्पीशीज है ना उसका हैबिटेट इतना वेरी नहीं करता है, बिकॉज शैलो वाटर्स और डीप वाटर्स में टेम्परेचर का बहुत फर्क होता है, यू नो लाइट सनरेज पहुंचने का बहुत फर्क होता है, द स्पीशीज दे आर डिफरेंट, द हैबिटेट इज टोटली डिफरेंट। तो इस वजह से कंफ्यूजन हो सकता है कि यार एक स्पीशीज दोनों लेवल पे नहीं रह सकते हैं। देयर आर डिफरेंट स्पीशीज व्हिच लिव ऑन द शैलो वाटर्स एंड देयर आर सम स्पीशीज व्हिच लिव इन द डीप वाटर, बट मैंटा रेस दे कैन लिव इन बोथ द वाटर, शैलो एंड डीप बोथ। ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। ओके, बट नॉर्मली आप देखेंगे तो शैलो वाटर्स में ही आपको मिलेगा, डीप वाटर्स में भी दे आर फाउंड, बट मैक्सिमम दे विल बी फाउंड इन शैलो वाटर्स। ओके, दिस मांटा, दिस बेसिकली मीन्स ब्लैंकेट इन स्पेनिश। ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैंकेट जैसा फेदर इसके दिख रहे हैं आपको, विंग्स दिख रहे हैं, ब्लैंकेट टाइप्स। दे आर बेसिकली कॉल्ड यू नो मांटा रेज आर बेसिकली, मांटा मीन्स दिस ब्लैंकेट। दूसरा, एज आई हैव टोल्ड यू दैट दे आर फाउंड इन
वार्म वाटर्स, ठीक है, तो टेम्परेट रीजन्स में नहीं मिलेगा, इसलिए ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में है। दूसरा, these are very big in size and they have largest brain to body ratio. कोई भी फिश है ना, इसका जो ब्रेन टू बॉडी रेशियो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, मांटा रेस का। IUCN स्टेटस अगर आप देखेंगे, हैव आई सेड इट वल्नरेबल, नो आई हैवंट, ठीक है, मांटा रेस IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल, ठीक है, दे आर वेरी हार्मलेस टू ह्यूमंस, किसी तरह से ऐसा नहीं है कि किसी तरह से दे हार्म ह्यूमंस इन एनी वे और द अदर, राइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्पीशीज देखते हैं। दिस इज सुंदा क्लाउडेड लेपर्ड। इज अ सुंदा क्लाउडेड लेपर्ड अ लेपर्ड? कैंडिड एनिमल कैंप्स हेड्स टू साउथ ईस्ट एशिया। देखिए हुआ क्या था ना कि ये पहले लगता था कि सुंदा क्लाउडेड लेपर्ड जो है दिस इज टाइप ऑफ लेपर्ड ओनली, बट इट इज टोटली अ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, सुंदा क्लाउडेड लेपर्ड इज टोटली अ डिफरेंट species. That is why this news was there. Where they are found? They are found mainly in the islands of Borneo and Sumatra. ठीक है, in Malaysia. They will be found in rainforest, याद रखना, but lowland rainforest जो होगा ना उसमें मिलेगा. Found in lowland rainforest. That will be typically below 1500 meters. 1500 meters के ऊपर जो रेन फॉरेस्ट मिलेंगे दे विल बी हाईलैंड रेन फॉरेस्ट। तो लो लैंड रेन फॉरेस्ट में दीज आर फाउंड वेरी इन आइलैंड्स ऑफ बोर्नियो एंड सुमात्रा। ओके, दीज सुंदा क्लाउडेड लेपर्ड दे आर दी डिफरेंट स्पीशीज, पूरा स्पीशीज ही डिफरेंट है, नॉट सब स्पीशीज और समथिंग, डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम क्लाउडेड लेपर्ड। ऑलराइट, what is the feature, how are they considered they're different? They have smaller cloud markings on the body. आप देखेंगे अगर ये जो मार्किंग्स है ना they are bit smaller, ठीक है, on the body, plus their skin would be a bit darker in color. ये किसके रेफरेंस में बता रहा है? ये बता रहा है क्लाउडेड लेपर्ड के रेफरेंस में, ठीक है। तो skin will be somewhat darker in color and smaller cloud markings are found on the body which is different from that of the सुंदा क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एक इसमें फीचर्स ये बता सकते हैं कि दी अपर कैनाइंस आर बिट लार्जर देन लोअर कैनाइंस। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? अपर कैनाइंस आर बिट लार्जर देन लोअर कैनाइंस मतलब से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द माउथ, तो ये जो टीथ है ना दे विल बी बिट लार्जर देन द लोअर कैनाइंस, ठीक है। दैट इज बिकॉज दीज सुंदा क्लाउडेड लेपर्ड दे बेसिकली लिव ऑन द ट्रीज एंड दे catch their prey also on the trees. तो जब पेड़ पे ये अपना prey को when they catch it, so the prey hangs because tree में पकड़ रहे हैं, तो they need more grip के लिए the upper canines need to be bit strong so that they can hold their prey in a strong way, ठीक है। तो इस वजह से the upper canines are large than the lower canines because of this reason, ठीक है, because it is difficult. लैंड पे इट इज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज ग्रेविटी का एक्स्ट्रा वेट नहीं ऐड हो रहा है, बट पेड़ पे जब आप किसी प्रे को पकड़ रहे हैं यू नीड टू कैरी इट एंड यू नीड टू गेट होल्ड ऑफ इट, सो द एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ ग्रेविटी आल्सो एक्ट्स। तो आपके पास जो द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच यू आर होल्डिंग इट थ्रू योर टीथ हैव टू बी लार्ज टू गेट अ गुड ग्रिप। ऑलराइट, दे आर नॉक्टर्नल स्पीशीज एंड ग्रेट ट्री क्लाइंबर्स, ठीक है। तो they are great tree climbers. They climb tree to prevent themselves being prey and to hunt their prey as well, ठीक है। IUCN status vulnerable in CITES its appendix 1, ठीक है, ये याद रखिएगा बस। All right, next we have in front of us that is the African elephants. देखो elephants जो है ना सवाना elephants है, African elephants basically ये क्यों न्यूज़ में अनंत अंबानी वंतारा to provide new life to 3 African elephants from Tunisia. All right, तो वंतारा is एक वो sort of zoo which has been created by one of the son of Mukesh Ambani, who is the founder, who is the director, who is the you can say owner of Reliance. तो अनंत अंबानी he has created वंतारा in Jamnagar I think in Gujarat. तो वहाँ पे they have gotten 3 African elephants. तो African elephants is in news because of that reason.
देख लेते हैं डिटेल में, अफ्रीकन एलिफेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट फैक्ट फॉर अफ्रीकन एलिफेंट्स वी कैन हैव इज दैट दे आर द लार्जेस्ट मूविंग एनिमल्स ऑन द अर्थ, largest animal walking on the earth right now. Okay, they will have a large ears, as you can see. Large ears, again adaptation. Africa में बहुत ज़्यादा, see I'm not explaining all these things because I believe that you know all these things. आपका revision mode चल रहा है बस, तो मैं revision करवा रहा हूँ. But large ears इसलिए है, adaptation है. Adaptation क्यों है? अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो elephants they they flap their ears to radiate heat and keep their body cool. ठीक है, this every elephant does, but since African countries they have lot of बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, because it is a subtropic and subtropic continent, तो इस वजह से इनके जो कान हैं they are, because of adaptation it is bit large, ठीक है, to radiate excess heat. Now this African elephant, it is savanna और bush elephant, ठीक है. दूसरा क्या है? forest elephant. These savanna and bush elephants, these are basically, they are large. These are larger than the forest elephants. They are smaller in size and a bit darker. ठीक. दूसरा, you can see that their tusk in the picture also image, you can see the tusk are coming outside, they're emerging outside. So the tusk comes outside. Okay, and here what happens? Tusks are straight and downwards. यहाँ पे जैसे टस्क इज कमिंग आउट लाइक दिस, ठीक है, बट जो फॉरेस्ट एलिफेंट होंगे उसमें यू कैन सी टस्क आर डाउनवर्ड्स एंड दे आर स्ट्रेट, दे आर नॉट कमिंग आउट. ऑलराइट, तो ये एक डिफरेंस है. दिस सवाना एलिफेंट्स, दीज आर IUCN स्टेटस इज endangered. ऑलराइट, एंड दीज फॉरेस्ट एलिफेंट्स, African elephants, foreign elephants, their IUCN status is they are critically endangered. All right, one important fact is that they, PDF is being saved. Okay, so one important fact is that they basically communicate through infrasound. They communicate through infrasounds up to 14 kilometers, which is in you cannot, humans cannot hear that this frequency. Okay, they also communicate through the seismic waves. And you know what is the receiver? How they communicate? By their feet, sensing via their feet. Sensing via their feet. ठीक है. These African elephants, they can survive in savanna and forest areas and in deserts also, semi-arid regions also. ठीक है. Both male and female would have tusk. It's not that only male will have tusk. So both, क्या हो रहा है ये elephant में इतना saving क्यों हो रहा है PDF? Both male and female would have tusk. Let me just write so that miss, both male and female would have tusks. All right, and at times we have seen that tusks may hair also grow. That is, hair also grows at times. Okay, so this is something which is what African elephants you need to know. चलो आगे बढ़ते हैं. Have I told the status critically? हाँ ठीक है. चलिए. Now we have pygmy hawk. ठीक. Pygmy hawk looks like a pig. 9 captive breed pygmy hogs released in Assam National Park. ठीक है, तो pygmy hog was in news. It is world's smallest pig. ठीक, endemic to India. This is important. All right, released in Manas National Park under pygmy hog conservation program. ठीक है, pygmy hogs are indicator species, ये याद रखिएगा, which indicates the health of the ecosystem. Indicator species of which habitat? Grasslands habitat. So they are found in grasslands. ठीक है. Okay.
Earlier they were found in the foothills of Himalayas. A lot of areas they used to be found in foothill of Himalayas, but abhi they are not found all around in foothill of Himalayas. Not found as earlier, but they are restricted only to Assam now. ठीक है, अभी सिर्फ आसाम में मिलते हैं. एंड आसाम में भी कहाँ, एक तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दूसरा इट इज बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, ग्रासलैंड्स में मिलते हैं, बट द ग्रासलैंड्स वुड हैव टॉल ग्रासेस, जहाँ पे दे आर फाउंड टॉल ग्रासेस विथ tall and dense grasses. ठीक है, where mix of shrubs plus trees both are present. ठीक है, तो ऐसे एरियाज में आपको पिग्मी हॉक्स मिलेंगे. इसके बाद में let's look over what the status of pygmy hawk is. So pygmy hawk status, IUCN status is, it is endangered. Sites में appendix 1. ठीक है, Wildlife Protection Act 1972, it is schedule 1. एंड पिग्मी हॉक डाइट अगर आप पूछेंगे तो दिस इज omnivorous. All right, this is omnivorous. So if you look over the status, okay, pygmy hawk ka the IUCN status, it is endangered. Pygmy hawk is endangered. ठीक है. Sites, this is appendix 1. WPA 1972, it is schedule 1. And pygmy hawk, if you look over to the diet, have I discussed? No. The pygmy hawk diet is, it is omnivorous. ठीक है. So this is about pygmy hawk. Let's look at the next species now. The next species is takin, Himalayan goat antelope, wild wonders of Bhutan. ये न्यूज़ था बेसिकली, जो न्यूज़ में आया था. ठीक है, तो दैट इज वाई takin is important. Now takin basically they have 4 species, major 4 species है takin के. कौन कौन से हैं? Mishmi takin, then we have golden takin, then we have Tibetan takin, and we have Bhutan takin. ठीक है, तो ये भूटान takin के ऊपर न्यूज़ आई थी. And these species are mainly, they are found in eastern Himalayas. ठीक, कौन कौन सी कंट्रीज में they are basically found? They are found in India, they are found in Bhutan, they are found in China. ठीक है, forest valleys जो होती है ना, there you can found these takins grazing grasses and all, to grass covered alpine zone, which normally rise between 1000 to 4000 meters. ठीक है, this is the limit where these takins are found. मतलब grasses needs to be there for them to feed. इसके ऊपर चले जाएंगे तो स्नो आ जाएगा. ठीक है, इस वजह से. And below 1000 meters also they are not found. तो winters and summers में they keep traveling between these ranges. Okay, majority of the takins, if you see in India, majority of these takins they are found in दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व. ये जो रीजन है ना, यहाँ पे कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टैकिन्स व्हिच आर फाउंड इन इंडिया आर फाउंड इन दिस रीजन. You can see that they have a lot of hairs on their body, so they have this adaptability. They grow sort of secondary coat of hair in chilly winters. When the winters are very chilly, then they grow this secondary coat of hairs, and which they shed in summers. So these coats they shed in summers. This is adaptation. All right. दूसरा, you can see that there this nose area is, it's very long. So why is it long? Because the winter areas, winter के time में क्या होता है कि the air is very cold. So when the air is traveling a larger nostril area, so because of the heat of the nostrils, the air will get into normal temperature before it reaches the lungs. तो हवा जो ले रहे हैं आप वो ठंडी है, उस हवा को ये the long nose nostril area, when the cold air passes, so it takes some time and it gets
normal temperature, and before it enters into the lungs, बहुत ठंडी हवा lungs में ना आए, इसलिए ये this is also part of adaptation. Okay, this long nose, so that warm air reaches the lungs. Basically, chilly cold air do not enters the lungs. Okay. Now, this is the adaptation, as I've told you. Okay. If you look over to the food habits, the diet, so they are majorly herbivorous. All right. IUCN status is that they are vulnerable. PDF में हो सकता है कि कुछ पोर्शन जो मैं लिख रहा हूँ ना, some PDFs might miss them because it is getting auto saved. तो हो सकता है उसमें कुछ मिस हो गया हो. अगर मिस हो गया हो तो प्लीज लेक्चर को थोड़ा सा देख लीजिए. लेक्चर में तो नोट हो ही रहा है, जो रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द takin, that is the Himalayan goat antelope. All right, चलिए. Let's look about the next species now. Next species is Indian wild ass. न्यूज देखिए. इंडियन वाइल्ड एस पॉपुलेशन राइजेस बाय 26% टू 7,672 इन गुजरात सेंसस. सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट हुज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, फॉलोड बाय कच्छ, वल्टन एंड तो गुजरात एंड राजस्थान एरिया में बेसिकली ये मिलता है. ठीक है. दिस इंडियन वाइल्ड एस, दिस इज बेसिकली द it is subspecies of Asian wild ass, and these Asian wild ass are known as खुर. ये इसके subspecies है. ठीक है. इंडियन वाइल्ड एस जो है खुर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुंड खुर खर भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ दे आर इन वाइल्ड, दे आर फाउंड इन इंडियन स्टेट्स. विच इंडियन स्टेट्स? एक तो दिया हुआ है इंडियन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट गुजरात, योर run of Kutch area. ठीक है. And there is a Indian wild ass sanctuary also, which is present there in Gujarat. ठीक है. Some portions of Rajasthan also has Indian wild ass. All right. Now, abhi Indian wild ass is only found in this region. ठीक है. Only found in this region. But earlier it was also found in, earlier, not now, earlier it was found in Pakistan area, अफगानिस्तान एंड ईरान. बट अभी नहीं मिलता है वहां पे, अभी वहां से एक्सटेंट हो गया. ऑलराइट. व्हाट हैबिटेट्स आर दे फाउंड इन? अब रन ऑफ कच्छ में मिल रहा है, तो इट इज श्योर दैट सेलाइन डेजर्ट्स. ठीक है. राजस्थान के कुछ एरिया में तो एरिड ग्रासलैंड और श्रबलैंड्स, इन एरियाज में यहाँ पे मिलता है. ऑलराइट. दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो याद रखने की है, इट इज द फास्टेस्ट इंडियन एनिमल. Alright, it can run up to speed of 80 km per hour. ठीक है. तो ये इंडिया एंड यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ, एंड दिस इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम. ठीक है. ऑल द एनिमल्स which are native to India, उसमें से जो है दिस इंडियन वाइल्ड एस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट. 80 km per hour की स्पीड से इट कैन रन. इफ यू लुक एट द स्टेटस ऑफ दिस, तो IUCN में इट इज नियर थ्रेटेंड. ऑलराइट. डाइट मेजरली it is herbivorous only. ऑलराइट. एंड साइट्स में इट इज अपेंडिक्स 2. याद रखना, ये पॉपुलेशन की वजह से अपेंडिक्स 2 में है, अपेंडिक्स 1 में नहीं है. ऑलराइट. चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज चिल्का डॉल्फिन. जस्ट अ सेकंड. All right. Whatever I wrote, it got deleted. आप प्लीज PDF से के साथ साथ ही थोड़ा सा क्लासेस को भी यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा क्लास में. 3-day dolphin census in Chilka to begin today. The Chilka Wildlife Division is gearing up to conduct a 3-day annual dolphin census in the lake from Monday. तो ये तो पता चल गया कि भाई चिल्का डॉल्फिन्स आर फाउंड इन चिल्का लेक्स. ठीक है. बट और कहाँ कहाँ मिलती है, क्या है? एंड दीज चिल्का डॉल्फिन्स, इनका नाम क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज इरावदी डॉल्फिन्स. ठीक है. इज इट ओनली फाउंड इन चिल्का लेक? नो, इट इज नॉट ओनली फाउंड इन चिल्का लेक. Rather, it is found in the coastal areas in South and Southeast Asia. ठीक है. कोस्टल एरियाज में और रिवर्स में भी मिलती है. ठीक है. विच रिवर्स? इन दीज 3 रिवर्स.
फर्स्ट इज अय्यारवाड़ी रिवर, वेयर दिस इज, इट इज इन म्यांमार, ठीक है. सेकंड इज महाकम रिवर इन बोर्नियो, एंड थर्ड इज मेकोंग रिवर इन कंबोडिया. ठीक है, तो इन 3 रिवर्स में भी मिलते हैं ये चिल्का डॉल्फिन्स, विच आर ऑल्सो नोन एज योर इरावदी डॉल्फिन्स. बट रिमेंबर कि जो रिवर में जो डॉल्फिन्स मिलते हैं ना, उनका स्टेटस इज डिफरेंट. दो द डॉल्फिन्स आर द सेम, बट रिवर्स में जो डॉल्फिन मिल रही है दे हैव डिफरेंट स्टेटस. नॉर्मली अगर आप देखेंगे ना, जो चिल्का में मिल रही है दिस डॉल्फिन्स, इज नॉर्मली इनका स्टेटस जो IUCN का है दैट इज इंडेंजर्ड. ठीक है, इट इज इंडेंजर्ड. बट इन चिल्का, इन दीज 3 रिवर्स these dolphins are found and these are their IUCN status over here, it is critically endangered. ठीक है, इन दी रिवर्स. ऑलराइट, ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि रिवर्स में दिस आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ओवरऑल इट इज इंडेंजर्ड ओनली. ठीक है, नाउ अब नाउ हाउ दिस सेंसस इज डन, मतलब कैसे पता करते हैं कि कितने डॉल्फिन्स हैं कहाँ पे. ठीक है, इसके जो स्टेटस को पता करने के लिए डेफिनेटली सेंसस करना पड़ेगा. तो देयर इज अ मेथड फॉर विच द सेंसस इज, थ्रू विच द सेंसस ऑफ दिस चिल्का डॉल्फिन्स इज डन, एंड दैट मेथड इज नोन एज हाइड्रोफोन मॉनिटरिंग टेक्निक. ठीक है, तो हाइड्रोफोन मॉनिटरिंग टेक्निक क्या है कि एक माइक्रोफोन लगाया जाता है बीनीथ द सी एंड द साउंड्स ऑफ दीज चिल्का डॉल्फिन्स आर कैप्चर्ड. उसको स्टडी करके ये पता करते हैं कि कितनी डॉल्फिन्स हैं. ठीक है, थ्रू दो साउंड. दिस इज डन अंडर वाटर डेफिनेटली. वाटर साउंड्स को रिकॉर्ड करते हैं, सुनते हैं, एंड थ्रू विच इट इज फाउंड. ऑलराइट, चिल्का लेक इज अगेन इंपॉर्टेंट. हो सकता है चिल्का लेक एग्जाम में आ जाए या कुछ पूछ ले चिल्का लेक के बारे में. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. पहले तो इट इज एशियाज लार्जेस्ट, ठीक है, लेक, एंड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट लगून. ठीक है, many migratory birds also come to this Chilka Lake. ठीक है, तो this all the migratory birds which are traveling through the Indian subcontinent, they stop at Chilka Lake region because of definitely the diversity and the availability of water. It is also first international importance wetland under Ramsar. ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया. ऑलराइट, नाउ दिस चिल्का लेक में नॉट ओनली चिल्का डॉल्फिन इज फाउंड, टोटल ऑफ 6 स्पीशीज. दिस इज नो इरिटेटिंग अ लॉट. टोटल ऑफ 6 स्पीशीज of dolphins are found here in this Chilka Lake. Not only Irrawaddy. ठीक है, when we talk about the diet, so these dolphins are carnivorous. And एक और important fact है, no species of dolphin, no species means कोई भी dolphin, किसी भी तरह की dolphin ऐसी नहीं है जो vegetarian है. No species of dolphins are vegetarian. ये ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं. एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यू नो नो ओनली, ये सब थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है. तो दिस वाज अबाउट द चिल्का डॉल्फिन. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मलायन टाइगर. यूएई मलेशिया टू एस्टैब्लिश साउथ ईस्ट एशियन फर्स्ट मलायन टाइगर रिजर्व. व्हाई इज द मलायन टाइगर मलेशिया नेशनल सिंबल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ठीक है, तो मलायन टाइगर एज द नेम सजेस्ट, इट इज फाउंड इन द पेनिनसुला of Malaysia. Okay, this Malayan tiger. The southern Thailand region में भी ना मिलते हैं these Malayan tigers. ठीक है, they used to be found different through normal tigers in 2004 through DNA testing was done. In 2004 DNA testing हुई थी, उसमें पता चला कि Malayan tigers are different, they are not the नॉर्मल टाइगर्स. ऑलराइट, बाकी सारे जो टाइगर्स के फीचर्स हैं वो सारे इसमें होंगे. हैबिटेट, इफ यू लुक ओवर टू द हैबिटेट, तो हैबिटेट इसका कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स एंड ग्रासलैंड्स. ठीक है, ऑलराइट. IUCN स्टेटस क्या है? इट इज क्रिटिकली endangered. Some national parks are there in
मलेशिया पेनिनसुला वेयर दे आर फाउंड। एक तो एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है एंडाउ रोम्पिन नेशनल पार्क, ठीक है। इट इज अ क्रिटिकल हैबिटेट फॉर दिस, फाउंड अगेन इन लोकेटेड इन मलेशिया। एंड देन वी हैव बिलम टेमेनगोर फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है। देन वी हैव तमान निगारा नेशनल पार्क, सब वहाँ पे हैं मलेशियन पेनिनसुला में, वेयर दीज मलायन टाइगर्स आर बेसिकली फाउंड, ठीक है। नॉर्मल ऑल द फीचर्स आर वन एंड द सेम, खाली एक स्लाइट डिफरेंस है कि दे आर अ बिट स्लाइटली स्मॉलर देन द नॉर्मल टाइगर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो बाकी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मलायन टाइगर से रिलेटेड है, इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्पीशीज देखते हैं, इंडियन स्टार टोर्टाइज। नाउ टर्टल एंड टोर्टाइज दे आर डिफरेंट, टर्टल वाटर, टोर्टाइज ऑन लैंड, ठीक है। तो इंडियन स्टार टोर्टाइज वाज इन न्यूज, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ इंडियन स्टार टोर्टाइज, आप देख सकते हैं इसके शेल के ऊपर ब्यूटीफुली स्टार मार्किंग्स आर मेड, एंड बेसिकली इसको यू कैन सी न्यूज में भी C778 स्टार टोर्टाइज एट चेन्नई एयरपोर्ट। तो बेसिकली इसको ना फ्लैश वगैरह के लिए या मीट के लिए यूज नहीं करते हैं, दीज आर यूज फॉर पेट्स बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी लकी व्हेन केप्ट एट होम। तो इसकी पेट के रूप में बहुत वैल्यू है, बट इट इज नॉट अलाउड टू कीप टोर्टाइज एट होम्स इन इंडिया, एटलीस्ट नहीं है ऐसा। तो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सॉर्ट ऑफ साइट्स के अंडर वैलिड परमिशन नहीं है, तो यू कैन नॉट ट्रेड ऑन दीज स्पीशीज। प्लस इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के भी तहत आप इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट वाइल्ड, तो घर भर पे आप नहीं रख सकते हैं। अच्छा, दो स्पीशीज देख लेते हैं, एक तो है नॉर्थ वेस्टर्न स्पीशीज है, ठीक है, और एक है सदर्न। दिस स्पीशीज नॉर्थ वेस्टर्न इज जेनेटिकली स्टेबल स्पीशीज, ठीक है, एंड दिस इज जेनेटिकली अनस्टेबल। और अनस्टेबल कहना गलत होगा, यू कैन से इट जेनेटिकली डाइवर्स, ठीक है। स्टार लाइक पैटर्न ऑन इट्स डोम शेल। हैबिटेट देख लेते हैं, सेमी एरिड रीजन्स में यू विल फाइंड देम, सेमी एरिड रीजन्स लाइक थॉर्न shrub forest, then semi desert, arid grasslands, ठीक है, which are seasonally wet or dry। तो इसका ना जो टॉलरेंस है ना, क्लाइमेटिक टॉलरेंस ऑफ दीज स्पीशीज इज वेरी हाई। to different climatic conditions, all right, tolerance of these species is very high, ठीक है। it is endemic to which places? Endemic to northwestern part of India, southern India, ये जो हॉकिस्टिक वाला जो रीजन होता है ना इंडिया में, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, बहुत थोड़ा एरिड रीजन्स होते हैं। तो सदर्न इंडिया, उस पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो इन एरियाज में यू कैन फाइंड देम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। डाइट की अगर बात करेंगे ना, इफ यू टॉक अबाउट द डाइट, सो डाइट में दे आर मेजरली herbivores, okay, herbivores and they do not eat any flesh, ठीक। एडल्ट फीमेल्स जो होती है, एडल्ट फीमेल्स, दे आर बिट लार्जर इन साइज देन द मेल्स, ऑलराइट। most trafficked species in the world, as I've told you, for the pet trade. IUCN, it is vulnerable. CITES, Appendix 1. WPA 1972, it is Schedule 1, ठीक है। चलिए, let's move on to the next species. The next species is your blue whale, okay, largest animal on the planet, weighs around 200 tons, 150 to 200 tons का weight होता है, and the sound which it makes, the blue whale sound, it is one of the largest sound which is available, which have been heard, or which can be made by any organisms in this planet, ठीक है। तो पहले क्या, largest animal
on planet, then loudest animal on planet. Communication के लिए it uses low frequency whistle. Low frequency means high wavelength. Wavelength high होगा तो longer distances. So it can communicate till distances up to hundreds of miles. Hundreds of miles. Okay. Here also the females are generally larger than the males. ठीक है. ये blue whale क्या है? Are they fishes? No, they are not fish. ठीक है, ये तो आपको पता होगा. They are mammals, not fishes. So if they're mammals, then they breathe oxygen, मतलब gills नहीं है, lungs हैं. They come up to the surface in few minutes to take oxygen, and you know the heart beats very slowly because of the large body through which the blood has to be transported. So heart beating is very less. ठीक है. These, they produce milk. This is also important feature. Blue whales, they produce milk because they are mammals. ठीक है, and they are warm-blooded mammals. All right, they are mostly found in every ocean except what? Except Arctic Ocean. ठीक है, they are not found in Arctic Ocean. ये याद रखिएगा. IUCN, I don't understand why is it saving PDF so quickly automatically every time. IUCN is endangered sites. It is appendix 1. ठीक है, pardon my handwriting. I hope you get the information. That is my intention. ठीक है, चलो. Next species, let's look over to Siberian crane. This crane has charted its longest course yet, flies nearly 3,676 kilometers from North Pole to Rajasthan. ठीक है, तो नॉर्थ पोल से राजस्थान ट्रैवल किया है किसने? साइबेरियन क्रेन ने. साइबेरियन क्रेन के बारे में देख लीजिए. नॉर्थ पोल से मतलब प्राइमरली इट लिव्स इन विच एरिया? यूरोप एरिया. ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका आल्सो यू कैन फाइंड. तो प्राइमरली दे आर फाउंड इन विच एरिया? यूरोप. ठीक, वेस्ट एशियन पार्ट्स, सम पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका. ठीक, दे आर फाउंड इन दीज रीजन्स. All right. They migrate in India. Migrate to India for warmth. So when it is very chilly winters in Europe and adjoining areas, so they come to India in search of some warmth. Okay. And when they come to India, they basically settle down in areas of Rajasthan plus Gujarat. तो साइबेरियन क्रेन आपको यहाँ नहीं मिलेगी वेस्ट बंगाल में या नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पे साइबेरियन क्रेन नहीं मिलेगी आपको. दे विल बी लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द क्रेन्स. ठीक है, स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ ऑल द क्रेन्स. इन इंडिया दे आर ऑल्सो नोन एज कूंज और कुर्जा. ठीक है, तो कूंज और कुर्जा इज द कॉमन नेम इन इंडिया. They will definitely inhabit fields, deserts. जितना जो भी जिस टाइप का भी आपको हैबिटेट मिल सकता है ना राजस्थान गुजरात में, सब में you will find them. Fields, deserts, steppes, plains. हाँ, but थोड़ा water availability is important. ठीक है, तो एकदम ड्राई रीजन्स पे आपको नहीं मिलेंगे. जहाँ पे थोड़ा वाटर अवेलेबिलिटी है, you will find it in राजस्थान एंड गुजरात, in those areas. They are migratory birds as you have seen in the news. ठीक है, they are long migratory birds. ठीक. In Rajasthan, first crane conservation reserve has been made, and that is known as Kichan. KHICHN. ठीक है. This is the first conservation reserve that is made in Rajasthan. It is known as Kichan Conservation Reserve. ठीक है. IUCN status क्या है?
क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। इसका एक चीज़ याद रखिएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत सारे वेबसाइट्स में ना वल्नरेबल दिया हुआ है, लीस्ट कंसर्न भी दिया है कुछ कुछ वेबसाइट्स में मैंने देखा है, बट इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, रिमेंबर दिस। डाइट क्या होगी? डेफिनेटली ओमनीवोरस, ठीक है। इट ईट्स प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेज एंड ऑल, ऑलराइट। लॉन्ग ट्रैवलर्स दे डोंट हैव चॉइसेस, ठीक है। ये हिस्ट्री, दिस इज द सेम विथ ह्यूमंस आल्सो, जहाँ पे लॉन्ग ट्रैवलिंग हुई है, एंड डेफिनेटली इन दोज एरियाज फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग दे हैव टू हैव flesh as well, ठीक है। And Siberian cranes, they eat non-veg flesh of other animals, ठीक है। Let's look over the next species now. Next species is Bengal florican, ठीक है। Grass less green for Bengal florican at Assam's Manas Tiger Reserve, the best of its last few habitats. Alright, so it was in news, it was Hindu में it was given, Bengal florican was in news, तो Bengal florican देख लेते हैं जल्दी से। Bengal florican के basically two species are found, ठीक है। One species that is found in foothills of Himalayas of India plus Nepal, ठीक है। And another is found in floodplains of Cambodia and some parts of Vietnam, ठीक है। तो बंगाल फ्लोरिकन इट इज फाउंड इन इंडिया, नेपाल, कंबोडिया एंड वियतनाम, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। दे वेर ऑल्सो फाउंड इन बांग्लादेश बट नाउ दे आर एक्सटिंक्ट, अर्लियर फाउंड वेयर इन बांग्लादेश, अब नहीं मिलते हैं अभी। फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज एंड फ्लडप्लेन्स ऑफ कंबोडिया एंड वियतनाम, जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ डू दे ट्रैवल? यस दे ट्रैवल, बट दे ट्रैवल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, नॉट माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक। Wet alluvial habitats में basically they will be found habitats where wet alluvial soils are found with grasslands having short grasses, ठीक है। short grasses हों, scattered bushes हों, यहाँ पे ये मिलते हैं, alright। So they are basically found in those areas, India, Nepal, foothills of Himalayas. Major कुछ ये हैं आपके protected areas like मानस, ठीक है, काजीरंगा, दुधवा, कहाँ है दुधवा, क्वेश्चन आ चुका है ये, डिब्रू, शिकोवा, ठीक है। All these protected areas में these Bengal floricans are found. Females are larger in size, ये याद रखना। Bengal florican में the female floricans, Bengal floricans, they are larger in size, all right। A very typical type of dance is performed here by the male Bengal floricans, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पीडीएफ सेव हो रहा है, मैं लिखता हूँ उसका नाम, एरियल डांस होता है वो, एरियल डांस is a very typical ठीक है, aerial dance is very typical which is shown by the male Bengal floricans. Definitely they dance for the females, but this dance is known as aerial dance. इसमें क्या होगा ना, neck fluffing, they will do neck fluffing, they will jump, they will make sounds, ठीक है। तो गाते हुए, कूदते हुए, गला हिलाते हुए they dance, and this is known as what, aerial dance, and it is only performed by male Bengal floricans. Female don't do this. IUCN status critically endangered, ठीक है। एरियल डांस को याद रखिएगा, आ सकता है स्टेटमेंट वाइज। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट नाउ, सॉरी नेक्स्ट स्पीशीज नाउ। नेक्स्ट स्पीशीज इज dhole, that is Indian wild dog. Scientists carry out first ever documentation of dholes in Kalyan, Karnataka. Chincholi Wildlife Sanctuary in Kalaburagi have documented the presence of dholes, wild dogs in Kalyan, Karnataka region. तो चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद रखिएगा, ठीक है, इन कर्नाटका। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में न्यूज में था, क्योंकि ढोल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दे बेसिकली आर रिसेंबल्स बिटवीन फॉक्सेस एंड वुल्व्स, ठीक है। इनके कुछ कॉमन नेम है और भी, क्या है, एशियन वाइल्ड डॉग, whistling dog, red dogs, Indian wild dog तो ऊपर लिखा ही है, ठीक। These are the common names. What are the habitats
forest area of Central, South and Southeast Asia. ठीक है, तो ये यहाँ मिलते हैं. Central, South and Southeast Asia, where the forests are tropical, wet or dry forest. Some temperate forest maybe they will be found. Temperate forests of India maybe they will be found. All right. In India specifically अगर देखा जाए तो they are found in the foothills of Shivaliks, northeast India, some sub-eastern parts, Deccan Plateau, and the Ghats area. But Ghats, these are found in only eastern Ghats. याद रखिएगा, this dhole is not found in western Ghats. ठीक है, they generally live in packs to survive, communicate via whistles, growls, ठीक है, clicks and all these things. IUCN status देख लीजिए. IUCN status is endangered. All right. चलो next, golden langur. Now this golden langur, this is a very peculiar capability. It can change the skin of its fur. Sorry, the color of its fur. When it is summer, the color of its fur changes to somewhat cream white. ठीक है, summer में. Winter में it changes itself to golden brown color. Adaptation है. ठीक है, देख लेते हैं golden langur के बारे में. It is found in basically parts of Assam, India की बात कर रहा हूँ. And again, what happened here? Found in parts of Assam in India and some parts of Bhutan. ठीक है, इसकी बाउंड्री पता क्या है? यहाँ पे if we have in the north foothills of Bhutan, ठीक है, in the north. In the west we have Sankosh river. In the east we have Manas river. ठीक है, and in the south we have ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, तो ये जो है ना गोल्डन लंगूर, ये यहाँ पे मिलेगा, this area. But we'll touch some foothills of Bhutan also. So some parts of Bhutan and major part of Assam में you will find them. This is something which is important to remember. This is an important information. ठीक है, अगर हैबिटेट या रीजन वाइज देखा जाए तो किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलता है? सब ट्रॉपिकल. आप देख लीजिए ना ये रीजन कहाँ लाई कर रहा है. सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट. ठीक, सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट. लोअर रीजन्स में सब ट्रॉपिकल होगा. टेम्परेट एट हायर एल्टीट्यूड्स इन भूटान एंड फुटहिल्स ऑफ भूटान एंड ऑल दोस एरियाज. सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट में मिलता है, वेयर द रेंज इज बिटवीन 0 to 3000 मीटर्स, नॉट 300. तो सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट रीजन्स, यहाँ पे ये लंगूर मिलते हैं बेसिकली. ठीक है, ठीक है. तो एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए कि दे आर बेसिकली arboreal. Arboreal means they live on trees. ठीक है, and are active during daytime. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज होगी, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया. अच्छा, हम इतनी स्पीशीज की बात कर रहे हैं. डू यू हैव एनी आइडिया दैट विच ऑर्गेनाइजेशन और विच बॉडी बेसिकली रिकॉग्नाइजेज एनी स्पीशीज? कोई नई स्पीशीज अगर पता चलती है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो उस नई स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करता है और वो नई स्पीशीज then it is listed within the list of the species and उसको recognize कैसे किया जाता है? तो there is an organization. The organization is both for floral and fauna. ये दोनों के लिए अलग अलग organization है. तो for fauna it is it is ICZN and this is International Code of Zoological Nomenclature. ठीक है, this is the body which recognizes any new species of animals.
And for plants, there is an organization which is known as ICN. This is International Code of Nomenclature. ठीक है, तो ICZN एंड ICN ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिकॉग्नाइज करती है स्पीशीज को. ठीक है. Now golden langur, what is the IUCN status? It is endangered. ठीक. Cites Appendix 1 and your WPA 1972 it is Schedule 1. तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन. ठीक है, ट्रेड में भी और कंट्री का जो लोकल लॉज है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है. चलिए, नाउ लेट्स लुक आउट द नेक्स्ट स्पीशीज. दिस इज गंगा डॉल्फिन. न्यूज क्या है? गैंगेस रिवर डॉल्फिन टैग्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. ठीक है, ये न्यूज है. टैग किया गया, फर्स्ट एवर टैगिंग ऑफ गैंगेस रिवर डॉल्फिन बाय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट टू अंडरस्टैंड एंड कंजर्व द यूनिक aquatic species. This is the news. So Gangetic dolphin या गंगा डॉल्फिन is important now. इसकी important fact देख लीजिए एक बार. This is also known as susu, Ganges susu. Okay. और blind dolphin. Why blind dolphin? Because it is blind, it cannot see. ठीक है. This is your national aquatic animal of India. All right. This has irritated me like hell. Okay. So, Susu, this is blind dolphin, national aquatic animal of India. It is also the indicator species. ठीक है. तो इंडिकेटर ये फ्रेश वाटर में फाइंड की जाती है. तो इंडिकेटर स्पीशीज मतलब दे टेल यू द हेल्थ ऑफ द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. ऑलराइट, दीज आर फाउंड हियर. ऑलराइट, नाउ हैबिटेट्स क्या है? दे आर फाउंड इन गैंगेस, ब्रह्मपुत्र, ऑलराइट, मेघना रिवर. ठीक है. इट इज ऑल्सो फाउंड इन बांग्लादेश इन रिवर. तो बांग्लादेश में जिस रिवर में मिलती है दैट इज नोन एज कर्णफुली एंड कर्णफुली सांगू रिवर. अरे यार क्या हो रहा है? चलो, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. रिकॉर्डिंग में है, आप देख लीजिए. कर्णापुली सांगू रिवर. ठीक है, इन बांग्लादेश. फाउंड इन, सो इट इज फाउंड इन इंडिया. आई हैव टू सी डाउन, ये तो लिख नहीं पाऊंगा. नेपाल एंड बांग्लादेश. ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट एक जो बताना था, दैट इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिजर्व और रिसर्च सेंटर हैज बीन फाउंड इन और एस्टेब्लिश्ड इन पटना इन बिहार. ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन थी which was important and I thought that I should give you. तो इसको क्या ये जो फॉर्म किया गया ना, दिस विल हेल्प इन कंजर्विंग दिस गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स. ठीक है. सो दैट इज द रीजन इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, NDRC. ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा. पटना बिहार में, गंगा फ्लोज फ्रॉम बिहार. ओके. तो नेक्स्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लीजिए. इट इज ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ द गंगा. देख रहे, थिन लार्ज स्नोट होता है इसका. यू कैन सी हियर दिस
thin large snout. ठीक है, eyes हैं but they are blind, they can't see. All right. दूसरा important, the females are larger in size than male counterparts. ठीक है. How they, if they cannot see, then how they move, how they hunt. So they use this ultrasonic waves, ठीक है, to hunt and navigate. ठीक है, sonar sort of thing they used. ये जो tagging हुई है ना, this tagging has been done via satellite. ठीक है, कौन, किस organization ने tagging की है ये? This tagging has been done by which organization? It has been done by this is Wildlife Institute of India. ठीक है, under which, under project Dolphin 2020 में भी हुआ था. ठीक है, तो दिस वाज सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग दी गंगा डॉल्फिन. स्टेटस की बात करें अगर, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए कि इट cannot breathe in water, so that is why it will come out every alternate minute to breathe. All right, IUCN status, this is endangered, WPA schedule 1. ठीक है, साइड्स में भी अपेंडिक्स 1 है. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस kakapo parrot. You can see here, flightless kakapo, most stranger bird on earth. It is stated that about 51 kakapo left in the wild on one island in New Zealand. That number stayed steady for a good amount of time. अब इसमें से इंफॉर्मेशन देखो ये मिलती है कि this kakapo parrot, it cannot fly, flightless है. ठीक है, so it uses its leg for walking, for climbing trees or whatever. So because of that the legs are very strong, because it has to walk, move everything through its leg. पेड़ में भी चढ़ना है leg से, everything is done through the legs only. So the legs are very strong. Again the same thing is happening and this is irritating me, but I cannot get irritated because it's my fault. Where is okay, so here is kakapo parrot. ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इसके बारे में, इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ नहीं तो क्या पता फिर से. So it is a flightless parrot and okay, it is only found in New Zealand. Only found in New Zealand, और कहीं नहीं मिलता है, इसको याद रखिएगा. ठीक है, also known as owl parrot. Why? You can see the face, it looks like an owl. ठीक है, तो owl parrot बोलते हैं. The wings are underdeveloped. ठीक है, it has wings, feathers है, but they are underdeveloped, so cannot be used for flying. It is also known as night parrot. Why night parrot? Because it is nocturnal. Nocturnal. ठीक है, it is active during nights. Female parrots, kakapo parrots, female kakapo parrots are a bit heavier than the males. ठीक है, इसको थोड़ा नोट करके रखिएगा कौन कौन सी स्पीशीज है जहाँ पे the female species they are more heavier or larger in size than their male counterparts. All right, तो ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है kakapo parrot का. बाकी if I talk, then you can also mention some diseases also attack this parrot. ठीक है, तो फंगल डिजीज हो जाता है because it is always on the ground. So फंगल डिजीज जो होता है, फंगल डिजीज, it is known as aspergillosis, Gillosis. तो aspergillosis is a fungal disease related to which species? Kakapo parrot. ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा. What else? अच्छा हाँ, this being a parrot, it is a bird, but it is generally herbivorous. ठीक है, and do not eat other insects
like other birds. All right, so it is a herbivorous uh, parrot. It's a herbivorous bird. It never eats other bird. Okay, other insects. Sorry. There is a very famous fruit of the tree which is known as rimu tree. Okay, found in New Zealand only. So rimu tree का जो fruit होता है ना, this is the main diet of this cuckoo parrot. All right, nothing else as such. इससे ज़्यादा कुछ important IUCN status लिख लीजिए. Critically endangered है. बाकी there is nothing more important. ठीक है. All right. Let's move to the next species now. Narwhal. Meet the narwhal, the long-toothed whale that inspired worldwide legends. ठीक है. Adapted to life in Arctic, तो cold waters में मिलता है. ये थोड़ा सा याद रखिएगा. And see the long tooth it has. It is also used for hunting. ठीक है. To use it for hunting as well. चलिए इसकी information जो है फटाफट नोट कर लेते हैं. लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है. It is called as unicorns of the sea. Okay, they use their tusks to hunt as well. All right, medium sized tooth whale है. Medium sized toothed whale. You know, an important fact about this whale is also that they change their color, body color. I think it is getting hanged because of too many slides. चलो ठीक है. I hope you have written the information. ठीक है. देख लीजिएगा अगर कुछ information मिस हो रही हो तो. So क्या बोला था मैंने कि it changes its body color with age. All right. Majorly it is found in Arctic, as I've mentioned. So in the Arctic it is found waters of Canada, Greenland, Norway area, Russia, ये सब जगह में मिलती है. All right. See, they are not distance migrators. This is also very important. Not distance migrators. Okay, this is important. दूसरा, they are generally found in deep waters. So they are found in deep waters, माने deep of the ocean में ये generally मिलते हैं. IUCN status, it is least concerned. न्यूज में था इसलिए डिस्कस कर लिया, बट IUCN स्टेटस अगर देखें तो इट इज लीस्ट कंसर्न. ठीक है. डाइट में क्या होगा? लॉन्ग टूथ है, इतने बड़े whale है, तो it is diet is purely aquatic animals which includes fishes and flesh. ठीक है, because in that temperature this will be available. All right. एक चीज याद रखिएगा कि नॉर्मली ये देखा गया है कि जो भी स्पीशीज हैं, जो एक्वाटिक स्पीशीज हैं, सो दे विल हैव दिस हैबिट ऑफ उनका जो हैबिटेट है वो इस तरह का है कि इकोसिस्टम में फूड चेन में aquatic animals या aquatic fishes and all would be part of their food chain because they are living in that type of ecosystem. But ये कहना गलत नहीं है कि there are many species which live in aquatic ecosystem but they are herbivores. मतलब they are purely vegetarian, they don't eat any flesh. There are such species. तो इस चीज़ को याद रखिएगा. बहुत सारे ऐसे species हैं which are purely herbivorous. पैरट फिश है, डुगोंग्स हैं, देन ग्रीन सी टर्टल है, ये सारे जो स्पीशीज हैं कुछ जो कि टोटली हर्बिवोरस हैं. तो ऐसा नहीं है कि हर स्पीशीज in the sea or aquatic life it is carnivorous only, but yes, majority of them are carnivorous. कुछ हैं जो herbivorous हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा. चलिए next move to the next species now. Actually it has been too long me taking this lecture, so I am a bit tired as well. फटाफट खत्म करते हैं इसको. We are in the end of the lecture now. So now we have Vaquitas. Okay, Vaquitas may disappear before most people know they exist. The Vaquitas is the world's rarest marine mammal with few 10 surviving in the wild. All right. I think I have covered this if I'm not wrong. पता नहीं दूसरी क्लास में लिया है कि आपको लिया, बट चलिए ठीक है, आ गया है तो कर लेते हैं इसको. Vaquitas they are also known as little cows. ठीक है,
Full name is Vatica porpoise. All right. Smallest, it is one of the smallest porpoise of the family, and it is one of the most endangered of all the world's marine mammals. Okay, it is a mammal. They will only be found in the north part of Gulf of California. Why here? Because this area is rich of fishes. A lot of fishes are there, so naturally this become a very natural habitat for them. Okay. How do they communicate? They communicate via sonar. They emit high frequency clicks. Okay, ultrasounds. All right, if you talk about the IUCN status, पता चल गया होगा, only less than 10 are remaining, so definitely it would be critically endangered. Thick sites will be appendix 1. You can see that they have no beaks and a circle, black circle around their eyes, dark ring sort of. Okay. Chaliye, let's move forward. Now we have one of the favorite species of UPSC. This is Great Indian Bustard. In historic first Great Indian Bustard chick born through artificial insemination in Rajasthan. ठीक है, artificial insemination राजस्थान से Great Indian Bustard के एक चिक को पैदा किया गया. Now इसमें इशू ये है कि Great Indian Bustard जो है basically I think once in a year it lays only one egg, not in any nest or something. On an open ground it lays its egg. तो होता ये है कि very less number of eggs they finally convert or they hatch and the chicks are born. So because of which the the population of Great Indian Bustard was declining a lot, and this artificial insemination process has been successfully done, because of which now hopefully the population of the Great Indian Bustard can be controlled and increased. ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका some features and important facts. These are very large winged birds. You can see in this photo given here. Okay, they have very large wing. They are also the state bird of Rajasthan. It is India's most critically endangered bird and most heaviest as well. It's a heavy bird. Okay, it's not a small bird, it's a heavy bird. Known as flagship species as well. Flagship species of which habitat? Of the grassland ecology. इसका मतलब ये है कि they are mainly found in grasslands. ठीक है, पिक्चर में भी देख रहे हैं आप, grasslands में they are found, and in arid semi-arid regions of northwestern part of India, basically these Great Indian Bustards are found. ठीक है, कुछ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में भी मिलते हैं, बट मेनली गुजरात राजस्थान इस एरिया में. तो कहाँ कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन गुजरात, राजस्थान, MP. Also found in some areas of Maharashtra, Andhra and Karnataka. एक चीज याद रखिएगा, दिस बर्ड इज एंडेमिक टू इंडिया. ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा. अभी रिसेंटली breeding facility was, what is this happening every time? Yeah, this is too irritating now. But I'll get some more space to write. ठीक है, आपके पास तो रिकॉर्डिंग है, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ. So Rajasthan government plus Wildlife Institute of India
plus Ministry of Environment, Forest and Climate Change has recently established a breeding facility. कहाँ पे? In the Desert National Park और जैसलमेर. Desert National Park is in जैसलमेर, राजस्थान. ठीक है, ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा. Kutch Bustard Sanctuary is also dedicated to this species. Okay. This is located in Gujarat and it is the smallest sanctuary of the country for safeguarding the endangered great Indian bustards. All right. Diet क्या है? Diet of this bird is omnivorous. ठीक है, it is an omnivorous. OMNIVOROUS. All right. ठीक है. What else? IUCN status, I'll tell you. IUCN status is critically endangered. Sites में definitely Appendix 1 and WPA 1972 Schedule 1. ठीक है. अभी रिसेंटली ना न्यूज़ में एक चीज़ और थी रिगार्डिंग दिस फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स. पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं. फायरफ्लाई बर्ड bird diverters. ऑलराइट, किसने बनाया? MOEFCC and WCS. WCS is Wildlife Conservation Society. ठीक है. अब ये फायरफ्लाई बर्ड्स डाइवर्टर्स क्या है? देखो होता क्या है ना कि these great Indian bustards, they are very heavy birds. ठीक है. So since they are very heavy birds, so when they fly, at that time क्या होता है कि जो heavy voltage lines होती है ना, उस लाइन में they smash into those lines and because of which the electric shock and everything, they die. All right. होता ये है कि बहुत देर बाद they come to know that there is a electric pole or electric line, but ये इतनी heavy birds है ना कि इनको टर्न करने में या डायरेक्शन चेंज करने में टाइम लग जाता है और उतनी देर में क्या होता है वो टकरा जाते हैं. उस टकराने की वजह से क्या होता है इनकी डेथ हो जाती है. अब इस चीज़ से रोकने के लिए दिस फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स हैव बीन फॉर्म. इसमें क्या होता है कि these are basically pasted attached over the power lines, जो heavy power high voltage power lines जो होती हैं. तो उसमें क्या होता है ना, these birds they in the daytime they get reflected. ठीक है, तो बर्ड की अपनी रिफ्लेक्शन उनको दिखती है तो दे डाइवर्ट एंड दे कैन सी इट फ्रॉम अराउंड 50 मीटर्स फार अवे. तो उस वजह से क्या होता है, दे डाइवर्ट फ्रॉम दी लाइन ऑफ साइट और जो लाइन्स होती हैं पावर लाइन्स उससे ही टकराती नहीं है. रात में भी दीज फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स दे शाइन. ठीक है, because of which the birds again they come to know that there is something in the line of sight where they are traveling, so they don't go into that direction and उसमें भी ये divert कर जाता है. They glow in the dark as well. ठीक है, तो that is why these are very useful for these great Indian bustards and their life is saved. ठीक है, किसने बनाया है मैंने लिख दिया था, ये फिर से ऑटो सेव में चला गया था तो because of which I think it has been omitted. So this is something which was important. और कुछ तो इसमें ऐसा है नहीं इंपॉर्टेंट बताने लायक. ठीक है, चलिए लास्ट स्पीशीज हम देख लेते हैं अपना लाइन टेल्ड मकाक. ओके, न्यूज़ में था ह्यूमन इंटरेक्शंस थ्रेटन्ड एंडेंजर्ड लाइन टेल्ड मकाक. दिस इज द न्यूज़. फटाफट देख लेते हैं इसके बारे में और फिर लेक्चर को कंक्लूड करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बियर्डेड मंकी. ठीक है, देख रहे हैं ना, बियर्ड है or they are also known as old world monkey, Wanderoo. ठीक है, these all are the names. They are endemic to Western Ghats. ठीक है, ये याद रखना. फाउंड इन द रीजन ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. इस एरिया में ये you will find this line-tailed macaque. ठीक है, they are
arboreal, that means will be found on trees, and are diurnal. Diurnal means they are active during daytime. ठीक, वेस्टर्न घाट्स में है तो हैबिटेट क्या होगा? What will the habitat? It will be tropical evergreen forest, tropical evergreen rainforest, or they are also known as monsoon forests. ठीक है, clear? Okay. Diet क्या है? They are mainly omnivorous. ठीक, they are the indicator species for the health of rainforests. ये याद रखिएगा, indicator species हैं which determine health of rainforests of Western Ghats. All right. अच्छा, what is an umbrella species? Umbrella species is basically a species which is when protected, ठीक है, or steps when are taken to protect the umbrella species. So many other species are also naturally automatically protected because ये umbrella species इसीलिए कहते हैं कि umbrella में जैसे person is protected from the rain, in the same way umbrella species if it is protected or conservation methods are followed, तो बाकी species भी जो होते हैं उस habitat के they are automatically they are also protected और conservation उनका भी conservation हो जाता है because of the umbrella species. ठीक है, line tailed macaque का IUCN status, it is endangered. They are basically found in the elevation of around 100 to 1000 meters. इसके ऊपर नहीं मिलते, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा. IUCN is endangered. Site is Appendix 1 and Wildlife Protection Act is Schedule 1. ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ information है loin tail macaque का which was important. Error has occurred. Subscribe to get 20% okay, ठीक है. All right. So finally, friends, thank you for the session. I have tried to cover all the important species which were there in news, and I don't think so that anything out of these species can come in the examination. हो सकता है कि कुछ point हम किसी species के बारे में miss कर गए हों. That is very possible. This I was not teaching you about species, rather we were revising about the species which were in news, and I hope that it can help you in examination. अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इस Telegram channel को scan कर लीजिए. इसमें scan करके आप चले जाइएगा, PDF वहाँ आपको मिल जाएगी. UPSC Mentor is a channel where I'll be helping all the students, whether it is prelims and mains. So subscribe the channel and be updated for the videos which are yet to come. And thank you so much for the session, and keep studying hard and all the best for your examinations.